communicate my gratitude with regards and thanks to all the participants, because today we have invited our best contributors, supporters, guides who have contributed within these 2 years of our journey of Ayush Samriddhi. I would like to welcome respected Devendra Triguna ji. I would like to welcome respected Yogesh Mishra ji. I would like to welcome CV Jha sir, Vishnu Prasad Sharma ji, Jagdishwar ji, CP Sharma ji, and all the guardians present here today in this 4th century celebration. Really, we didn't thought even about it. In Corona, we started this journey to negate the negativity of pandemic. We started with topics. We started then converted to lifestyle disorders. Then we started to celebrate every day with our Ayush, whichever is possible to celebrate. Our topics are exclusive, multidimensional topics, multidimensional experts, all relevant applied experts. So first of all, I would like to welcome you. I would like to communicate my sincere regards and would like to have your permission today. Generally, we request Vishnu Prasad Sharma ji, our President, Vishwa Ayurved Parishad Assam, and ex-principal, Government Ayurvedic College, Guwahati, to welcome. But before that, after my welcoming, I would like to have your 5 to 7 minutes only to introduce the society, because after 400 webinar, we are going to celebrate this, and we have decided to complete our centuries in 6 months. So every year 2 centuries will be there. This society was started in 2012. Professor late Vijan Kumar Gupta, late Dr. Pradeep Kumar Devnath, late Dr. Jaidev Chattopadhyay, late Yogi Vijay Chaturvedi. These are the members who are not with us, but their inspiration is always with us. And then at present, this small governing committee, including me, myself, Vaidya Surya Prakash Sharma ji, allopathic doctor Amlan Konsum Salyal, leader Mr. Shyam Kishore Srivastav. So this governing committee has objectives as all associations have. So I am not going to the detail of that, but brief intro of education, research, propagation. Actually, this society was established to establish ethics committee. At that time, ethics committee regulation for Ayush was also in the picture. So we went to the registrar, please register our ethics committee, and he converted that committee into society. And I am glad to inform you that after establishing that society, we have been able to conduct various activities in every year, not only 1 year. Every year we are conducting various activities, right from physical to virtual. Award, Lifetime Achievement Award, seminars, webinars. This is our ethics committee, CDSCO approved, meant for validation of clinical research projects before initiation. Dr. S.K. Bandyopadhyay, ex-Director Medical Education, Government of West Bengal, is chairman. Dr. Santanu Munshi, Professor and HOD, Department of Pharmacology, Calcutta National Medical College. He is pharmacologist, basic scientist. Kalyan Brat Bhattacharya ji, new department professor and HOD, Department of Neuromedicine. So we have, I am the member secretary of that
particular ethics committee, and we are validating clinical research projects all over India at as per the GCP guideline laid down by CDSCO. So all members are there as per establishment. I am not going to detail of the introduction, but I would like to communicate that after our efforts, we have been able to touch the heights of 400th webinar, and in this journey of 2 years, because we started our journey from last 22 April. Our first webinar was on 22 April, and now we are celebrating 400th webinar within these 2 years and 2 months. These are glimpses of that continuous serial webinars, and repeatedly, as public was bored with the topics on lifestyle disorder, so we decided to celebrate every day, every national or international day, which can be celebrated with Ayush. So we are celebrating Kavi Sammelan by Ayurvedic doctors also. On 1st July, Doctors' Day is there. So we will be celebrating allopathic doctors who recommends Ayurveda, who admires Ayurveda, and who prescribes Ayurveda. So definitely our topics are exclusive. Scope and practice in New Zealand. We have different series, and now these series, everything completely GCP series, GXP series, time-tested treasure series, global IOS series, now rules and regulation series. So everything is our being communicated, being live on YouTube. It is recorded well, but I would like to need help from you all to communicate these messages, because experts are unique, topics are unique, dates every day we are celebrating. Moreover, 20 webinars in 1 month approximately, every day standard time 6 p.m. IST, and I'm really proud to say that our guardians, mentors, resource persons are joining every day whenever they have the topic of choice or whenever they have the time or convenience to attend. So this is the brief introduction of our Independent Research Ethics Society. I would like to welcome now to Sri Devendra, Sri Yogesh Chandra Mishra ji, our guardian. Respected Yogesh Chandra Mishra ji will guide us. Today's program is planned to have only 4 tips from each speaker, because more than 60 speakers will be there from time to time. So 4 tips to promote Ayush awareness, to increase Ayush awareness, Ayurveda awareness. So if we will have 200 tips after this event, we will be able to plan our awareness campaign or any unique plan, unique concept, unique project, which will be guided by you. Without wasting much time, I would like to request, as Triguna ji told me he has to go, so Yogesh Chandra Mishra ji, respected Yogesh Chandra Mishra ji, is founder member of Vishwa Ayurveda Parishad and inspiration for all Vishwa Ayurveda Parishad members, such as Sri Devendra Padmabhusan, Sri Devendra Triguna ji is always an inspiration for All India Ayurvedic Congress Mahasammelan, and he is patron of that particular gracious organization. Thank you both of you. I would like to request Professor Yogesh Chandra Mishra ji to bless us. Respected Yogesh Chandra Mishra sir. Swagatam sir. आपकी आवाज नहीं आ रही सर.
यस, प्रणाम सर, प्रणाम। अब आएगी आवाज सर, अब काइंडली बोलो जी सर। थैंक यू। डॉक्टर पवन जी के माध्यम से जो एक एथिकल वर्क शुरू किया गया था, वास्तव में कोरोना ने जहां देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया, विश्व को एक पेंडेमिक के माध्यम से, कम से कम पवन जी ने तो उस अपॉर्चुनिटी को भी, उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दिया और बैठकर 400 तक की गिनती में प्रतिदिन, अभी इससे चर्चा हुई, एक दिन व्यवस्था करना, दूसरे दिन बोलना, फिर उसके बाद व्यवस्था करना। मैं समझता हूँ कि नॉट इवन ए सिंगल डे ही हैज टेकन हॉलीडे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री एक भी दिन छुट्टी नहीं लिए, वैसे पवन जी ने इस काम के लिए एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। बहुत बड़ा काम है, आयुर्वेद की समस्याओं से हम सब लोग जानते हैं, लेकिन एक तुलसीदास जी का रामचरितमानस का एक श्लोक, मुझको कई बार मैं सोचता हूँ कि सब जो संगठन में लोग लगे हैं किसी प्रकार के भी, उनको स्मरण करना चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। ईश्वर सब जगह विद्यमान है, गॉड इज अवेलेबल एट एवरी पॉइंट, लेकिन उसको देखने के लिए जो दो चीजें चाहिए, वो चाहिए एक श्रद्धा और एक विश्वास। तो आयुर्वेद के सब लोग अपने अपने इसी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, दो और बिंदु मैं जोड़ता हूं इसमें। एक, व्यक्तिशः सब लोग बड़े श्रेष्ठ हैं, लेकिन व्यक्तिशः श्रेष्ठ होने के बाद भी संगठित होकर काम करना, जो इस वेबिनार के माध्यम से भी हमको दिखाई देता है। पवन जी ने पूरे विश्व में अपना एक पहल का सा मचाया है इससे, और उसके बाद में एक कहीं कोई कोने में हमारे जो इस श्रद्धा को और संगठन को जोड़ने का काम है, वो काम है कहीं सेवा। तो ये चार बिंदु जिसकी चर्चा हुई थी, श्रद्धा, संगठन, सेवा और किसी काम को भी पूरा करने के लिए संकल्प लेना। तो 4 पंच सकार की बात है, लेकिन अब 4 ही चीजें, क्योंकि चार सकार ही चाहिए थे इसमें। तो मैं समझता हूँ संगठन, श्रद्धा, सेवा और इन सबका संकल्प, ये पवन जी के कार्यक्रम में लगातार हमको देखने को मिल रहा है। और ऐसी जो टिप्स हैं, उनके माध्यम से हम नई पीढ़ी के माध्यम से, नए लोगों के माध्यम से, एक बार जो से 200 साल 150 साल पहले हमारे ऊपर मैकाले और मैक्स मूलर के माध्यम से जो शिक्षा पद्धति चलाई गई थी, उसको नल एंड वाइड करते हुए, नलिफाइड करते हुए, हमारे जो नई पीढ़ी के लोग हैं, शिक्षक भी, नई पीढ़ी के विद्यार्थी भी, नई पीढ़ी के ऐसे लोग जो आयुर्वेद से संबंधित नहीं हैं लेकिन हमारे हैं, वो चाहे विद्यार्थी होंगे कक्षा 9 के, 10 के, 11 के, 12 के, या उनको पढ़ाने वाले कुछ लोग होंगे, उन सबके मन में ये जो 4 बिंदु हैं, श्रद्धा, सेवा, संगठन और इन सब काम करने का संकल्प, इसको जगाने में निश्चित रूप से ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो महत्वपूर्ण है और आगे चल के बहुत ही उपयोगी भी होगा। मैं समझता हूँ कि एक जो आज बड़ी लंबी श्रृंखला आने वाली है वक्ताओं की, उसमें मेरा इतना ही कहना बहुत पर्याप्त है। और श्रद्धा और विश्वास के जागरण जितनी मात्रा में हो पाएगा, आयुर्वेद का उतनी ही मात्रा में भला होता रहेगा। हम जब लोग कहते हैं समसम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, पृथ्वी पर शिक्षण करने का व्रत हमने लिया है, संकल्प लिया है। उस संकल्प को पूरा करने की दिशा से जितना हमारा जो समय है उसका प्रयोग हम लोग करेंगे, उतना ही जल्दी हमारी ये जो पैथी है, हमारी जो सिद्धांत है, हमारी जो राष्ट्र है,
वो विश्व में फिर से जगत गुरु के पद पे पहुंचने में हमको सहायक बनेगा। मैं समझता हूँ कि इस समय अधिक बोलना ये सामयिक नहीं है, लेकिन इतने बिंदुओं को, इन 4 बिंदुओं को अगर हम निकाल के आगे बढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से हमको सफलतादायक सिद्ध होगा। जय आयुर्वेद, जय भारत माता। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गुरुदेव, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वचनों से हम संकल्प निश्चित लेंगे और आप जैसे पुरुषों को ही देख के हम लोगों ने ये संकल्प पथ पर चलना सीखा है। बहुत बहुत आभार आपके आशीर्वचन के लिए। मैं अब आदरणीय पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी से आग्रह करता हूं। वो अपने आप में एक संस्था है। योगेश चंद्र मिश्रा जी, वो ये हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि एक संस्था को कैसे खड़ा किया जाता है, कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रख्याति दिलाई जाती है। हमें बहुत कुछ सीखना है आप लोगों से। मैं गुरुदेव देवेंद्र जी त्रिगुणा को सादर आमंत्रित करता हूं उनके आशीर्वचनों के लिए। स्वागतम सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर। इस आयुष जो समृद्धि ये प्रोग्राम है, इसका जो आज़ादी के इस 75वें जो अमृत महोत्सव में हम 400वां वेबिनार बना रहे हैं, एक तो पहले यही बहुत बड़ा ऐतिहासिक चीज है। मैं इसमें डॉक्टर पवन जी को दिल से बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इसमें जिस प्रकार लगन से लगे हुए हैं। मैं आदरणीय योगेश मिश्रा जी का, राकेश शर्मा जी, सीबी झा जी, गोविंद शुक्ला जी, वैद्य ताराचंद जी जो हमारे विद्यापीठ के अध्यक्ष बने हैं, डॉक्टर हमारे रघुराम भट्ट जी और सब लोग जो इसमें जुड़े हैं अभी, मैं उन सब का भी धन्यवाद दूंगा कि सारे विद्वान लोग जो इस वेबिनार के माध्यम से हम सारे देश से हम जुड़ रहे हैं। पहले तो मैं सबको ये भी बताना चाहूंगा कि हम सब आयुर्वेद के सब लोग मिलकर जब प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ हम मंथन करते हैं, या जो हमने एक चरण करते हैं धन्वंतरी की तरह, जैसे जैसे कलश निकला। इसी प्रकार अभी हमारा आयुर्वेद महासम्मेलन का 59 प्लेनरी सेशन था, उज्जैन में हुआ, जिसका कि उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति जी ने किया और वहाँ के मुख्यमंत्री, गवर्नर और मिनिस्टर्स की तो पूरी लाइन थी, सारी पूरी कैबिनेट वहाँ थी और पूरे देश से तकरीबन कोई 1000-1200 डेलीगेट्स वहाँ आए हुए थे और एक अच्छा कार्यक्रम था और उसमें हमने कुछ निर्णय भी लिए गए। और ये आयुर्वेद महासम्मेलन का एक प्लेनरी सेशन है जो होता रहता है। और दूसरा जो एक अच्छी खबर है, अच्छी बात है इस वेबिनार के माध्यम से भी, कि हमारे वैद्य राजेश कोटेचा जी जो कि 5 वर्ष से हमारे सेक्रेटरी हैं, जो कि डायनेमिक और बड़े विद्वान अच्छे वैद्य, उनका 2 साल का टर्म और बड़ा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से भी, आयुर्वेद महासम्मेलन के माध्यम से भी मैं कोटेचा जी को भी बधाई देता हूँ कि वो जिस प्रकार लगे हुए हैं, जिस लगन से वो आयुर्वेद को ना कि देश में, पूरे विश्व में एक नई ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा, अभी इस 24 तारीख को 2 दिन पहले अभी राष्ट्रपति भवन में हम जब पिछले दफा महासम्मेलन का कार्यक्रम चंडीगढ़ में किया था, तो उस वक्त उस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति भवन में एक आयुष वेलनेस सेंटर की स्थापना हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी ने उसका उद्घाटन किया था। और आज उसको नवीनकरण किया गया और हमारी मिनिस्ट्री में विशेष करके कोटेचा जी के प्रयासों से, और उसका जो एक तरह से कह सकते हैं उद्घाटन या हमारे राष्ट्रपति जी ने और हमारे सोनेवाल जी ने, हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुंजपारा जी थे, हमारे सेक्रेटरी थे, हमारे एडवाइजर नेसरी जी थे, मिसेस नेसरी थी, हम सब लोग वहाँ थे और काफी लोग थे। उसका एक बहुत सुंदर एक वेलनेस सेंटर बना जिसका उद्घाटन उन्होंने किया। ये बहुत बड़ी हमारी खुशी की खबर है। तो ये जो सारी चीजें हैं एक ऐसे हमारे उसको तरफ ले जा रही हैं कि आयुर्वेद ताकि देश में, पूरे विश्व में एक उसका बड़ा अच्छा स्थान पर ले जा रहा है। मेरा ये अपना मानना है कि अगर हमको आयुर्वेद को, विशेष करके जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, जो बच्चे हमारे कॉलेजेस में भी आ रहे हैं, उनकी आयुर्वेद में बहुत रुचि है। वो आयुर्वेद के माध्यम से अच्छे बच्चे आ रहे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं। वो आयुर्वेद के माध्यम से अच्छी चिकित्सा भी करना चाहते हैं, अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, अच्छे रिसर्चर बनना चाहते हैं। तो अगर हमारा ये कर्तव्य है कि विशेष करके हमारे जो कॉलेजेस, जब बच्चों ने सबसे पहले जाना है कि जो हमारे वो टीचर हैं वो इन बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाएं, इतना अच्छा उनको आयुर्वेद का ज्ञान दे
शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए को प्रोत्साहित करें कि उन्होंने यहाँ से कॉलेज में पास होने के बाद आपने एक अच्छा वैद्य बनना है, एक अच्छा चिकित्सक बनना है, क्योंकि चिकित्सा से ही आपको सब कुछ मिलता है। आप अच्छे चिकित्सक होंगे तो लोगों की आप अच्छी चिकित्सा कर पाएंगे, देश को एक अच्छा स्वास्थ्य दे पाएंगे, ना कि देश में पूरे विश्व में। तो इसलिए हमारा अगर बच्चा जो कॉलेज से पास करके निकल रहा है, उसको हमारा जो टीचर हमारा पढ़ाने वाला है वो इतना उसको ज्ञान दे कि बच्चों को इतना पूरा मन में विश्वास हो कि यहाँ से पास होने के बाद चाहे वो यूजी है या वो पीजी है या उसने पीएचडी की है, कोई एक अच्छा चिकित्सक बनेगा, अच्छा रिसर्चर बनेगा, अच्छा एक चिकित्सक बनेगा, और उससे बच्चे को मन में विश्वास होगा और वो एक अच्छा वैद्य बनेगा। ये मेरा अपना मानना है। तो ये हमारे बड़ा कर्तव्य है हमारे खास करके टीचर्स का, कि वो, मुझे याद है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त टीचर्स का आयुर्वेद में इतनी रुचि भी नहीं होती थी, वो सारे अपने आप को डॉक्टर्स ही कहते थे, पहले तो अपनी बात को वैद्य नहीं कहते थे, तो मतलब उनमें एक तरह से इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था अपने आप को वैद्य कहना। लेकिन अब अपने आप को हम वैद्य कहते हैं, समाज में हमारा एक अच्छा स्थान है, लोग आयुर्वेद के चिकित्सकों को बड़े अच्छे उससे देखते हैं, बड़े अच्छे भाव से देखते हैं, ना कि देश में पूरे विश्व में। एक तो ये है कि एक तो विशेष बात ये है, और प्रसन्नता की बात ये कि हमारी जो नई सीसीएम है, जिसके अध्यक्ष अभी हमारे जयदेव पुजारा जी हैं, बड़े अच्छे विद्वान खुद हैं, बड़ा अच्छी तरह उसको देख रहे हैं, नए अच्छे कोर्सेज बना रहे हैं, शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ इस माध्यम से कि हमारा एनसीएम में एक अच्छा काम हो रहा है, विशेष करके चाहे चारों जो हमारे लोग बने हैं, चाहे राकेश शर्मा जी हैं, जयदेव पुजारा जी है, रघुराम भट्ट जी हैं, ये सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं, चारों लोग, चार पांचों लोग। तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ इसके माध्यम से। तो क्योंकि कोर्स हमारा अच्छा होगा, हमारा बच्चा अच्छा चिकित्सा करेगा, हमारा अच्छा पढ़ाई होगी, तो हमारा अच्छा वैद्य बनेगा, और यही एक रीढ़ की हड्डी होगी आयुर्वेद के अच्छे वैद्य के लिए। दूसरा इसका होगा फिर हमारी औषधियां अच्छी बनी। हमारी जितनी फार्मेसी है, अब ज्यादातर वैद्य लोग अपनी दवाइयां घर पर नहीं बना पाते हैं, उनको सब औषधियां बाजार से लेनी पड़ती हैं। तो मैं इस माध्यम से सारे जो फार्मेसीज इंडस्ट्री है, मैं समय समय पर उन लोगों से बात करते रहते हैं कि वो एक बहुत उत्तम क्वालिटी की औषधियां बनाएं। औषधि अच्छी होगी तो जो हमारा चिकित्सक होगा वो मरीज को अच्छी तरह ठीक कर पाएगा, हमारा फिर नाम होगा, हमारे लोगों में हमारा आयुर्वेद की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छी से अच्छी क्रॉनिक बीमारियां जो हैं उनमें हमको सफलता मिलेगी, अच्छी रस औषधियां बने, अच्छी भस्में बने जो बिल्कुल निरापद हो, जिससे लोगों को कोई साइड इफेक्ट्स ना हो। ये मेरा अपना मानना है। ये दो फंडामेंटल चीजें हैं कि हमारा विद्यार्थी अच्छी ज्ञान ले आयुर्वेद का, फिर हमको औषधियां अच्छी मिले, फिर हम अच्छी चिकित्सा करें, फिर उसके बाद चाहे आपने पीजी करनी है, पीएचडी करनी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना हुई है, जिसमें कि तरुणा नेत्री जी बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, और वहां पे हम कुछ दिनों में कुछ ऐसे परिणाम आएंगे कि ऐसी बीमारियां जो कि असाध्य हैं, जिनका कि एलोपैथी में इलाज नहीं के बराबर, उसकी चिकित्सा वहाँ होगी, वहाँ अच्छी रसायनशाला बनेगी, अच्छी औषधियां वहीं बनेगी, ताकि लोगों को वहां से, पूरी दुनिया से लोग वहाँ चिकित्सा के लिए आएंगे, उससे लोगों को फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं इन शब्दों के साथ डॉक्टर पवन जी को दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो इस एक अच्छे ध्येय में लगे हुए हैं, और योगेश मिश्रा जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से वो लगे हुए हैं। मेरा ये भी मानना है कि बहुत एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं सभी विद्वान वैद्यों को नमस्कार प्रणाम करता हूं कि हम सब लोग मिलके आयुर्वेद को देश में और पूरे विश्व में लेके जाएं। आज एक ऐसा समय है, प्रधानमंत्री जी का हमारा बिल्कुल हमारा रहता है कि उनको बहुत रुचि है हमारे डिपार्टमेंट में। हमारे दोनों मिनिस्टर्स सोनेवाल जी और मंजू पारा जी, उनकी बहुत रुचि है, और अब राजेश कुटेचा जी का तो दिन रात इसी में लगे रहते हैं। हमारे जो एडवाइजर हैं मनोज नेसरी जी, इन सबको एक ऐसी टीम मिली है हमको केंद्र के अंदर, जो कि प्रदेशों से भी पूरा समन्वय रखती है, और इससे आयुर्वेद का प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो मैं पुनः फिर पवन जी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप दोनों की उपस्थिति ने इस वेबिनार को अपने आप में एक ऐतिहासिक बना दिया। ये हमारे लिए ऐतिहासिक आशीर्वाद है आप लोगों का, और निश्चित है कि हम संकल्प में आप लोग जैसा कहेंगे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे लिए आप भी प्रेरणा स्रोत हैं, आप भी एक प्रेरणा स्वरूप हैं हमारे लिए, कि जिनने एक संस्था को पूरा अपने आप में एक खड़ा किया। और जय हो आयुर्वेद की, और आप जैसे मनीषियों की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोविंद जी शुक्ला को
आमंत्रित करता हूं कि वो अपने वचन करें। आदरणीय गोविंद जी शुक्ला, प्रिंसिपल, जोधपुर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी, वेलकम। वेलकम गोविंद जी, वेलकम। यत् प्रभा पटलोद्भाषी भाषते अद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योति ही शाश्वतम न प्रकाशितम। आज ऐतिहासिक कार्यक्रम पवन जी का 400वीं आपकी जो वेबिनार है उसके हम सब साक्षी हैं। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय माननीय योगेश जी, पद्म विभूषण परम श्रद्धेय, जिनकी ख्याति संपूर्ण देश और विदेश तक उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के कारण है, ऐसे हमारे सभी के परम श्रद्धेय वैद्य देवेंद्र जी, त्रिगुणा जी, अन्य सभी विद्वान महानुभाव जो इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ सबसे पहले पवन जी को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। चरैवैति चरैवैति, सूर्य की जो गति है, ऐसा इन्होंने अपना एक व्यक्तित्व निर्माण किया है। अभी मुझे पटना जाना था तो वहां जिस तरह की विषम परिस्थिति थी तो कि मैंने पवन जी मैंने क्या आएंगे, पवन जी का जो विचार होता है वो विचार का प्रकटीकरण ही कर्म के रूप में क्रियान्वयन होता है। वो इन्होंने आज 400 अनवरत रूप से साधना करते हुए संसाधनों की चिंता नहीं की, साधनों की चिंता नहीं की, साधना की चिंता की, और उसकी एक परिणति है कि पूरे देश और देश के बाहर के विद्वानों के विभिन्न विषयों पर उनका उद्बोधन, उनका विषय, उनका चिंतन, इसके माध्यम से संपूर्ण देश को प्राप्त हुआ। ऐसे 400वीं आज का जो इनका कार्यक्रम है, सभी, ये ऐसा नहीं कि आज हम जब हर कार्यक्रम के अंदर 50 हो सकता है जुड़े हो, 60 जुड़े हो, लेकिन इन सारे विचारों को इस माध्यम से कितने लोग सुनते हैं वो एक बहुत बड़ा विषय है। जैसा आदरणीय त्रिगुणा जी ने कहा कि हमें अच्छे चिकित्सक, अच्छे शिक्षक, अच्छे रिसर्चर उनके बनने की आवश्यकता है। ये निश्चित रूप से आवश्यकता है, और वो देश के अंदर ही नहीं अपितु पूरे वैश्विक स्तर पर उन सबकी आवश्यकता होने वाली है। हमारा जो विज्ञान है वो विज्ञान कालजयी है। कालखंड में किसी न किसी कारण से, प्रभाव से, जो आयुर्वेद के स्वास्थ्य संरक्षण के सिद्धांत और रोग को प्रशमन करने की जो सिद्धांत हैं, स्वास्थ्य संरक्षण का शतायु जीवन जीने का सिद्धांत, आहार विहार रसायन और चिकित्सा के माध्यम से निरापद चिकित्सा प्रयोग समेत व्याधिम, इस भाव को लेकर के आयुर्वेद के जो कालजयी सिद्धांत हैं वो कालक्रम के प्रभाव से कहीं न कहीं स्खलित हुए, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि वो सत्य जो होता है ना, कुछ थोड़े बहुत दिन वो, क्योंकि बहुत बड़ी एक 712 से लेकर के और 1947 तक की एक हमारी यात्रा है जो हमारे इस विज्ञान साइंस को तक्षशिला, नालंदा, ऐसे जो ज्ञान के केंद्र हैं जिसमें भारतीय विज्ञान प्रस्फुटित होता था और संपूर्ण विश्व के लोग वहां आकर के अध्ययन करते थे, उसी धारा से निकला हुआ आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान है। तो वो एक बहुत बड़ा एक शोध परक, अनुसंधान परक और प्रयोग सिद्ध विज्ञान है, जिसके सिद्धांत कालजयी हैं, निश्चित रूप से वो समाप्त नहीं हो सकते। तो आज पूरे वैश्विक स्तर पर इन सिद्धांतों की स्वीकार्यता है, और लोग कहते हैं कि पूरे विश्व में एक आयुर्वेद को लेकर के अंडर करंट है। तो मुझे वो जगदीश चंद्र बसु जी का जो शब्द है मुझे याद आते हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे विज्ञान को स्मरण करके, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रणीत विज्ञान को, वो किसी भी प्रकार का विज्ञान है, हर विधा के अंदर, तो हम जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के जो हमारे उत्तरदायित्व है कि अपने विज्ञान को लेकर के जो शोध परक है, जो आप तो है, हजारों वर्षों से जिन्होंने जान करके, समझ करके, प्रयोग के आधार पर जो स्वीकार हुआ, ऐसे विज्ञान को हमें पुनः प्रतिष्ठापित करना है। और निश्चित रूप से जगदीश चंद्र जी बसु जी वह बात कह रहा था, उन्होंने यही कहा कि आज के युवाओं को, आज की पीढ़ी को आवश्यकता है कि हमारे वैज्ञानिकों का जो अनुसंधान परक ज्ञान है, प्रयोग शुद्ध ज्ञान है, उसको लेकर के आज के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व उस भारतीय विज्ञान को देख रहा है, और उसी के माध्यम से ही कहीं न कहीं समग्र स्वास्थ्य की, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करते हैं तो आयुर्वेद के माध्यम से ही समग्र स्वास्थ्य की संकल्पना को पूरा किया जा सकता है। तो निश्चित रूप से पवन जी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बड़ी आपकी ये सीरीज रहती है वक्ताओं को, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, आपको शुभकामनाएं, और आपके माध्यम से जो ज्ञान का प्रवाह अनवरत चल रहा है वो अनवरत आपको चलता रहे, ऐसी आपकी जो संकल्प शक्ति है उसको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत प्रणाम सर। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार दुबे जी, नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका सर।
मैं अब हमारे बीच NCI-SM के सेक्रेटरी सर श्री रघुराम भट्ट जी, डॉक्टर रघुराम भट्ट जी मौजूद हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा जी इस समय रास्ते में हैं और ताराचंद जी को मैं आग्रह करता हूं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हूं। उनके 2 प्रोग्राम मैंने देखे, ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस में भी देखा और विश्व आयुर्वेद परिषद में भी देखा। उनका एक अलग ही नजरिया है और आयुर्वेद के बेसिक्स के प्रति, लर्निंग के प्रति जो उनके क्रांतिकारी विचार हैं, मैं उनको सम्मान करता हूं, नमन करता हूं। डॉक्टर रघुराम भट्ट जी। और मैं पवन जी कहना भूल गया, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। हमारे आदरणीय राकेश जी, रघुराम जी, आदरणीय गुरुवर शायद गौर साहब भी जुड़े हैं, कमलेश जी हैं, तो सभी को मैं क्या कि जुड़ने में थोड़ा सा विलंब से जल्दबाजी में जुड़ा, लेकिन सभी के प्रति मेरे अंतर्मन का जो श्रद्धा भाव है उसको आप सभी विद्वान स्वीकार करें। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पेक्टेड डॉक्टर रघुराम भट्ट जी। सर्वेभ्यः मम नमस्कारः। नमस्कारः, नमस्कारः। आदरणीय देवेंद्र त्रिगुणा महोदय, आदरणीय योगेश चंद्र मिश्र महोदय, आदरणीय गोविंद महोदय, आदरणीय CB झा महोदय, श्रद्धेय सर्वे गुरुजनाः तथा विशेषतः एतस्य कार्यक्रमस्य आयोजकः पवन कुमार महोदय। एतस्मिन् चतुश्शततमे वेबिनार मध्ये सम्मिलितुम् अहम् अत्यन्तं हर्षम् अनुभवामि। एतदेव एक विश्व रेकॉर्ड अथवा कीर्तिमान् इति वयं वक्तुं शक्नुमः, पवन महोदयेन साधितम्। एतदर्थम् अवसरः विशेषतः कोविड महामारी कारणतः प्राप्तः। कोविड महामारीतः पूर्वं वयम् एतादृश वेबिनार मध्ये निस्तन्तरूपेण अथवा आभासरूपेण मिलन्तः न आस्म, किन्तु कोविड कारणतः एतादृश सुसन्दर्भः लब्धः। कोविड कारणतः एषः एकः उत्तम अवसरः अपि प्राप्तः। यत्र कुत्रापि स्युः स्वस्मिन् गृहे स्थित्वा परस्परं मेलितुम् एकः उत्तम अवसरः, परस्पर ज्ञानवर्धनस्य, परस्पर ज्ञानादान प्रदानस्य उत्तम अवसरः अत्र प्राप्तः अस्ति। एतस्य उपयोगः विशेषतः पवन महोदयेन कृतः। तस्मात् कारणात् बहवः जनाः अपि उपकृताः सन्ति। भवतु नाम अस्माकम् आयुर्वेदक्षेत्रस्य विषये चिन्तनं चतुर्णां बिन्दूनां विषये अत्र चिन्तनं कुर्वन्तु। यदि चतुर्षु बिन्दुषु किमपि वदन्ति चेत् उपयोगः भवेत् इति पवन महोदयेन उक्तम्। विशेषतः आयुर्वेद क्षेत्रम् अपि चतुर्षु विभागेषु विभक्तम् अस्ति। शैक्षणिक विभागं, अकाडेमिक्स इति वदामः, तथा प्रैक्टिशनर्स अथवा चिकित्सक विभागः इति वक्तुं शक्नुमः। तृतीयं तत्र औषध निर्मातारः ये सन्ति तेषां विभागः। चतुर्थ विभागः शोध विभागः अथवा अनुसंधान विभागः इति वयं चतुर्षु विभागेषु आयुर्वेद क्षेत्रं विभक्तुं शक्नुमः। अत्र चतुर्षु अपि विभागेषु विशेषतः अस्माभिः चतुर्षु विषयेषु, चतुर्षु अंशेषु चिन्तनीयं भवति। भाषा विषये सर्वदा अहं वदामि, अस्माकं भाषा आयुर्वेद वैद्यानां कृते भाषा अत्यन्तम् उपयोगिनी। वैद्यानां कृते वा, छात्राणां कृते वा, शिक्षकाणां कृते वा भाषात्रयं, यथा त्रिभाषासूत्रं सर्वदा अस्माभिः अनुसर्तव्यं, तथा संस्कृतभाषा, आङ्ग्लभाषा,
स्वमातृभाषा अथवा हिंदी भाषा एवं तिसृषु भाषासु सर्वदा अस्माभिः सौष्ठवः सम्पादनीयः अथवा मास्टरी सम्पादनीयं। तेन एव वयम् उत्तमरूपेण शास्त्राभ्यासं कर्तुं शक्नुमः, शास्त्रं ज्ञातुं शक्नुमः, शास्त्रं सर्वेभ्यः प्रवर्तयितुम् अपि शक्नुमः। तथैव तस्य भाषा ज्ञानेनैव वयं शास्त्रार्थम् अपि ज्ञातुं शक्नुमः। अतः तत्र भाषा विषये अस्माभिः सर्वदा अवधानं दातव्यं, विशेषतः परिश्रमः करणीयः। ये चिकित्सकाः अपि सन्ति, चिकित्सकाः अपि चिकित्सां कुर्वन्तः स्वस्य ज्ञानवर्धनार्थं सर्वदा भाषायाः विषये अधिकं चिन्तयेयुः। औषधनिर्मातारः अपि तत्र भाषाविषये, औषधनिर्माणविषये चिन्तयितुं, गभीर अध्ययनं, नूतन औषधानां निर्माणं कर्तुं यदि शास्त्राध्ययनं कर्तुम् इच्छन्ति तदा भाषा अपेक्षिता। तथैव ये अनुसन्धानकर्तारः सन्ति तैः विशेषतः संस्कृतग्रन्थानां, पुरातनग्रन्थानाम् अध्ययनार्थं भाषाज्ञानं प्राप्तव्यं। तथैव तदनुसारम् अध्ययनं कृत्वा नूतन औषधानां, नूतन रोगनिदान विधानानाम् अथवा चिकित्सा विधानानाम् अनुसन्धानार्थं विशेष प्रयासार्थं भाषाज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् एव। एवं भाषाज्ञानं, भाषाज्ञानतः शास्त्रज्ञानं, शास्त्रज्ञानं प्राप्य कर्माभ्यासः करणीयः। कर्माभ्यासं कृत्वा कर्मसु निष्णातः भवेत् एकः वैद्यः। सः कर्मनिपुणः यदा भवति तथा कर्मनैपुण्यं यदा प्राप्नोति तदा एव यथा अस्माकं शास्त्रे उक्तं, शास्त्रं ज्योतिप्रकाशार्थं दर्शनं बुद्धिरात्मनः ताभ्यां भिषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन् नापराध्यति इति। एवं शास्त्रज्योतिं स्वीकृत्य आत्मनः ज्ञानस्य प्रकाशनं कृत्वा रोगिणः रोगः यः अस्ति तस्य रोगस्य निदानं कृत्वा उत्तमरूपेण चिकित्सां करोति चेदेव सः उत्तमचिकित्सकः भवति, चिकित्सायां सिद्धिम् अथवा सक्सेस् प्राप्तुं शक्नोति। एवं विशेषप्रयासः करणीयः भवति वैद्यैः। तथा ये औषधनिर्मातारः सन्ति, औषधनिर्मातृभिः विशेषतः वैद्यानाम् आवश्यकतानुसारम् औषधनिर्माणस्य निर्माणं करणीयं भवति। औषधनिर्माणे अपि अस्माभिः विशेषप्रयासः करणीयः। विशेषरूपेण आधुनिककालानुसारम् औषधनिर्माणं करणीयं भवति। तथैव नूतन आविष्कारः अपि आयुर्वेदे आवश्यकः। आधुनिककालानुसारं कालानुकारी अथवा कालानुसारी अनुसन्धानः, कालानुसारम् अस्माभिः अनुसन्धानः करणीयः भवति। तदा एव वयं कालानुसारं जीवितुं शक्नुमः। आयुर्वेदशास्त्रं यावत् पुरातनं तावदेव आधुनिकं भवेत्। तदर्थम् अस्माभिः आधुनिकविज्ञानं सम्यक् पठनीयम्। आधुनिकवैद्यकीयविज्ञानं पठित्वा तदनुसारम् आयुर्वेदस्य नूतनरूपेण प्रचारः करणीयः। आयुर्वेदशास्त्रस्य मौलिकतत्त्वानां तत्र यथा ह्रासः न भवेत् तदनुसारं विशेषतः चिन्तयित्वा अस्माभिः तत्र प्रयासः करणीयः। एवं रूपेण यदि वयं प्रयासं कुर्मः तदा निश्चयेन वयम् आयुर्वेदं पुनरपि विश्वस्मिन् सर्वत्र प्रतिष्ठापयितुं शक्नुमः। आयुर्वेदः पुनरपि अस्माकं प्राथमिकचिकित्साशास्त्रं भवेत्। सर्वप्रथमम् आयुर्वेदम् एव स्वीकुर्युः स्वस्य स्वास्थ्यरक्षणार्थं तथैव विकारस्य प्रशमनार्थम् इति आशास्य अहं मम वचनं विरमामि। नमस्कारः। बहुत बहुत आभार साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपकी मैं 10-20 मीटिंगें अटेंड कर लूंगा तो मेरे ख्याल से मैं आपके रास्ते पर बढ़ चलूंगा। नमन है आपको, नमन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। आप ऐसी शुरू करते हैं मैस्मराइजिंग वे में। ग्रेट ग्रेट।
एक्सीलेंट। मैं अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीबी झा सर। आई वुड लाइक टू वेलकम मदन थंगवेलु सर, our regular moderator. Welcome Professor Madan Thangvelu sir, genome biologist, Cambridge University, UK. Welcome sir. प्रणाम प्रणाम sir. Congrats. पहले आपके लिए congrats पवन जी. We have reached the 4th century of your wonderful webinar. I want to congratulate the whole team here who are here with us today. Agnihotri ji is here, and Vishnu Prasad ji is here, Pranam ji, और Jayesh Thakkar ji भी है हमारे साथ. So congrats to the whole team that we have gone from strength to strength, and thanks यहाँ से बहुत धन्यवाद for all our senior leaders who are taking huge role in inspiring us to take this forward. So with those few words, Pavanji, I leave it back to you. Congrats to all the team and congrats to all of us for taking it this far and looking forward to more, listening to more from our experts today. I hope Professor Jha Saab is here with us, and yes. we look forward to Jha Saab's guidance to take us forward. Welcome all the senior dignitaries. I can see everybody is here with us today. It is such a wonderful occasion. नमस्कार. Pranam ji, pranam. Jha Saab, namaskar ji. प्रणाम. आज के कार्यक्रम में मेरा नमस्कार. वास्तव में पवन जी को जितनी भी बधाई दी जाए, ये एक कार्यक्रम इन्होंने जो समुद्र मंथन जैसे किया गया, तो एक तरह से ये आयुर्वेद का ऐसा मंथन इन्होंने किया कि इसमें से कितनी चीजें निकल करके सामने आई हम लोगों के सामने, वो प्रयास इन्होंने किया है, भगीरथ प्रयास के लिए ये हृदय से बधाई के पात्र हैं, और खूब इनको जितनी बधाई दें वो कम होगा. वास्तव में ये आयुष समृद्धि का एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने दिया जिसमें ज्ञान का सतत और आयुर्वेद के विभिन्न पक्षों को, किसी पक्ष को इन्होंने नहीं छोड़ा. उसमें चाहे एकेडमिक हो, रिसर्च हो, इसके साथ साथ औषध निर्माण हो, चिकित्सा हो, मतलब जितने भी पक्ष हैं, और ऐसे विषयों को जिसके बारे में आदमी सोच नहीं सकता है, ऐसे विषयों को भी आयुर्वेद के निकट, और आयुर्वेद से उसमें किस तरह से हम आयुर्वेद के साथ उसको जोड़ सकते हैं, इस तरह का प्रयास इन्होंने किया. वाकई इनका प्रयास बहुत ही स्तुत्य है, और मैं इनको प्रणाम करता हूँ हृदय से. वास्तव में आयुर्वेद की क्षमता, आयुर्वेद में क्या क्षमता है, जो भी आयुर्वेद के क्षेत्र में है वो सब इसको समझते हैं. इन क्षमताओं को दुनिया जाने, दुनिया समझे, और खास करके जो इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं पठन पाठन के लिए, वो अच्छी तरह से इसको समझें, और इसका अपने आगे के जो भी उनका एक जो जीवन का कार्यकारी क्षेत्र होगा, उसमें वो किस तरह से उसको अच्छी तरह से भुना सकें. तो इसके लिए इसका प्रचार प्रसार सबसे आवश्यक है, और इस प्रचार प्रसार के लिए भी यह जो प्लेटफॉर्म इन्होंने उपलब्ध कराया है वो एक बहुत बड़ा मार्गदर्शक सिद्ध होगा निश्चित रूप से. जैसे कि हम सभी कहते हैं कि भाई जीवन के चारों पक्षों, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो आयुर्वेद में जितना, चाहे चिकित्सा से संबंधित हो या जीवन के किसी भी पक्ष को हम लें, जितना अधिक विचार, जितनी गहराई से विचार और जितना सफल विचार, जिसमें कि कहीं कोई कहते हैं कि भाई आयुर्वेदोपदेशेषु उपदेय परमादरा, क्यों, तो ये एक इस तरह का है जो स्वयं सिद्ध है. इसमें
और कुछ जैसे खाली इसको समय के अनुरूप हम बना सकें, इसके लिए हमारा प्रयास होना चाहिए, जिससे कि आज का जो वैज्ञानिक समाज है, विश्व का जो समाज है, भारत से बाहर के जो लोग हैं, उसको भी वो भी इसको अच्छी तरह से समझ सकें और अपने व्यवहार में ले सकें। आवश्यकता इस बात की है, इसको प्रचार प्रसार देने की बात है। और इस मंच के माध्यम से पवन जी ने बहुत कुछ किया है और इसको जितना प्रचार मिलना चाहिए वो काफी मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहूँगा कि आगे भी यह सतत चलता रहे और हम लोग भी अपनी सुविधा के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ते रहेंगे और इसका लाभ लेते रहेंगे। हम सभी जितना जुड़े हैं और उसमें जितना जुड़े हैं उतना इसको हम कहें कि कुछ न कुछ उसमें से हमने हासिल किया है। जितनी बार जुड़े हैं उतनी बार हमने हासिल किया है, और हम ही नहीं बल्कि जो भी जुड़े होंगे हर किसी ने इसमें कुछ न कुछ प्राप्त किया है। तो मैं हृदय से पुनः बधाई देता हूं और यह कार्यक्रम चलता रहे, लोग इसमें जुड़ते रहें, ज्ञान का प्रचार प्रसार होता रहे, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होता रहे। और जब तक यह प्रचारित नहीं होगा, इसकी क्षमताओं को खूब अच्छी तरह से लोग नहीं समझेंगे, तब तक लोग इससे लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। आयुर्वेद एक ऐसा भंडार है कि दुनिया को सब कुछ दे सकता है। स्वास्थ्य तो सबसे बड़ी चीज है, और स्वस्थ अगर समाज हो गया तो बाकी सब चीजें अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से बधाई देता हूं और खूब खूब धन्यवाद देता हूं हमें भी शामिल करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आशीर्वचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थोड़ा लेट ही सही आदरणीय वैद्य ताराचंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, जो अभी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे आशीर्वचनों की प्रार्थना करता हूं। वैद्य श्री ताराचंद जी शर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ न्यू दिल्ली। वेलकम सर। आदरणीय ताराचंद शर्मा सर। आवाज नहीं आ रही है। Sir, he has to unmute. अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। गुरुजी अनम्यूट कर लीजिए। करो। हाँ, आवाज आ रही है अब? जी गुरुदेव, स्वागतम स्वागतम। वो राजीव जी का जो आ रही है गुरुदेव। अभी 5 मिनट बाद लगी। हाँ, आयुर्वेदो अमृता नाम, आयुर्वेद धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम रोगा तस्यापहर्ता शेषो जीवित से कहा है, वो सत्य है। क्योंकि आयुर्वेद इस समय क्राइसिस रोग की ज्यादा है और आयुर्वेद को हमें आगे बढ़ाना है। इसमें आयुष मंत्रालय बहुत बढ़िया काम कर रहा है। समय पर कितने आयुर्वेद पर्व किए हैं, हर 3 महीने में 6 महीने में कर रहे हैं। लेकिन हम वैद्यों का भी कर्तव्य है कि हम जनता में जागृति पैदा करें, तब आयुर्वेद बढ़ेगा। दूसरा, जो छात्र आयुर्वेद पढ़ने के लिए आ रहे हैं वो आयुर्वेद पढ़ने के लिए आए, एलोपैथी में उनका एडमिशन नहीं हुआ तब आयुर्वेद में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका कारण है कि हमें छात्रों को बुला करके अपने प्रांतों में, अपने जिलों में एक मीटिंग करनी चाहिए कि देखिए आपको आयुर्वेद क्यों पढ़ना है। दूसरी बात, आयुर्वेद के अध्यापक जितने भी हैं वो आयुर्वेद को एंशिएंट के नाम से पढ़ाते हैं और मॉडर्न को ज्यादा पढ़ाते हैं। इस करके भी लोग आयुर्वेद वो प्रैक्टिस अपनी आयुर्वेद नहीं करते। इसका कारण यही है कि हमें अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी होगी और छात्रों को अपने स्कूल के जीवन से ही उनको एक एक लेक्चर वहां देना होगा
कि आयुर्वेद और टेम्पररी औषधि देने वाला नहीं है। हमारा आयुर्वेद का मूल उद्देश्य क्या है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसके बाद वैद्य का क्या कर्तव्य है? धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र से प्रयोजनम, तंत्र का यह प्रयोजन है। तो दोनों प्रयोजनों को देखते हुए हमें एक तो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ऐसा बनाना चाहिए। अभी पाठ्यक्रम नया बना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उसमें आधे से ज्यादा एलोपैथी का जोड़ दिया गया है। अब आप ये चाहते हैं, आशा करते हैं कि बच्चा आयुर्वेद ज्यादा पढ़े। मेरे जमाने में 70 साल 60 साल पहले जो परीक्षा थी महासम्मेलन से होती थी, उसमें प्योर आयुर्वेद ही होता था, पूरा संपूर्ण आयुर्वेद। वो लोग आज भी आयुर्वेदज्ञ हैं, उन्होंने मॉडर्न में पढ़ लिया। तो आधुनिक पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि मेरा जैसा वैद्य एक टेस्ट नहीं देख सकता तो ये गलत बात है। लेकिन आयुर्वेद को पढ़ाने के लिए दो ही बातें मैं बता रहा हूँ। एक तो मैट्रिक तक बच्चा जब पढ़ता है उसके यहाँ एक लेक्चर होना चाहिए, उसको आयुर्वेद के गुण बताने चाहिए उनको। दूसरा, आयुर्वेद की चिकित्सा में हमें थोड़ा ये भी देखना है कि ये जो एलोपैथी के डॉक्टर ये कहते हैं कि वैद्य लोग किडनी खराब कर देते हैं, वैद्यों के पास मत जाना, वैद्य ये है। तो दिमाग में लोगों के आ गया है कि आयुर्वेद जो है औषधि बहुत गर्म है, नहीं लें। तो ये भी हमें बताना पड़ेगा। और छात्रों को आयुर्वेद का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देना होगा और जनता में अवेयरनेस पैदा करनी होगी। अब अकेला आदमी नहीं कर सकता चिकित्सक, इसलिए हमें अब हम ये सोच रहे हैं कि विद्यापीठ के जरिए हमारे प्रांतों में जितने भी शाखाएं हैं, उन शाखाओं के साथ जितने भी कॉलेज जुड़े हुए हैं, उनमें हम लोग जाएं। हमारे अध्यक्ष जी ने, राकेश जी ने भी कहा है कि आपको भेजा करेंगे, तो आप कभी कभी महीने में जाकर किसी कॉलेज में एक लेक्चर दें कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के गुण क्या है, आयुर्वेद से आपको लाभ क्या मिलेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और चिकित्सक आपको कैसा बनना है। इसके लिए हमें देना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हम तो आज भी तैयार हैं अपनी सेवाएं देने के लिए, इसलिए कि आयुर्वेद को आयुर्वेद की दृष्टि से ही पढ़ाना होगा। हाँ, ये जरूर है कि मैं यदि चिकित्सा कर रहा हूँ और मेरे पास थायराइड के 50% ठीक हुए हैं, तो मुझे उसका डाटा रखना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, मैं चिकित्सकों के लिए कह रहा हूँ। ये कह दिया कि मैंने 100 रोगी ठीक कर दिए, उसको कोई नहीं मानता आज। इसलिए हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा और वो प्रस्तुत करना होगा कि देखिए ये दवाइयाँ थी, इतने दिन तक दी, इसका क्या रिजल्ट रहा, ये हमारे डाटा है। तो चिकित्सकों का ये कर्तव्य है कि अपना जो भी छिपाए नहीं, जो औषधि देते हैं उससे जितने रोगी ठीक होते हैं उनको प्रकाशित कराना चाहिए और डाटा सहित प्रकाशित कराएंगे। आजकल तो इतनी पत्रिकाएं आती है, रामदेव जी ने कई अपनी रिसर्च की है, वो वहाँ प्रिंट करा दी, वो आज हो रही है उनकी। बाहर की जो पत्रिकाएं आ रही है, उन पत्रिकाओं में लेख तभी जाएंगे जब हमारे पास हमारे डाटा होंगे। तो चिकित्सक बनाने के लिए और आयुर्वेद पढ़ाने के लिए हमें उनको एक एविडेंस देना पड़ेगा कि देखिए ये औषधि थी, इसने इतना काम किया, इन रोगियों पे किया। और ये भी बताना होगा कि देखिए ये औषधि आयुर्वेद में लिखी है, लेकिन इसका काम आज नहीं हो रहा। हमें नेगेटिव बताना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं जी लिखा हुआ होगा जरूर, इसको सोच के नहीं रहना, नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है इसका कारण बताता हूँ। जैसे कुरकुमिन लोग दे रहे हैं, कुरकुमिन दक्षिण भारत की जो हल्दी में है वो 100 किलो में 1 किलो मिलता है, और जो हमारे उत्तर भारत की है उसमें बहुत कम मिल रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हल्दी काम कर रही है, वही काम कर रही है जिसमें ये गुण है। दूसरा, सूत्र पर बाकुची काम करती है, लेकिन बाकुची में वो गुण ही नहीं है। बाकुची देखा हमने, वो निकाल के तो नहीं है, लेकिन एक प्रांत में है, वहाँ की बाकुची काम करती है, जो दक्षिण वाले भेज रहे हैं उसके तेल बना रहे हैं। तो हमें उस औषधि के गुणकर्म पे करना पड़ेगा अभ्यास, कि भाई अध्ययन करके बताना पड़ेगा कि ये औषधि इस समय काम कर रही है, ये औषधि काम नहीं कर रही। पंचलोचन हमें नहीं मिल रहा, पंचलोचन सिलिकेट का बन रहा है, वो चाहे
क्या बांस छाप आता हो या कमल छाप। अब जो दूसरा मिल रहा है बांस के अंदर वाला, वो अभी 4,500 रुपए का 1 किलो मिल रहा है बंसलोचन। तो बंसलोचन नहीं डालेंगे तो बलादी काम नहीं करेगा। तो हमें सब तरह से देखना है, वनस्पतियों का भी, चिकित्सा का भी, शिक्षा का भी, और जनता में अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। और आयुर्वेद के साथ ये नहीं तो ये ले लो साथ में, ऐसा नहीं। आयुर्वेद की औषधियां काम तो करेगी, और उन औषधियों का यदि उत्पाद सही हुआ है और उसका संग्रह सही हुआ है और समय पे उत्पन्न हुई है और कीट कृमि से रहित है, वो औषधियां ज्यादा काम करती है। तो मेरा कहना ये है, औषध का भी हमें देखना है, अध्यापन भी ठीक कराना है, अवेयरनेस भी पैदा करनी है, और बच्चों में उत्साह भी पैदा करना है कि आयुर्वेद पढ़े। और क्यों पढ़े ये बताना पड़ेगा कि देखिए, आपकी चिकित्सा जो है इतनी पुरानी है, और ये तो 188 साल हुए इसको, तो 188 ईयर्स हुए एलोपैथी को, और आपकी 5,000 साल पुरानी है। तो आप इसको जिन लोगों ने नकारा, और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे स्वतंत्रता के बाद, और ये पंडित शिव शर्मा ने साफ लिखा था एक जगह कि अमृत कौर जब स्वास्थ्य मंत्री बनी तो उन्होंने पहले कह दिया आयुर्वेद को क्या करोगे, एलोपैथी वालों को एक पेपर पढ़ा दो, इसीलिए इतने साल दबा रहा। अब जब आयुर्वेद को ये वाजपेयी जी आए, तब पहले, इससे पहले एक छोटा सा विभाग था, फिर आयुर्वेद का अलग विभाग बनाया गया, ये नरसिम्हा जी के जमाने में। फिर वाजपेयी जी आए तो इसको आयुष आयुष नाम दिया गया। फिर अब ये आए तो आयुष मंत्रालय बना। तो ये है कि प्रगति तो हो रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कि वैद्यों का क्या कर्तव्य है, अध्यापकों का क्या, ये देखना पड़ेगा। और आपको कोर्स ऐसा बनाना होगा जिसमें लोगों को आयुर्वेद पढ़ने की ज्यादा इच्छा हो, इंटरेस्ट बढ़े। इसका कारण यही है कि आप चिकित्सा बताएंगे, इनके गुणकर्म बताएंगे। मैं तो यही देख रहा हूँ कॉलेजों में बच्चे मॉडर्न तो ज्यादा पढ़ते हैं, एलोपैथी को थोड़ा पढ़ते हैं। उसका कारण यही है कि अवेयरनेस नहीं है। अध्यापक भी हमारे वही आ रहे हैं MD PhD करके, उनको भी पूछा। मैं किसी कॉलेज में गया तो मैं पदार्थ विज्ञान बता रहा था, तो कहने लगे जी पिलू पाक पिठर पाक बताइए क्या है। तो एक अध्यापक ने पूछा, जी गुरु जी पिलू किसे कहती है बताओ पहले तो। अब उनको MD PhD थे, मैंने कहा भाई परमाणु को पिलू कहा है वहाँ, आप बताइए। अब ये पता ही नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सब जगह जाता हूँ लेक्चर देने, तो सब कहते हैं ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पहले, ये तो पढ़ा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें अध्यापन में भी और आप अवेयरनेस देनी पड़ेगी, भैया आयुर्वेद ज्यादा पढ़ाओ, क्योंकि वो मॉडर्न पे ज्यादा ध्यान देते हैं, आयुर्वेद पर नहीं दे रहे। अब क्या करें इसमें, ये कर्तव्य हमारा है, हम लोगों का, अध्यापकों का है, चिकित्सकों का है। और जनता में अवेयरनेस, जनता चाहती तो है, लेकिन एक तबका ऐसा वो कह देता कि आयुर्वेद में मत जाना, वहाँ किडनी खराब हो जाएगी, लिवर खराब हो जाएगी, आपको बस में दे देंगे वैद्य लोग। अब क्या करें उसका। तो हम उनको कहते हैं कि हमारे यहाँ ये नैनो टेक्नोलॉजी जो थी, सबसे पहले 6ठी शताब्दी में आई थी। नैनो का मतलब इतना पार्टिकल हो गए और इतना शुद्ध करके हम देते हैं, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। तो ये हमें फार्मेसियों को भी कहा, भाई तुम भी एक गोष्ठियां किया करो और लोगों में एक कैंप लगाओ, उनमें लोगों को बताओ। हम भी जाते हैं कॉलेजों में, बताते हैं लड़कों को। तो अब उनको जितने भी विद्यार्थी मेरे यहाँ तो पढ़ने आ रहे हैं विद्यापीठ की तरफ से भी, वो सब कहते हैं देखो हम तो एलोपैथी देते नहीं, ठीक हो रहे हैं। उसका मतलब है कि उनको पथ्य की जरूरत है। पथ्य सत्य गदार्थ से कि औषध निशेवने हमारा लिखा है, और ये कहते हैं एलोपैथी वाले सब कुछ खाओ दवाई लिए जाओ। तो वो तो एक औषधि रोग को रोकने वाली है, वो साफ कहते हैं। कई डॉक्टर हमारे पास आते हैं, हमारे पास रोकने की औषधियां हैं, ठीक होने की तो बुखार की भी नहीं, हम तो तोड़ते हैं बुखार को, आप ठीक करते हैं। तो ठीक करने में तो हमारे यहाँ तो लंघन छपके दो से लंघन है। अब कहते हैं लंघन कौन करेगा जी, अभी दवाई दो, हम तो ठीक होना है। तो उनमें अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। देखिए आपको लंबे समय तक बीमार नहीं होना है, तो पथ्य के साथ औषधि लेंगे तो ठीक रहेंगे। तो मैं 3 चीज रही, अवेयरनेस जनता में पैदा करना, विद्यार्थियों को आयुर्वेद पढ़ने के लिए उत्साहित करना, अध्यापकों को इसलिए जागृत करना, और चिकित्सकों को अपनी चिकित्सा में हुए जितने भी लाभ
उनका डेटा कलेक्ट करके हमारे प्रस्तुत करना, तब ये जाकर अवेयरनेस होगी, नहीं तो नहीं होगी। मेरा तो इतना ही कहना है। बाकी तो बहुत बातें बताने के लिए, तो शास्त्र तो बहुत बड़ा है, ये कितनी कितनी बताएंगे। क्योंकि अब देखिए हमारे कितना बड़ा प्रोसेस। अब हमारे चरक में सुश्रुत में लिखा है यदांतरेषु गविन्यो यत्, अंत से गविनी में मूत्र कैसे जाएगा? तो पंडित हरिश शास्त्री ने कहा कि देखो ये सुश्रुत का वाक्य तो ठीक है, लेकिन लिंक नहीं होता। आंतों से गविनी का कोई लिंक नहीं है, बाईपास नहीं है। तो नारायणोपनिषद में लिखा है कि मनुष्य शरीर में 2 प्रकार की आंत्र होती है, एक मूत्रांत्र, एक पुरुषांत्र। तो उन्होंने नेफ्रॉन्स को मूत्रांत्र कहा वहां, लेकिन नारायणोपनिषद में है ये सूत्र मूत्रांत्र। तो नेफ्रॉन्स आज जो कहते हैं ये उस समय उनको पता था कि उसमें फिल्टर होकर के फिर गविनी से ब्लैडर में मूत्र जाता है। तो वो आंत्र नहीं है, उसको उन्होंने कहा एक तो मूत्रांत्र है, एक पुरुषांत्र है। तो वो सूत्र कहाँ से लाएंगे? तो मुझे पता है इसलिए मैंने तो बता दिया, लेकिन लोगों को तो ये कहीं देखो सुश्रुत में गलत लिखा है। फिर दूसरा हमारा, मैं कहता हूँ कि बाल आपके कम है तो छोटी अवस्था में तो आप सरबिंदु तेल और ये अणु तेल का प्रयोग करो। क्या करेंगे? मैं कहा आयुर्वेद कहता है नासायुष द्वारम, कहते नाक सिर का द्वार कैसे हो सकता है? मैंने कहा किसी को थोड़ी सी दवाई डाल के नाक पे लगाओ, बेहोश हो जाएगा। कहाँ गई? पेट में तो गई नहीं, वो ब्रेन में गई है। तो कहाँ से गई? तो हमारी झिल्ली ऐसी है नाक के ऊपर की, वो सक करके सब चीजें ऊपर देती है। तो ये उनको बताना पड़ेगा। ऐसे ऐसे सूत्र हमारे यहाँ है जिनको हमें लिंक करके बताना पड़ेगा। देखिए ये हमारे यहाँ वहाँ लिखा है। तो आपका जो नेफ्रॉन्स है वो ये है। अब यही कैंसर के बारे में, आपको हाँ कैंसर है जी? मैं कहा हमारे कर्कटार्बुद का, द्विअर्बुद का, अध्यर्बुद का, कितने अर्बुदों का वर्णन किया है, एक के बाद ऊपर का भी। तो मतलब ये बताना तो पड़ेगा। अब बच्चों को जब अब इसके बारे में बताएंगे तब उनको लगेगा कि हाँ हमारे सूत्र गलत नहीं है, इनका इनका लिंक कहीं से जोड़ना पड़ेगा। अब ये कहते हैं एक एक दिन से गर्भ धारण करने में 1 महीने तक का, हमारे यहाँ तो प्रथम मास में द्वितीय मास बताया, लेकिन गर्भोपनिषद में 1 दिन का, 7 दिन का, ये ब्लास्ट टोपोब्लास्ट 15 दिन का और 1 महीने का सारा वर्णन किया कि गर्भ कितना बड़ा होता है। वो गर्भोपनिषद में है, लेकिन सुश्रुत शरीर में नहीं है। तो हमें ये जोड़ना ही पड़ेगा। और कुछ अध्यापकों को सब्जेक्ट के जो सूत्र रह गए हैं उनको जोड़ने के लिए अवेयर करना पड़ेगा कि देखिए आप इस विषय के हैं, इसके अंदर जो सूत्र आपको लगते हैं कि ये ठीक नहीं है तो उसका लिंक कहाँ से मिलेगा, वो जोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसे ही जो है अभी सब्जेक्ट थोड़े बदल दिए हैं, एक संहिता कर दिया। पहले अष्टांग हृदय था, अष्टांग हृदय ठीक था। अष्टांग हृदयकार ने देखिए लिखा कि रक्त को रंजन करने वाले का फैक्टर है वो यहीं से मुख से ही शुरू हो जाता है। अब ये गलत बताते थे, अब एक कैसल ने ये सिद्ध किया कि हम खाना चबाते हैं वहीं से शुरू हो जाता है। अब ये बात सिद्ध हुई है जो 6वीं शताब्दी में उन्होंने कही थी। तो हम इन बात को, कुछ लोग तो कहते हैं कि आयुर्वेद में तो बड़ा गपोड़ लिख दिया, ऐसे लिख दिया। उनको लिंक नहीं जोड़ना आता। अध्यापक भी उसको छोड़ देते हैं कि एंशिएंट पढ़ लेना, एंशिएंट थोड़ा सा, मॉडर्न को ज्यादा पढ़ो, एंशिएंट में क्या रखा है ये तो आप ही पढ़ लोगे। लेकिन उसको पढ़ाने में बड़ा जोर आएगा, एंशिएंट पढ़ाया नहीं जाता सूत्र को। तो मेरा कहना है कि अध्यापकों का भी एक जिम्मेवारी है, एक चिकित्सक की जिम्मेवारी, एक अच्छा रोग जिसको ठीक करते हैं उन रोगों का डाटा कलेक्ट करके दे दे और जनता में अवेयरनेस पैदा करे। और छात्र आयुर्वेद में आए वो अपनी इच्छा से, जैसे मैं अपनी इच्छा से आया, मेरा लड़का भी है, मेरा पौत्र भी अपने आप कहा मैं आयुर्वेद पढ़ूंगा। तो मतलब इच्छा जाहिर होनी चाहिए, ये नहीं कि एलोपैथी में नहीं मिला मुझे तो मैं आयुर्वेद में आ जाऊं, तो ये तो गलत बात होगी। तो मेरा मतलब है कि जनता में अवेयरनेस पैदा करके लोगों में आयुर्वेद के प्रति निष्ठा पैदा करके ही हम आयुर्वेद को आगे बढ़ा सकते हैं। खाली पवन जी लगता है कट गया आवाज। कह रही है आवाज नहीं आ रही। सही कहना है। बाकी तो मैं भी चिकित्सा में हूँ अभी, तो मेरा नमस्कार
और आपने रखा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया किया। इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी, हम लोगों में भी जागृति होगी, हम लोग आपस में मिलेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, नहीं साल में कोई कम से कम 10-12 बार आशीर्वाद देते रहिए हमको। बस हम संकल्प पथ पर चलते रहेंगे, ये नहीं। हमारा विश्वास आपको है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। अब सेकंड साइंटिफिक सेशन की प्रोफेसर शांतला प्रियदर्शनी जी हैं। प्रोफेसर शांतला प्रियदर्शनी जी is chair now at University of Latvia. Shantala madam, welcome. Namaste. Namaskar, swagatam, swagatam. So to start with, I would like to say what should be the aim of the students and everybody. Kamayetu natu rajyam bhogam apunarbhavam. Kamayetu dukkataptanam artinashanam. So that should be the aim of anybody in the field of Ayurveda. You should not desire for wealthy acquisitions and all that. So most of the people can understand Sanskrit. So I think I don't need to translate it. So what I would like to tell the upcoming graduates and students will be like, you have to update yourself. Skill updating is very, very important. Maybe making YouTube videos or writing articles. Writing articles and all that was, people don't read anyway. So it is better to have YouTube videos or blogs, and you have something to show them that Ayurveda is getting popular day by day. People are asking, how come you went to Latvia? How come you were selected? So it is not that I aim for it. Every day, my dedication for Ayurveda was there, and dedication, determination, and total diligence was what I had for Ayurveda. That is what I would like all my youngsters to think about. So innovative thinking is very important, it to be encouraged by everybody to everybody. And then you need to be inspired and get inspired. So that is the other thing that I would like to say. Then learning languages. If you go to other country, you will need to learn not only languages, the weather condition, the flora, fauna, culture, everything. See, for example, last week, somebody asked me, see, we have so much of daylight. So how do we realize Vata, Pitta, Kapha time? And how is it that to be decided? So circadian rhythms will all go ups and downs. But your body is very important, it will tell you. So we have to have a lot of challenges. Desha Satmya, Rutu Satmya, we have to make our students understand. So first is be a Sushruta. Listen well, listen everything that the teachers are telling, the experts are telling. So listening is most important, and only then you can get a lot of knowledge. Second one is become Charaka. So you go abroad, go to different countries, you find how Ayurveda can be spread everywhere, why Ayurveda is becoming global and why it can become. So that is the other thing that I would like to say. So than trying to impress people, you have a everyday goal that you should improve. So like learning computer languages is very important. So learning should never stop in Ayurveda profession or in any profession. So all this is what I would like to say. Thank you for giving me this great opportunity. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Here, I would like to communicate all international dignitaries like Shantala ji, like we have Dr. Naveen Gupta ji, Madan Thangvelu sir, and Harish Verma ji will also join, I hope, definitely. So I would like to request on behalf of Dr. Suhas Shetty, he is our best resource person and supporter of this Ayush Samriddhi. He is Vice President of Sayut in Ayush Samriddhi. So he is organizing a grand program of 3 days
in which 18th evening and 19th morning, 2 sessions will be there for international dignitaries. 18th evening and 19th morning. So I would like to request now Dr. Suhas Shetty. Welcome, Dr. Suhas Shetty. Please communicate your sentiment, and then we will invite everybody here. 12 international experts are expected to join today. I hope they all will bless the organization, KLE also. Welcome, Dr. Suhas Shetty. Welcome. A very good evening to all of you. At the outset, let me congratulate the entire team of the Independent Research Ethics Society for completing 400 episodes in Ayush Samriddhi. And very happy to be associated with this for the last 2 years, and really a moment of joy and celebration today. And as we all know that today we are discussing some of the strategies related with how to promote Ayurveda. And I think Pawanji has mentioned 4 points. I'll also mention 4 points here, and then end with an international webinar or seminar. It's a conference which we are celebrating as a preventive healthcare in the month of November. It's on the 17th, 18th, and 19th of November at the KLE Academy of Higher Education at Sri B.M. Kankanwadi Ayurveda Mahavidyalaya, Belagavi. So I take this opportunity to invite all of you to please join us and in this celebration. So when it comes to the 4 important strategies, most important thing is, as most of the senior teachers have mentioned, the first thing is the academics, and especially the training of teachers, and for which I think in our institution we have developed a separate department called as Department of Ayurveda Medical Education, where we are training the teachers across India in the teaching and training techniques based on the different international standards. So it has been a center which has been recognized by NCISM for training the teachers, and we have been doing this training for the last few years. When it comes to the health practice, especially the specialty practice, so we have been able to set up various specialty OPDs along with the regular OPDs, like the OPD for cancer, OPD for cardiology, OPD for fertility, OPD for psychiatry, OPD for thyroid, OPD for obesity, OPD for skin care. So these are the specialty OPDs that we have developed, and we have the experts for each one of them, and each of them have set their own mark in terms of their practices. And we are also trying to document this and publish this at various aspects. Of course, the research will be the future of which we'll be talking about. And we also have various research units. Especially, we have an exclusive centralized drug testing lab, which is approved by the Ministry of Ayush, Government of Karnataka, where we are trying to test all the quality products across the state. And it's all the pharmacy products of our pharmacy and all the pharmacy across the state. We are trying to standardize, do all the basic physicochemical and the stability test. We also have a department called as Ayur Technology, where we are trying to integrate the basic principles of Ayurveda with the newer technology, trying to develop different products, formulations, contents, patents, etc. And especially, we have been training the students and teachers in how to patent the products. And this year, we have submitted 5 patents, and we have been published 3 patents, and 1 have been granted. And along with that, I strongly feel that we should conduct some good interactions and a good platform for sharing our opinions, and for which probably we are trying to come up with this particular international conference, which we are hosting. As most of you have expressed that we are focusing on preventive healthcare. We are calling it as Swasthayu, towards healthy living. And with this, we are conducting with the pre-conference workshop on 17th November. And on 18th and 19th, we'll be conducting the global consortium. And especially if we are focusing on skills stations, I think as Shantala Madam was also mentioning about the importance of skill, we'll be dedicating exclusive sessions, 4 sessions for skills, especially on diet and nutrition, the publications, then the different types of research activities, and especially the newer learning techniques for teachers. So these are the different skill stations that we'll be conducting.
We also will be inviting different experts. We'll be having Dr. B.M. Hegde, Dr. Bhujang Shetty, and different experts from diet and nutrition, CFTRI, apart from the experts from Ayurveda, who will be sharing their experiences in this. And along with that, as Dr. Pawan sir has mentioned, that we would like to have a global consortium for the scope and practice of Ayurveda in different overseas countries. So I would like to take this opportunity to invite all the international experts so that with this consortium will be an online mode. Apart from this, the rest of the conference will be an offline mode, where we'll be requesting different experts in maybe 2 sessions based on their time zone to join us and guide our young generation of the relevance, the scope and practice of Ayurveda in their country. So that because many of the students would like to know the status of Ayurveda in different countries, and that is also one of the interests of our upcoming graduates and postgraduates. So I thank this entire team of IREC for these opportunities, and we'll be looking forward for your constant support and guidance in conducting this particular seminar, Swastayu 2022 from 17th to 19th of November at KLA Academy of Higher Education. It's an international level conference, and we'll be conducting it in the International Convention Hall in our university, and it's a state-of-art convention hall which has all the facilities which is available in this. So looking forward to have you all, and we'll be updating our upcoming details on 1st of July with all the other details of the conference. Thank you very much, Pawanji. Thank you, Dr. Suhas. Thank you very much. Very nicely explained. As strategy as well as plan, both. Thank you. Thank you very much. One concept is there, sir. Dr. Kurup thought about it. WHO and Asia, quite traditions are quite different. So why not we should have Asia Health Organization, like World Health Organization, when we should be avoided by that AHO, Asia Health Organization. This is a concept thought by Dr. Kurup, now nurtured by our team. Vaidya Tapan Kumar ji is here from Ahmedabad, Sanjay Chajer ji is here from Mumbai, and myself. We are trying to revive this concept of AHO in comparison or in parallel to WHO, and we would like to invite all Asian members, all Asian countries members in our webinar. We are trying to do it. Please support. If you have any introduction with any Asian country, on 17th of July, we have International Justice Day. So on that particular day, we are going to celebrate concept of Asian Health Organization. Please support for that. Each and every Asian country's representative should attend our webinar and should make his opinion, his or her opinion regarding Asian Health Organization. Thank you. Now I would like to invite my brother, Dr. Vaidya Nadi Guru Acharya Sanjay Chajerji from Maharashtra. Welcome, Sanjay, welcome. Thank you. Thank you. Pawan Bhai. Thank you for inviting me on such auspicious and elegant organization to speak on the strategies to develop awareness about Ayurveda and give the 4 points for making the awareness easier. First of all, on the onset, let me congratulate you and the entire team of Independent Research Ethics Society for making this wonderful mark happen, the 400th webinar in continuation on various subjects of Ayurveda and health. I'm sure 3 years down the line, we'll definitely have the 1000th or the millennial episode of Ayush Samriddhi webinar. With this, I would like to thank you for supporting the idea of Asian Health Organization. That is wonderful phenomena going to happen
in coming future which can enhance the activities of Ayurveda throughout the world. So to make people aware about Ayurveda, what is needed? The first thing, which has been briefly been said by Tarachand sir, that he said the school people should have one lecture. I think it should be other way around. There should be some kind of information about Ayurveda, Ayurvedic herbs, or the innovators of Ayurveda from the preschool days. There should be something added on every syllabi. Unless NCERT looks in this organization of reorganizing the syllabi of the school going children, when the student will come to Ayurveda at the 12th standard, he will not hate Ayurveda. He will have some awareness about Ayurveda, some knowledge about Panchamabhutas, some knowledge about Gunas, some knowledge about the Charak, and Vagbhat. Otherwise, what is happening? We are aware about physics, we are aware about chemistry, we are aware about Newton, Einstein, and everybody else, but not heard of even Charaka, Susruta, Vagbhata. Forget of the other dignitaries and the scientists, the rishis of Ayurveda. We are aware about Dolo 650 people. Students are aware about paracetamol. Students are aware about penicillin, but they are not aware about Tripala, Sitopaladi, or even Avla. So that needed to be altered. Every syllabi, right from the preschool days, should be altered, and there should be some inclusion of some topics of Ayurveda right from basics. Secondly, once the student come to Ayurveda, as Tarachand has very correctly and rightly said, that the student should come there not as a rejection from modern medical fraternity, but by the choice of learning Ayurveda. They can learn Ayurveda only if they are aware about the Ayurveda. I can tell you my own experience. When I got admission to BMS course, till then I was not at all aware about the course called BMS. It was, as Tarachand has very rightly said, it was rejection from MBBS course. We opted for some other course, and when I came to Ayurveda, I understood the greatness of Ayurveda. But if I would have been trained since my childhood days, probably that process would have been the easiest one and would have been the voluntary admission to Ayurveda. That is a must, must, and must. Third, very important, that when we are teaching Ayurveda students, what I understood, that the Sahitas which are available in various books and the material available for studies is in Sanskrit. Our teachers are still expecting Sanskrit to be used as base for understanding Ayurveda. I'm sorry, my friend. We need to understand the languages are changing. Our understanding is getting elaborate. Without hampering the base core of Ayurveda, the Shastra, we can easily translate it into the today's language. Students will be more comfortable in learning in today's language. The third most important phenomena, that it has to be made to the public, for the public. Unless the normal population, why COVID has helped us? COVID has given enormous boost to Ayurveda. Reason is very simple, because Ayurveda showed the way how to combat the disease. And this is possible at every level. We did not have to wait for pandemic to happen. This needed to be promoted at every single aspect. And the common population should be aware about Ayurveda. And unfortunately, what Ayurveda is available in the market is Ayurvedic Jadi Buti Seban. So they understand every Jadi Buti is Ayurveda. Then people says it is Durlabh Jadi Butiya. Himalaya se lai huyi Durlabh Jadi Butiya. Not that way. Ayurveda is there in your home. Our life is all planned according to Ayurveda. Every Indian household lives a life which is in accordance with the rules and regulations laid down by Ayurveda. And when we alter them, we feel illnesses. So this awareness is essential to be communicated to common population, that their life is built on Ayurveda. Ayurveda is not in the Himalayas, not very rare, not very costly. It is our day-to-day life. Once this understanding happens to every single person in country,
I'm sure Ayurveda will automatically be upgraded and everybody will be definitely looking forward for Ayurveda solutions for day-to-day problems. And last but not the least, the use of technology. Use of technology is very important because I can tell you out of my own experience of Nadi Pariksha. When I started teaching Nadi Pariksha, there were a lot of clumsiness, difficulties to communicate people. But when we started with it, the understanding with technology, and now when we are coming out with easy technology for Ayurveda in the form of Sahaj Nadi Yantra, the awareness has been multifoldedly increased. The interest of the Vaidyas learning Nadi Pariksha has increased. Using Nadi Pariksha has been at least 20 times increased in last 3 years. I can tell you one thing. Recently, one of our application about Nadi Pariksha has got immediate download of 1 million of people. Common population is doing that. And contrary to our past experiences, our past surveys about awareness about Ayurveda in the common population, which was telling us that Ayurveda is not popular in the age group below 40. It was always from 45 to 60. But this Nadi Pariksha application has been downloaded by 40% of the entire 1 million downloads are from the age group of 17 to 35. Understand the paradigm shift of the thought process of common population. And that thought process is they want wellness. Wellness is going to be the next big industry, big leap. Ayurveda has to promote, propagate wellness, and that is probably being done by our very visionary Prime Minister, Sir Shri PM Modi ji, that he wanted every single country of the world should look to Ayurveda for wellness, and they are inviting people across the globe for wellness to India for Ayurveda. I think these 4 points are very essential for making awareness of Ayurveda in the entire world. With this world, I can lastly say one thing. Sahitas are not Veda Granthas where there should not be any change. Sahitas had already paved the way. There was Agnivesha Krute, Tantre, Charakapati Sanskrute, Drudabule Sampurite. This kind of re-editing, completing was a common phenomena for Ayurveda Granthas, which has been lost. Now with the last generations, which were our teachers, I found them. They always insisted for not touching the principles of laid down in the books, in the Sahitas, but the language majority of the students do not understand. So we need to revisit, re-edit and recompile the Ayurveda, and as very correctly been said, that there are certain chapters which are not there in Sushru Sahita, but they are there in the Garbha Vijnanam. So these alterations, recompilation, re-editing, Pratisanskaran, Sampuran is a need of time. And earlier, because of the communication was very difficult, it was done at every millennia. But now it is a time that every century we need to re-edit, recompile the Granthas of Ayurveda, which can be understood in the today's language for today's students. Thank you. Thank you very much for giving me an opportunity to be a part of this Elite panel. Thanks a lot. Namaskara. Thank you, Sanjay ji. Thank you very much. Before calling Dr. Vishnu Prasad Sharma ji, I would like to have your kind permission for 5 minutes, only for 5 minutes. Now that presentation was not being shown at that time, only for 5 minutes, I would like to have your valuable time. A decade of dedication. We in this 1 decade, we have conducted various seminars, webinar in recent years, awareness video, award functions,
we are providing Lifetime Achievement Awards and Best Speaker Award, Best Scholar Award, health camps, meetings, etc. So total 738 activities we have been able to conduct, and the guides are Professor Harish Shankar Sharma ji, Yogesh Chand ji, Rakesh Sharma ji, Kamlesh ji, Vishnu Prasad Sharma ji, CV Jha ji, Dave ji, Kartikeyan ji, KK Dwivedi ji, and this is newly constituted committee of Ayush Samriddhi. Dr. Pawan Kumar Sharma is nothing, only a Sutradhar. President is Professor Madan Thangvelu sir. Vice President North, Professor Vinit Agnihotri. Professor Dr. Ashok Kumar Dubey, Vice President East. Vice President West, Ved Rajan Patankar sir. Vice President South, Dr. Suhas Shetty ji. Vice President Central, Dr. C.P. Sharma ji. Vice President International, Dr. Venkat Joshi ji. Next, if I come to Secretary, where the Surya Prakash Sharma ji is Secretary here, General Secretary, I have proposed it and I hope your blessings will always be with me. Secretary North, Dr. Alok Sharma ji, every time contributing. Dr. Jayesh Thakkar ji, Secretary East. Secretary West, where the Sanjay Chajar ji, every time supporter, resource person. Secretary South, where the Ramdas PV ji. Secretary Central, Dr. Akhilesh Bhargav. Secretary International, where the Harish Verma ji. These are executives. North, East, West, South, we have kept two executives initially, but at present situation we have to increase this number up to infinite number, I don't know. And by this team, I have been able to record my name in 3 books. Now, I would like to present a glimpse of our webinars, because at that time this presentation was not being displayed. I hope now it is. Just a sec, give me a sec, please. Initially, we started this with telemedicine because telemedicine was the hot topic. Initially, it was started. Sanjay ji cooperated at that time also right from the starting, and we conducted various webinars, lifestyle disorders, and then COVID. So everybody was monotuned with the COVID topic, and then we shifted ourselves to recreational activities also to celebrate our Ayush every day without any competition, without any system. So skills have been identified within Ayurvedic doctors, like they are comedian poets, they are cultural poets, they are having practical experiences also. So various webinars, means this is a long journey of 4 centuries of webinars, and I don't think that if any is there, please remind me and definitely indicate me. We have not left any topic which can be related to Ayush, because in my opinion, our Ayurveda is not the subject of only Ayurveda Day. Our Ayurveda is the topic or important contributor part and parcel of our daily life. So with your contribution, GCP series, Good Clinical Practice series, GXP series, Global Ayush series, Time Tested Treasure series, Classical Rasayana series, Industry series, means food series, chocolate series. I don't know what can be
done in next webinars, what we are ready to relate our Ayush or Ayurveda specifically with all, because in my opinion, Ayush can give the answer to any mainstream. I don't want to take any name because everything is ours. Allopathy is ours. We are dependent on allopathy. We can't criticize any stream of the science which is saving the life in any situation in the country. I salute allopathy also. I salute my Ayushpathy also, because everything is contemporary and everything is necessary in our society. Thank you. Thank you very much for patience hearing. Now I would like to request our guardian, Dr. Vishnu Prasad Sharma ji, for his valuable comments. Dr. Vishnu Prasad Sharma ji. Namaskar. Good evening to everybody. Respected Honorable Bhatta Devendra Triguna ji, respected Bhatta Yogesh Mishra ji, respected Dr. Govind Shukla ji, respected Dr. Rakesh Sharma ji, respected Dr. Raghurama Bhatt, V.K. Agnihotri ji, respected Ashok Kumar Dwivedi ji, Alok Sharma ji, Madan Thangavalu ji, distinguished guests, ladies and gentlemen. Ayush can play an important role in realizing the dream of new India by providing quality healthcare and medical care for its citizens. At present, we are witnessing a highly deceptive environment where the value of Ayush system in healthcare is recognized. National health policy has strongly advocated mainstreaming the potential of Ayush within a pluralistic system of integrative healthcare. At this time, it's important for Ayush stakeholders to develop a clear roadmap and strategy for stimulating awareness of Ayush system. In order to take scientific leadership in healthcare, Ayush system need to work together, accepting and mutually respecting their respective strengths through, number one, building strong cooperation and collaboration with modern medical science, putting more emphasis on conducting scientific research for evidence generation that is scientific and reproducible, engage key stakeholder department like ICMR, which can add weight to evidence generated through research, widely disseminate the pros of Ayush system without showing that modern medicine in bad light, very importantly, involve or engage modern science and modern medicine as they are our key stakeholders. So take home message from my side, cooperation and collaborative with modern science, generating scientific evidence through rigorous research, engage key stakeholder, disseminate pros of Ayush, involve modern medical fraternity in Ayush awareness generating. And this is from my side. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. Now I would like to request Professor Vinit Kumar Agnihotri, sir, as per the sequence. Then Madan, sir, I would like to request Vinit Kumar Agnihotri ji. Am I audible to you, sir?
Now I would like to request Professor Madan Thangvelu sir. Welcome, sir. Welcome. Pavan ji, Your namaskar. Gambhir voice is Hari Om. inspiring us every time, sir. हरि ओम पवन जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने जो किया और जो चल रहा है प्रोग्राम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We are very happy to have so many senior people with us sharing such wonderful thoughts. I particularly want to thank Tarachand ji for such clarity in the messages he has given us. हमारी तरफ से ये है जी, तत्व शास्त्र व्यवहार. This is the basis for this rich science. उसके अंदर quality कैसे लाएं? Understanding tattvas, understanding shastras, understanding vyavahar. I think this is what everybody is saying today, that we need to inspire our students. Education must be good, research skills must be there, and understanding what the science is. So, वहाँ पे quality कैसे ले आएंगे? And I want to thank here Suhas Shetty ji for showing us how in a modern setting in Belgavi this can be achieved and where those improvisations must happen. My second point is on public engagement. I would love to see innovative ideas in public engagement. Nadi Guruji has just told us how modern technology can be used. Apps are developed or downloaded and the statistics can be measured. So this is very important in this new era as we prepare Ayurveda for the 21st and the 22nd century. Awareness, public awareness. I think we have a lot to learn from our Nadi Guruji, and we will discuss this in future events. I hope everybody who is listening is also excited about that opportunity of using the latest technology, but not diluting our tattvas or the shastras. That should not be compromised. Whether we do it with Sanskrit or without Sanskrit or language free, that is also a very important debate. I hope we can do that. And that debate is important because India today has taken leadership of a World Health Organization's global traditional medicine center. अब उसमें जो भाषा जो आप प्रयोग करते हो, संस्कृतम may not be available for everybody, but we must bring an independent, neutral language that is acceptable for the whole world. And here I agree completely with Sanjay Chajit. The other point that we want to, we might want to put in this public engagement thing is a point that we discussed recently about Prakriti card. And this is a very innovative concept. Maybe we can combine this together with Sanjay ji's suggestions and bring young people to think about this and to bring some new perspectives from around the world. इसमें ये जो DNA वाली बात की वो कैसे ले आए इसके अंदर की प्रकृति के अंदर, या कुछ माइक्रोबायोम जो जठराग्नि वाली बात, और उसमें जो शाहज कृमि जो आप कहते हैं उसको कैसे ले आए इसके अंदर. So these are very important things. Finally, the fourth point, again, I'm not deviating from the point about quality. अब आया जो जहाँ साहब ने जो बताया औषधि निर्माण के ऊपर, quality standards. दुनिया के लिए this is a very big samasya. It has been the biggest samasya for some aspects of globalization of Ayurveda. कि heavy metal है इसके अंदर, कहीं bacterial contamination है, कहीं कुछ pesticide है. इसके ऊपर the whole country must become aware of this. Our students must become aware of it. Our manufacturers must become aware of it. And once we bring all these things together, and together with leadership from all our senior dignitaries who are here, along with some very special people, particularly I want to highlight here Tarachand ji, who is there with us, who is happy to help us. And I hope we will have their guidance, Jasab, and senior people who are here with us. We will take their guidance and we will take this program forward into further seminars. We have completed 400. I hope in the weeks and months to come, we will
be speeding along to our 500th event. We will connect with people around the world, and we will take forward the wish of Ayurveda for globalization. So I finish off with just saying, Tattva Shastra Vyavahar, quality, 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 no compromise on quality. If it requires understanding Sanskritam, we should understand Ayurveda through Sanskritam. We cannot compromise the quality, but how to make it compatible for the 21st century. We have enough skills, we have enough minds, we have enough well-wishers from many, many areas, from the ministry, from the government, from Quality Control India. They will all join us to take this forward, a global march for Ayurveda. So with those few words, Pavanji, those are my wishes. Thank you for bringing us all together today on this wonderful event. As the world wakes up to Ayurveda and its benefits, this activity will be seen as a very important driver for the new initiative for the future. Pranamji, thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much. You are inspiring as always. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri, sir. Professor V.K. Agnihotri, sir. Thank you, Dr. Pawan Sharma ji, and our heartfelt respect and regard to all the great dignitaries and stalwarts of our today's webinars platform, starting right from Triguna ji to all our members. Very important factor that we have got no doubts to say that today, the 26th of June 2022, will be always remembered as an history day in the field of world webinars. It will be written in the golden letters that Dr. Pawan Sharma's IRES completed 400 webinars in a continuation on 26th of June 2022. So our all greetings and congratulations to him and his whole team for his untiring efforts made for last 2 years. Now, as we have been given direction to talk about the 4 strategies for Ayush awareness, and here I consider Ayush as all the disciplines of Ayush system. So, just to be precise and to save time, I will utter only 4 sentences. The one is, number 1, quality teaching of Ayush disciplines in colleges. It automatically covers all the sectors, all the aspects. Second, more emphasis should be given to research on thrust areas based on classical text. It also automatically covers all the text of all the disciplines. The third one is practical and clinical exposure to be given to the students. And the fourth one is maximum sharing to be given to the masses regarding the fruitfulness of Ayush achievements like good quality medicines. Whatever we are having, we are exporting or we are manufacturing, these all should be given. Our emphasis is on quality and its standards. This is what my submission from my side, and I would like to spare minutes to each and every person for coming with their thoughts. So again, thanks, and I'm really indebted for the opportunity given by Dr. Pawan Sharma ji. Thank you so much. तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पिते। ये आप लोगों की मेहनत का परिणाम है सर। मैं तो केवल खोल के बैठता हूँ, आप लोग नहीं होते तो कुछ नहीं होता। हरिओम हरिओम नमस्कार। Thank you sir. Now I would like to request Jagdishwar ji, our team member Jagdishwar Dom ji from Telangana. Welcome Dr. Jagdishwar ji. दादाजी नमस्कार। सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। I thought to be at the end of the ideas of presentation, but in between have been given opportunity. That's why I am compelled to speak. Compelled, actually. On 4 strategies. Okay. I'm compelled. First thing is this:
though we are comprising 4 therapies: Ayurveda, Unani, Siddha, and homeopathy. These 4. For others, I do not know. But for Ayurveda, again, I bring to the mass level to become popular to Ayush for at 4 stages. First, the embryonic stage. That means the conceiving stage. If I say that a lady, she wants to get the moment she gets conceived, want to go for Ayurvedic look after, immediately I cannot refer to some DGO nearby because our DGOs are not available. Our Prasuti people are not available within the reach. That's why one should be conscious of getting popularized this Ayush system, especially Ayurveda, to the mass level. Though in olden days, there were ayas where they were simply delivering and doing the service to the pregnant woman at the time of delivery. They were trained, well trained. Actually, they were habituated, and in every village also they used to call that that ayah. She will help to deliver. But now the mass is not like that. The masses are compelled to go for modern medicine and modern medicine hospitals, and what they do magic. We need not discuss. Becomes a subject of discrimination at first level. Okay. Then coming to the second, when the baby is delivered and brought up, what kind of nutrition should be done to, what kind of food should be, and what milk should be given. For example, a little while in our references also, I put forth my submission that the donkey milk also will be served in the infantile stage. Why? There are 2 things. Serving donkey milk like that for a child, giving donkey milk, it gives good voice, and at the same time it prevents further seizures and epilepsy like that. These tips actually ancient people were knowing, but the present generation is not knowing. That in that sense, hello, am I audible? You are Hello. audible, sir, but focus on strategies only. Okay, for the strategy only. And the second thing is this: at childish stage, and when at infantile stage it completes and goes to the school level. At school level itself, at primary section itself, the children should be taught in the line of Ayurvedic principles to practice. Then the primary section, in that way, they try to habituate and cultivate in their routine life the principles of Ayurveda. And then coming to the youth stage, here what we are doing, whichever may be the youth coming to as a patient, we may be, as a discretion of the patient or the citizen, will be choice of Ayurveda. But the thing is this: let the Ayurvedic system be penetrated in the minds of the youth, that they are going to prevent so many lifestyle disorders, so many disabilities which we are cropping up due to the ignorance of the principles of practice of youth age. This can also be taught. And here the help of yoga is much is useful. And coming to the grown up and a stage of old age, we can say prior to that, where the thing of maintenance, it also be for preventive and for curative side. How Ayurvedic system is useful. And again, at the end of the old age, then how we can survive, being cultivated on the basic principles of Ayurveda, yoga, and all these things. We can, that means prolong our life with a convenient way of life. Likely, our subject, though all the academicians have given their opinion, but I am not an academician. That is why I just brought the subject to the mass level to get it popularized and to the immediate use of the populace. With this, I conclude. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much.
So nice of you. Now I would like to request Ved Jayesh Thakkar, Dr. Ved Jayesh Thakkar, young, dynamic, energetic Ayurvedic expert, established his own Jai Ayurveda here. Welcome. Welcome, Jai. Namaste and pranam. Am I audible? Yes, We can clear. hear you clearly. Namaste and pranam to all the dignitaries present, off and on the desk. Coincidentally, it was at 5 p.m. when the webinar started. I was in the train, and at just now I'm arriving at my stoppage. So it have been always lucky to be part of this IRES team. It is doing wonderful to take the message to the public. This congratulatory message should be to Dr. Sharma sir and each and everyone in the team, to every delegates who have been as speakers and everyone. जैसे माला मोतियों से बनती है, आज ये जो माला तैयार हुई है, everybody is involved. And as the 4 strategies, I would not like to take more time. Just 4 strategies in 4 points I would like to mention. First, we are celebrating every day with Ayurveda. Now we should start celebrating every moment with Ayurveda. As Ayurveda is way of living, here I would like to focus the 4 strategies, 4 points as Dharma, Artha, Kama and Moksha. Dharma, here Dharma refers to duty, the right duty. So our duty in our day-to-day lifestyle should include Ayurveda. This is the message we should take to everyone. Every one of us in our dinacharya, in our lifestyle, should adopt the principle of Ayurveda. Artha, again, it's not just the money. Even a money saved is money earned. So if we teach everybody about the vegetables, about growing herbal medicinal plants, that is how we can include the Artha gain. Then the Kama. Kama is the desire, which we can say with regard to beauty or good health. We can teach the common public the interest to take for their beauty, for their good health. And the moksha again is somehow connecting with the higher aim. We can include our science. Here, our science, the second point which I would like to say is Charaka, Sushrut, Vagbhat. These are the 3 pillars. Here, the Charaka reference, I would like to say we need to adopt to ourselves only. As a Charak, we should travel to places, we should take Ayurveda to more and more people. Sushrut, here as the earlier speaker also said, that we should be a good listener as well as we should have a good practice and action we should perform. Vagbhata as a good speaker. And the 4th, I would like to say, we ourselves as an individual have to develop, have to adopt the principle. Our science is a clinical, practical science. Whether we are as a researcher, whether we are a teacher, whatever field, whatever profession we are, everybody should include the practice. Practicing is not exactly with medicine seeing patient, but practicing of Ayurveda principles in our day-to-day daily life. The third important thing I would like to say that the four points which we see, Chikitsak, Ausadi, the attendant and the patient. Here is where we have to take our education. As a Chikitsak, we have to practice. As Ausadi preparation, we have to definitely see the different companies and the manufacturers of our medicines. We have to connect what is the need, what type of medicines we actually need. The proprietary medicines are in the market, but are they in the way of Vata, Pitta, Kapha? Are they very much specific? If not, then how can it be made? Patient's education is very important. And the 4th, which is the nurse attendant. It's good to see nowadays Ayurveda nurse and the Panchakarma therapists and such courses need to come up. And the last point, the last strategy I would like to focus is, in the society, mainly we find 4 types. It's the youth. I would like to be very specific. The children, the male, female adults, and the 4th is geriatric senior citizen. So what are we doing? What planning we can have for them? For the children, we can start at the school level to teach them gardening, about the different medicinal plants. We can teach them the basic principles of Ayurveda. For the females, definitely the Garbha Sanskar, the different medicines and all this are very important. For the males, it is very important to note that the idea to improve their energy vitality, the Ayurveda concept which is marketed as OTC, it's rather to improve the good progenies.
So the right message we can take, and geriatrics definitely, Rasayan and all this we can work upon. So these are the few points I would like to share from my side. And I thanks the whole team for providing me a chance today. And I'm eager to listen to other speakers, and let's implement the strategies for the good of the society. Thank you. Pranam and Namaste. Jai Ayurveda. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Jayesh. Now I would like to request Dr. Manish Pandya ji, being a allopathic practitioner, IVF specialist, having a nursing home in Surendranagar. He is really affectionate with Ayurveda, tried Ayurveda on GCP principles. He is our guide, Dr. Manish Pandya ji. Am I audible to you, sir? Yes. Welcome, welcome. नमस्कार पवन जी, नमस्कार। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ। 400 वेबिनार आपने किए, और मुझे याद है जो आपने शुरुआत के सेमिनार्स चालू किए, उसमें से एक सेमिनार सुरेंद्रनगर में था जो आपने शुरुआत की थी 2013-14 में। तो आई एम प्रिविलेज दैट वो सेमिनार का मैं एक हिस्सा था, और आज आपकी जब यात्रा ये 400 सेंचुरी तक चल रही है, उसमें भी आपने मुझे शामिल किया, तो आपको खूब खूब शुभकामनाएं और प्रणाम। हरिओम के साथ आपको वंदन करता हूं। और जो स्ट्रेटेजी आयुर्वेदिक के लिए आप सब लोग निकाल रहे हैं वो बेस्ट है सबको। अभी तक के सब स्पीकर को मैंने सुना, संस्कृत में भी सुना, इंग्लिश में भी सुना, दोनों लैंग्वेज का प्लस और माइनस है। जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है, समाज बढ़ता जाता है, जैसे हम वेबिनार के ऊपर आ गए, ऐसे ही हमको संस्कृत को लोक भाष्य भाषा बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं समझ सकते, लेकिन संस्कृत के श्लोक सब सुनते हैं। जैसे आप शुरुआत में प्रार्थना करते हैं वो पूरी संस्कृत में है, लेकिन वो सबको संस्कृत मालूम है। तो मेरी ये मंशा है कि आपके आयुर्वेदिक के श्लोक भी ऐसे हो कि लोग जैसे कराग्रवस्ते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तु गोविंदा प्रभाते कर वंदना, ये सब लोग जैसे बोलते हैं, वैसे अपने आयुर्वेदिक के श्लोक लोगों के दिमाग में ऐसे फिट हो जाए तो आयुर्वेदिक का विकास कोई नहीं रोक सकता। और आपका जो आयुष समृद्धि और संप्रति ये जो है, उसमें आपने जो इंडिपेंडेंट रिसर्च एथिकल कमेटी बनाया है, उसमें जो रिसर्च की बात हो रही है, तो लास्ट वेबिनार में भी मैंने कहा था कि बातें मत करो, लिखो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। आपने मेरे इसको पहले पेपर से शुरुआत की थी शतावरक से, और आज मेरे 81 पब्लिकेशन है जो पीछे मेरे गूगल में है। तो मैं सबको ये विनती करता हूँ कि पवन जी यदि मेरे जैसे छोटे इंसान को इंस्पायर कर सकते, इग्नाइट कर सकते, मैं तो ये बोलता हूँ जला सकते, बीड़ी जलाए लो की तरह, कि अंदर के रहे आपके रिसर्चर को जगाओ और आप ये समाज को बताओ कि आप ये रिसर्च कर रहे हो। और जब भी किसी भी जगह पे बात करो, रिसर्च की बात करो, तो आपका नाम जरूर आता है पवन जी। और रिसर्च से हम लोग, हमारी पहचान होती है, इंडिया की पहचान होती है। मैं अभी 53 का हूँ, अभी भी आज मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, मैंने एमए खत्म की। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, जितना भी आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। 2009 से, जैसे पवन जी ने बताया, मैं आईवीएफ कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एब्रोड से भी पेशेंट आ रहे हैं। कल ही एक पेशेंट इधर से प्रेग्नेंट होकर लंदन गई, वहां पे ट्विन प्रेगनेंसी है, कल उसके फिटल हार्ट के 2 वीडियोस आ गए कि मेरा फिटल हार्ट पॉजिटिव आ गया। तो आप कहीं पे भी रह के कुछ भी अच्छा काम कर सकते हो। ईश्वर की, धन्वंतरी जी की, पूरे इंडिया को, सुश्रुत जी की पूरे आशीष है अपने साथ, तो अपने ये अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और आप ऐसे 4000 वेबिनार करें, और 4000 वेबिनार में भी मैं आके ऐसे ही प्रवचन दूं, तो आपकी और मेरी आयु वो वेबिनार तक चलती रहे। नमस्कार, हरिओम सर, हरिओम, हरिओम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मनीष जी, बहुत अच्छा। थैंक यू पवन जी, थैंक यू। नमस्कार सर जी, नमस्कार। और धन्यवाद। पवन जी, अभी मेरे घर पे गेस्ट आए हैं, तो मैं जी, जी। अभी विदा लूंगा, जी, क्योंकि अभी मैं 5 बजे से अब तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। जी, मैंने जी। बोला मेरा टर्न है, उसके बाद में मैं आपकी जरूर, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति लेके जाने की नहीं, चेष्टा जरूर, करूंगा, और जरूर। आपसे क्षमा रखूंगा। देखो मेरी हिंदी नहीं, थोड़ी आप थोड़ी आए सुधर गई। यही उपकार है, आप आए यही उपकार। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। बहुत नमस्कार धन्यवाद। सर, थैंक नमस्कार। यू, थैंक यू। Now I would like to request Dr. Alok Sharma ji from Delhi. Dr. Alok ji is also our well-wisher, supporter, and now Secretary of North
So welcome sir, welcome. पवन जी नमस्कार। पहले Welcome. तो आपका मैं किन शब्दों में धन्यवाद करूं कि आज आपने इस 400 में एपिसोड में मुझे भी इंक्लूड करा। आपका आदेश मैं कभी भी टाल नहीं पाता हूं, पर कई बार दुविधा होती है कि सेम टाइम में दूसरी वर्कशॉप होती है अंकित, तो मुझे एक न एक छोड़नी पड़ जाती है, कई बार मुश्किल में पड़ जाता हूँ। आज विषय रणनीति का हैगा। कोरोना पोस्ट कोविड पीरियड के बाद, पोस्ट कोरोना के बाद मैं देखता हूं कि आयुर्वेद की डिमांड समाज में बहुत बढ़ चुकी हैगी। मॉडर्न सिस्टम किसी वजह से ट्रीटमेंट के पर्पज से बहुत फेल हो चुका था और आयुर्वेद के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अवसर मिला हैगा कि हम कैसे इससे अपने को एस्टेब्लिश कर सकें। आयुर्वेद क्या है सभी जानते हैं, कोई बड़ी बात कहने की नहीं है। मैं वो शेयर करूंगा जो प्रैक्टिकली अप्लाइड करता हूँ, क्योंकि बोलना बहुत आसान है पर जो करते हैं वो उसको शेयर करें, शायद सबके लाभ की बात हो। मैं प्रेजेंटली 250 बेडेड एलोपैथिक हॉस्पिटल में, जहाँ सारी स्पेशलिटी सर्जरी, कार्डियक, किडनी ट्रांसप्लांट सभी कुछ होता है, उनके साथ कार्य करता हूँ। एक प्रॉब्लम पड़ती है बहुत बड़ी कि क्या आयुर्वेद उन सबके बीच में काम कर सकता है। तो मैं तो एक बात छोटी सी कहानी शेयर करूंगा। एक टापू पे किसी को भेजा, जूते वाली कंपनी वाले के मालिक ने किसी एमआर को बेचने वाले को कि साहब आप जाके वहाँ जूते बेच करके आइए। तो वो वहाँ गया कि साहब मालूम पड़ा कि वहाँ से लोग सब जूते पहनते नहीं, वहाँ जूते बिकेंगे ही नहीं। तो वो लौट ही आया जो हैगा। एक दूसरा रिप्रेजेंटेटिव भेजा गया, उनने कहा अरे यहाँ तो कोई जूते पहनते नहीं, सबसे जूते तो यहीं बिकेंगे जो हैगा, और हम यहाँ सबसे अच्छा काम कर सकते हैंगे, इनको हम फ्री जूते पहले पहनाएंगे, उसके बाद जूते इतने बिकेंगे कि यहाँ कभी, यहाँ तो मैं फैक्ट्री खोलनी पड़ जाएगी। तो दूसरा वाला जो कारीगर वो मैं हूँ, मैं एलोपैथिक हॉस्पिटल में घुस गया, क्योंकि उनके बीच में हम जाए बिना, उनसे दूर रह करके, उनसे लड़ करके हम कभी नहीं जी सकते जो, क्योंकि आज प्रैक्टिकली मार्केट में पेशेंट जो उनके पास है, स्पेशलिटी पेशेंट उनके पास है, वो हमारे पास नहीं मिलता। हम अपने घर में बोल लेंगे अपने इतने रोगी ठीक करे, हमने ये रोगी ठीक करे, मजा तो जब उनके बीच में, उनके रोगी के बीच में आप घुस के दिखाएं, काम करके दिखाएं। वहाँ बहुत से पेशेंट में रिजेक्शन मिल जाता है। वहाँ हर मॉडर्न मेडिसिन की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, वो मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन लेके पेशेंट आपके पास आ रहेगा। अब आपको आइडिया निकालना है कि इसको व्याधि है, मेडिसिन कॉम्प्लिकेशन है, या इसमें कौन सी चिकित्सा करनी है। तो आपको रोज इनोवेटिव आइडियाज निकालने पड़ जाते हैं, तभी खड़े रह पाते हैं, नहीं तो आउट हो जाए सोसाइटी से। एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए सबसे अच्छा मैं रणनीति क्या करता हूँ, जब भी मेडिकल कैंप लगते हैं तो मेरा आयुर्वेदिक पंचकर्मा यूनिट उसमें जरूर होएगा। तो उसकी वजह से लोगों को मालूम पड़ता है कि यार आयुर्वेदिक पंचकर्मा एलोपैथिक हॉस्पिटल में चल रहा है। ये बड़ा एक सरप्राइज विषय मेरठ के लिए तो जो हैगा कि एलोपैथिक हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक पंचकर्मा क्या कर रहा हैगा, ये तो अलग की विधा थी जो कुछ जो हैगा। तो एक पब्लिक अवेयरनेस अपना मिल जाती है, रणनीति मिल जाती है। एक जैसे मेरा स्वर्ण प्राशन का कुछ में चलता है प्रोग्राम, इसकी जितनी अवेयरनेस जिस मीडियम होती है मैं करता हूँ, और हर मेरे हॉस्पिटल के काउंटर्स पे, लिफ्ट के एंट्री पे पूरा कैलेंडर पूरे साल का पब्लिश कर रखा हैगा। तो जो भी पेशेंट आता है एलोपैथिक वाला, उस ब्रेन का, उसके सामने चीज आती है, अरे आयुर्वेदिक वाले बड़े पब्लिसिटी कर रहे हैं, पंचकर्मा नस्य का कैंप कर, नस्य के डिफरेंट जगह फ्लैक्स साइन लग गए जो हैगा। तो लोगों की क्वेरीज आती रहती हैं जो हैगा। और मैं तो बम्पर ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़ा स्पीकर हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं बोलने से छोड़ता नहीं हूँ। अभी पिछले दिनों एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। यहाँ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने मुझे इनवाइट करा इसी टॉपिक के ऊपर। अब मुझे टॉपिक नहीं दिया गया कि आपको बोलना क्या है, रियली मतलब मेरे को ब्लाइंड वो था, सब आपको आना है और आपको बोलना हैगा। और सारे मॉडर्न मेडिसिन के स्पेशलिस्ट थे, सिवाय आयुर्वेदिक वाला मैं था। तो और उन्होंने कोई टॉपिक नहीं दिया, उन्होंने तो पूरे क्वेश्चनरी बना रखी थी और उस क्वेश्चनरी पे मुझे बोलना था। और जब उस शेयरिंग में मैंने ये देखा कि वो डॉक्टर जो एमडी एमएस प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज वो चरक सुश्रुत पढ़ रहे हैं, उनके बारे में उनकी क्वेरीज उनके दिमाग के अंदर थी, वो मुझसे पूछना चाहते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम उनको मित्र माने, उनके साथ अपने आयुर्वेदिक फिलॉसफी को शेयर करें कि देखिए एक प्रॉब्लम पड़ता है कि एलोपैथिक वाले उस शार्प माइंड से सोचते हैं कि एलोपैथिक में जैसे मेडिसिन होगी आयुर्वेदिक में होगी। हमें क्लियर करना है कि देखिए आयुर्वेदिक फिलॉसफी अलग है, मॉडर्न मेडिसिन क्राइटेरिया अलग हैगा। आप अपना यूज करें, हम अपना यूज कर सकते हैं, पर हम अपना इंटरवेंशन यहाँ पे इतना डाल सकते हैं, इतना पार्ट कर सकते हैं। इस ईमानदारी से हम करें और क्लिनिकली उनको शेयर करें, तो वो दूर नहीं कि आयुर्वेद जो पवन जी का एक इमेजिन है कि आज 400 एपिसोड हो रहा है, ऐसे ही 400वीं शताब्दी मतलब क्या कहते हैं सेंचुरी आयुर्वेद मारेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही बात कही जो यथार्थ है। मैं
अब अपने अग्रिम वक्ता डॉक्टर जो स्वनाम धन्य एक ऑटिज्म के चिकित्सक हैं, इंटीग्रेटेड पैथी में विश्वास रखते हैं, बेसिकली एलोपैथी के एक्सपर्ट हैं। मैं ऐसे एक विद्वान डॉक्टर डी कार्तिकेयन सर को बुलाना चाहता हूं। ही इज फ्रॉम चेन्नई। डॉक्टर डी कार्तिकेयन सर, वेलकम। वेलकम सर। Namaskar, namaskar. नमस्कार सर, स्वागतम। Yeah, it's indeed a very, very great pleasure to be part of this meeting on a milestone achievement of 400 episodes in, as I told, spreading the knowledge internationally and spreading the treasure of India, the traditional medical sciences, to the people around the world. I thank you so much for accepting me as part of your journey. Namaskar. There is a statement by a statesman in Tamil Nadu, Matran Thotathu Malligayum Manakum, meaning the jasmine in the neighbor's garden also will smell like what is in your garden. So that made me realize that the science of traditional medical people is also valid and sometimes much more valuable than what the mainstream medicine or the Western medicine can offer. So when I finished my ENT master's in 1986, I realized there are limitations in the mainstream medicine which I graduated. And I found many valuable tools in the traditional medical system sciences, let it be Ayurveda, Yoga, or Siddha. So I started exploring, and my slogan then was the integrated therapy. So we should not call them alternate systems. We should integrate both systems. They are not competent. They are complementary to each other. So we are fast forwarding our past into the future. I need everyone to listen to this particular statement. We are fast forwarding our past into the future. Our past is being a great stalwarts of traditional Indian medicine, practicing the anatomy, physiology, biochemistry, and genetics in times when even microscope was not available. That is a phenomenal kind of a period where the Nadi Shastra ruled, and then it diagnosed everything which we struggle with our CT scans and MRIs of today. And we are looking or perching ourselves, we are seating ourselves on the shoulders of those giants of yesteryears and trying to look forward, farther into the future. That is what we are trying to do. And it has been a golden opportunity that we have the science available of our forefathers to be used. Here, I'm just going to talk about my own experience of integration for the past 20 years, how it had helped me. See, I feel the denominator of cytokines in a system which create chronic diseases and neurological ailments and others have less tools available in the mainstream medicine, and we have so many tools available in the traditional Indian systems of medicine, with which we can prove to the world that our medical science can deliver, which the mainstream cannot deliver. So it is the proof of the pudding. So when we show the world that this is possible in this science, the appreciation will automatically come. It is like how English grew into a language by adoption in almost many countries, and it is a linked language kind of. The same way, the traditional medical sciences comprising of
the term Ayush can grow leaps and bounds. And I myself is experiencing the tasty fruit of traditional medicine science by treating children with autism, treating the cytokines, treating the neuroglial inflammation through the traditional Indian systems of medicine. The only language of expression can be gene expression, which is doing good to these people in the biological systems. And in this language, people like Dr. Madan Tangavel can help us, where if we prove to this world, we are causing a positive gene expression by these treatment methodologies, there will be no opposition from any system of medicine. That is my, that is a thing that I learned in this path of clinical experience in the past 40 years, 20 years. And that is what I would wish to express to this august audience, that we have to deliver, prove it by positive black and white gene expression studies, that these systems are non-toxic and they don't have toxic metals, they don't have anything which is hidden, which can harm the system. And we can talk against or win over any lobby with positive gene expression studies. So this is my thought, which I wanted to share with you. Thank you so much. Namaskar. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Babulal Barala from Rajasthan, a young dynamic leader of Ayurveda. Welcome, Dr. Babulal Barala. Please unmute yourself. Sir, Karthikeyan sir, I would like to travel you on 1st July, Doctor's Day. Kindly bless us on the event on Doctor's Day. Please, sir. Humble request. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. So now I would like to request Dr. Babulal Barala. Barala जी, आप मुझको सुन रहे हैं? उसके पहले एक क्षमा प्रार्थी हूं, मैं क्षमा मांग लूं। मैं अशोक दुबे जी, अखिलेश भार्गव जी और राकेश निगम जी को मैं भूला इस ब्रोशर में, बहुत लंबा हो गया था, इसलिए क्षमा चाहता हूं। फिर भी देखिए, दिल से दिल को राह होती है, वो लोग हैं मेरे सामने, मैं उनसे भी इस मंच को आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। डॉक्टर बाबूलाल बराला। नमस्कार सर। नमस्कार अखिलेश जी, नमस्कार। आप आए, बड़ी ये तो हमारा अपना प्रोग्राम है सर, इसके लिए तो हमें फोटो की आवश्यकता ही नहीं है। जय हो, जय हो, जय हो। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। बराला जी शायद सुन नहीं रहे हैं। मैं अपने बड़े भाई वैद्य तपन जी से आग्रह करता हूं। वैद्य तपन कुमार जी अहमदाबाद में माँ अमृतामयी आश्रम के। हेलो, प्रणाम 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 सर, प्रणाम सर, प्रणाम। जय हो, जय हो। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत अभिनंदन। 400 दिन तक कॉन्स्टेंटली सबके साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। अभी फिलहाल मुझे 4 चीजें बतानी है, क्योंकि आई एम गेटिंग लेट। एक चीज, वो संहिता बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए और संहिताओं का सम्मान होना चाहिए, ये आयुष उसको प्रमोट कर सकता है। दूसरा, सम ट्रेडिशनल फैमिलीज है आयुर्वेद में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो आयुर्वेद को प्रैक्टिकली चला रहे हैं, उन सभी को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनका एक एसोसिएशन बनाना चाहिए। और वो लोग आयुर्वेद को अभी भी 400 साल से चला रहे हैं। चरक का आयुर्वेद तो 2000 साल पुराना है, लेकिन ये जो ट्रेडिशनल वैद्य हैं, या तो जैसे मैं चौथी पीढ़ी का हूँ, उनके पास आयुर्वेद का प्रैक्टिकल 2022 में कैसे सस्टेन रह सकते हैं, वो नॉलेज होता है। उसको आइडेंटिफाई करना, उनको इकट्ठा करना, उनकी डेटा को
ग्रहण करना और उसका ऑथेंटिकेशन करना, उनका एसोसिएशन बनाना, वो आयुष के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसी लुप्त होने वाली आयुर्वेद की निदान पद्धतियां हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसको उजागर करने के लिए एक अलग कमीशन या कमिटी या कोई ऑब्जर्वेटरी बने, जिसके कारण नाड़ी है, मलमूत्र है, गंध परीक्षा है, कपड़े से परीक्षा करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें, वो सभी को हम पर ध्यान रख सकते हैं, उस पर कुछ और ज्यादा काम कर सकते हैं। और लास्ट चौथा, वो जो इम्पोर्टेंट है, जो तुमने मेरे मुंह की छूनी छीन ली, वो एशियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एशियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब बने तब बने, सार्क से तो हम शुरू कर ही सकते, वो पड़ोसी अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी हैं उनको इकट्ठा करके हमारी जो सार्क कंट्रीज की ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसका एक एसोसिएशन बने, उसका एक बात बने, वो भारत उसका लीड करे और उसमें मोदी साहब चेयरमैन बने, तो उसके ऊपर से फिर एशिया और एशिया के बाद हम अपना एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसका बीजारोपण आईवीएफ अभी हो जाना चाहिए, पवन और नाड़ी गुरु और सब लोगों के बूढ़े होने के पहले, समझे ना, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से चार चीजें, एक संहिता बेस्ड एजुकेशन, ट्रेडिशनल फैमिलीज और ट्रेडिशनल नॉलेज का गैदरिंग, तीसरा जो एक्सटिंक्ट होने वाली निदान और चिकित्सा की पद्धतियां हैं उसका डेटाबेस इकट्ठा करना और उससे आयुर्वेद की ओरिजिनल टेक्स्ट को ग्रहण करना, और एशियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या सार्क हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये चार चीजें मैं आप सब लोगों को आज आयुष के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे को सुना, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन वो एशियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा से, मैं जितनी ऑडियंस है सभी से आह्वान करता हूं कि जो एक्सपर्ट आपके परिचय में एशियन कंट्रीज में है, कृपा कर हमें सूचित करें। हम उन सभी को अपने एक प्लेटफॉर्म पे बुलाएं, पहले विद्वानों की राय लें, फिर उसमें राजनयिकों को इन्वॉल्व करें, उससे हम आगे बढ़े। हर फरवरी 2023 में काठमांडू में ऐसा एक कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, उसमें पूरे एशिया के सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं। वहां हमको कंसंट्रेट करना चाहिए अगर हम सार्क और एशिया की ओर जाना चाहते हैं। तो दिस इज एन इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छा सर। फ्रेंड फ्रॉम बॉम्बे एंड महेश संघवी आयुर कौशल्य करके conference has been held in February 2023 at Tarachand. So we can concentrate on that. That is my contribution from today. जिस पर गौर कर सकते हैं। धन्यवाद आप सब लोगों ने मेरे को सुना। Thank you sir. Thank you very much. So nice of you. Now I would like to request Dr. Vishnupriya Mohanty ji, firebrand speaker, excellent speaker. Welcome, madam. Professor and head of the department, Shiroda, Gomantak Ayurvedic College, Shiroda. Welcome. Dr. Vishnupriya ji. Welcome. My pranam to all the legendary personalities present here today for this 400 international webinar, and it's a great pleasure to be a part of this webinar. And we have to present 4 points
as a strategy. So here the first point of the strategy is about the international acceptance. We the Ayurveda peoples are more powerful. So we did many jobs. We can contribute many things. It's like a Vishwarup Darshans of Lord Krishna. So Ayurveda has a multifold way to enter into the society and to preserve the health. But still, no sense in the science is that we are not ready to receive that it is not the one system can work. It is the multiple systems as medical pluralism can work for it. And therefore, we should not just assess our standard on the basis of the criteria of patency or such so-called research criteria of RCT protocols. Because RCT protocol cannot give the all answers questioned by the society. Say, I'm suggesting that put the oil in the nostrils as a pratima sanasya. It will work like a sukra dhatu, as one speaker has told, that is nasahi sirasa dwara. Of course, it is a sirasa dwara because SE2 inhibitor stimulating the SE1 inhibitors, and it is protecting the all vital organs. We all have seen the scenario in the second wave of COVID, how the people are dying just because of the vital organ failures. So this is the nasya can protect it. So we should not just afraid that the so-called things like neem, haldi, they are traditionally useful and they are not patent. Therefore, India is behind to all other progressive countries in the field of medical science. So respecting the Ayurveda, it's good and fine, but we have to also progress for the next level, that when we are calculating the medical emergency in terms of 2%, so they are the allopath system to be respectable and to be welcomed for such variety of emergency management. So here the Ayurveda can work in a better percentage and a better way. And all, of course, not only the organizations, not only the government, in the personal levels or the multiple way Ayurveda get or receive those respects. So now the matter is that how we can be, as a Madan Thangavali sir has told, that how we can be just acceptable and digestible to so-called the peoples who are afraid of the language. So it is needed to present the Ayurveda into a wide range of way of perceptions, from a teleology to the philosophy. So philosophies are there, but it never stand without a scientific background. So the terms to be explored in terms of the scientific way, that how it can be easily acceptable. You are speaking that Brahma Murti Avtish. Now why? If we'll speak in terms of philosophy, that is just Saraswati Yama. If you are speaking into a a biologist, so we have to speak that the changes in the respiration and the plants has already left the process of respiration, now started the photosynthesis process. Or we know Ayurvedic people speak the Apana Kala. So Apana Kala is meant for Tyaga, because so many diseases are possible just because of that that is the Pratiloma Bhatha. So if we are really focused to take the Ayurveda to the international acceptance when the 5th industrial review Vigyanam Ausodhinam. So how we can propagate the science of Ayurveda, because propagating the science is such the best medicines. That's what Charak Samhita has teaches us. So that knowledge of Ayurveda, what it means. So the domain itself is to be identified in a proper way. So domain we have cannot just accept that the hospital can be a domain for health. So COVID-19 itself teaches us that the kitchen itself, the human being itself, it is in the हम छोटे बचपन में गाना गाते थे, मुट्ठी में क्या है. So ये हर इंसान के मुट्ठी में health है. ये हमको COVID-19 सिखा दिया. So domain to be replaced from the hospital to the individual persons. हर एक व्यक्ति उस स्वास्थ्य का उत्तरदायित्व लेना होगा. So organization has done many things. Government has taken the yoga to the international platforms. So yoga तो international बन गया, but fourth wave के लिए फिर क्यों डर रही हो? So we should not fear about the fourth wave. You are exactly working for the Ayurveda. If you are exactly working for the Vigyanam Ausodhinam, so डर कहाँ गया? Because the peoples are actually not serious about the Ayurveda. So how we can connect those peoples, and some lollipops should be from the system of medicines to the society. That's why any extra time we are having, instead of gossiping, just meditate. Why it is needed? Because the global consciousness, the global brain awakeness, it is necessary to be interconnected through different variety of Manamaya Kosha or Vijnanamaya Kosha. So how one person's
can help to the other person's life, can be contributed to the other persons. And that's the chain of, we make different variety of franchises. So those chain can help us to propagate the science of Ayurveda, even sometimes beyond to the language. Because that software is needed to bring a changes to the hardware, the physical body. So many diseases in the physical body need not the medicines. So non-pharmaceutical interventions can work to correct those consciousness, to correct those psychology and emotions. Because emotional evolutions, philosophical evolutions is the life. So जिंदगी क्या है? जो शरीर और मन के अंदर खो गया है, यही जिंदगी है. So उस consciousness को कैसे बढ़ा कर सकते हैं? Any problem in human life अगर ठीक करना है, are you really serious? अगर उसको ठीक करना है तो आपका कॉन्शियस लेवल को बढ़ा कर दीजिए, तो वो प्रॉब्लम आपको नेग्लिजिबल दिखाई देगा. So आपके पास साधन नहीं है. As it was praised for Pawan sir, आप हमारे पास साधन नहीं कि साधना है. So it is just changing the consciousness, nothing else. Therefore, that health definition is need to rectify it. So next very important issue in medical systems today, any medical systems, health क्या है? Physical, mental, spiritual और social well-beings. कोई भी चीज फिक्स क्राइटेरिया के अंदर नहीं रह सकता है. सूरज बदल रहा है, चांद बदल रहा है, हवा बदल रहा है, और आप कह रहे हैं आपका blood sugar इतना ही होना चाहिए. You are teaching me the height should be like so, the height weight ratio should be like so. You are comparing the whole research systems into the RCT protocols. How it can be possible? Charak Samhita teaches us katham sarire dhatunam vaisamyam na bhavetiti. So vaisamyata is the sign of health. Please listen to the sentence. Vaisamyata is the sign of health. Jitna changes hoga, that those changes in the nonlinear systems is the sign of health. So मैं वैषम्यता को कितना फेस कर सकता हूँ? Those resilience is the sign of health. So that way we cannot propagate the wrong messages of medical systems to the society, and therefore the society fear to reach to the doctor, to reach to the hospitals. And those Maya. So what is Maya? The Maya is the diversity. So microbiome में डाइवर्सिटी होना चाहिए. हमें जैसे जानवर एक्सटिंक्ट हो रहा है, there are a lot of microbes becomes extinct. So more than 1,000 numbers of species of microbes are in the intestines. वो intestines का microbes में diversity होना चाहिए. Therefore the new theories are coming related to the stool donor, जो हमारे शास्त्र में लिखा गया था about the purisa used as a medicines. So stool donor, the motions, the stool itself to be centrifuges and to be each again the sign of the health itself. So those Maya to be propagated, because we cannot just stick into a particular parameters. So I took this definitions from the Samhita. It says that krasima ya to staulya ya to karsyata. In an emergency, strict करके नहीं रखा जा सकता है. We cannot just put into a particular, in a fixed criteria. So if we are serious about the Azadi Swatantra Mahotsava, so as it was a statement of Swami Vivekananda. So the statement of Azadi Swatantra Mahotsava should be, तुम मुझे भूख दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. That is आजादी from the diseases. So if we are serious to back the health to the systems, to the society, then those variety of statement to be bring into the society as a nationalistic movement. So a big changes can be only when there will be a Jana Andolan. So a need of Jana Andolans, that every citizens to be get up and to take those principles of Ayurveda. So Ayurveda should be by the people, for the people, and of the people. That standard of implementation is needed to bring. And so a simple example I have kept here, Langana. So Langana alpa bhojanam, Langanam upavasam. Those are not the total message of Ayurveda. So total message of Langhana itself, it is maybe sometimes we have to give the soup, sometimes we have to give the kara, sometimes speaking less, that could be a Langhana again. So just stopping the negative thoughts, that could be the message of Ayurveda for approaching Langhana as a treatment. So those all way the Vishwara Darshan of Ayurveda need to propagate to the society. And as it is a quotations in our text, Anirveda Varta Lakshana. So Stephen Hawking, the disease what he has suffered, 40 वर्ष तक उसी disease में वो जिंदा रहा. But system of medicines teaches us, उसमें 2 वर्ष तक भी नहीं टिकेगा इंसान. और वो कैसे टिका?
because they have never utilized such definition of health. Therefore, this is a very biggest notions in the system of medicines, that we never just listens to those messages written in our classical text. So by listening this Mrityunjay mantra urvarakam eva bandhana mrityorvakshayitam, we think that Ayurveda can give a it's a shashwata life. It's not a shashwata life. Ayu itself teaches us Ayu iti gata dhatu. So it is every time it is just facing towards the death. So instead of asking, how you are, what is the age, how it is going on, we should ask one to another, how old are you? It is more better because you will conscious. As maa ke god mein so jata hai, that should be the mrityu. So the dignity of death has decreases. The mrityu ka jo ek samman hai, wo hona chahiye, because we are sitting together just to give a cost to that death. कोई कुछ भी दे सकता है, पैसा दे सकता है, गाड़ी दे सकता है, आप पैसा डाल के कुछ भी करवा सकता है, लेकिन किसी को सिक बेड में सुला सकते हैं क्या? नहीं. So that every and each and every person should get up कि ये उर्वारुक जैसे एक फल वो अपने आप गिर जाता है. So हमारा मृत्यु भी अपने आप होना चाहिए, with less intervention of medicines and less interventions of therapeutical procedures. So if at all we are serious, our strategies should be planned all sorts of health policy just to give a person who is living long life with a least variety of medicines and therapeutical procedures up to a long life. 70 years का उस आदमी को पॉलिसी का सारे हेल्प दिया जाए, क्योंकि उसने कम से कम मेडिकल इंटरवेंशन में जिया. So हमारा पूरा स्ट्रेटेजी को ऐसा चेंज करना चाहिए. It is not to get providing the policy or the benefits to the peoples who are suffering disease. So प्रतिष्ठा आजादी का होना चाहिए. प्रतिष्ठा किसी भी प्रकार का the chair, the position, the money, उसका प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए. अगर KFC इतना बड़ा ब्रांड बना सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट हर कोने में पहुंच सकता है, तो चरक का भोजनालय क्यों नहीं पहुंच सकता है? चरक का काढ़ा क्यों नहीं पहुंच सकता है? So क्यों नहीं हम काम कर सकते हैं इसके लिए? So it is more better to concentrate all the system, all the power, all the peoples, all the expert personality in the system of medicines, in the system of Ayurveda, to show the Vishwarup Darshan of Ayurveda. इसको दिखाना पड़ता है, because without KFC इतना चैनल बना दिया है, तो सिर्फ हमें KFC के साथ एक माऊ करना है. This much is needed. उतना कर दिया तो वो हमारा सामान जाके पहुंचता है. तो हर स्कूल, हर ऑर्गेनाइजेशन के सामने 3 बजे वो ठेला जाके पहुंच जाना चाहिए. उस ठेला में वो आयुर्वेदिक चपाती निकलना चाहिए, आयुर्वेदिक यबागु मिलना चाहिए. So हमें वो रिसोर्सेस जनरेट करके देना होगा. कोई किसी को तो उसमें we have to take the steps. If we are really serious about the next generations, so we need to make the pre-marital counselings, pre-conceptual counselings, bring the Atulya Gotriya concepts to the system of, to the society. Take all those concepts from the hospitals to the public domains. Because we don't know what are the things, directly cannot be perceived. हम नहीं सोच सकते. So if we like to bring the effects of Satya Yuga very earlier, और उस लेडीज को सिखाना होगा कि अच्छे आत्माओं को कैसे बुलाया जाए. So अच्छे आत्माओं को बुलाया तो हो सकता है उस sufferings can be minimized. Therefore, वो दिव्यम बिना दर्शनम नास्ति. Without learning the concept of Atma, without learning the concept of Mana, without learning the consciousness, without upgrading the consciousness, we cannot see what is behind. So pratyaksham alpam analpam apratyaksam. So we can design the Tinder dating like concepts from the Ayurveda. So Ayurveda में भी ऐसा ही होना चाहिए, जैसे प्रकृति परीक्षण और the स्वास्थ्य concepts etc. can be put there. And the very next important issue is that how we can generate the resources. आज medicinal plant नहीं है, ये नहीं वो दे दो, वो नहीं वो दे दो. So how much extent we can dilute our systems, we can dilute our medicines, and we cannot predict those all actions from the original medicines. So the many resources are there, the mineral resources are there. Each and every department like forest, like marine, each department Ayurveda graduates should work. So when an Ayurveda graduate should work in forest is not meant for Jew only. All those animal products can be generated from the forest department.
So just sit with the secretary, just sit with the ministry, and interministerial approach can be made, and there could be some fruitful decisions. The sensitive point can be generated, and we can resources our medicines in a better way. Rather, उसी medicines में वही fortified करके. Time today. Time is 5 minutes for each speaker. Yes. Okay. Just this is the third one, and according to it. So there can be a Namami Gange project. So what is the Namami Gange project? We many times thinks the disease in the brain. So it is not actually brain. The disease started from the intestines. So the microbes are there in the intestines, and in the intestines, the messages should go to the other microbes, like the skin microbes, like the microbes in the the liver and the lungs, etc. So those microbes can be corrected if we'll follow the food habits, if we'll follow the lifestyles and the sleeping habits itself. So सोना जरूरी है ताकि वो कफ बढ़ेगा, वो कफ बढ़ा तो वो microbes assimilation अच्छा होगा. So अच्छा खाना जितना जरूरी है, अच्छा assimilation होना उतना ही जरूरी है, and those microbes can pass that message to the brain itself. So therefore, there should be a protocols for Ayurvedic X-ray, and that to be from the checking of the photograph or images of the number 2. So ये कोई हलवा वगैरह नहीं है, ये number 2 है. So we have to check that what is the exactly the qualities and how we can think about their responses to the many such variety of neurohormones, and we can protect such very grievous diseases. जो बड़ा नाम लेके ऐसा हमें disease को बताते हैं, Parkinson's and all. So and the last and final strategy is how we can make the local things into vocal. उस ladies को तभी फायदा मिलेगा under the scheme of government if she will deliver the baby by normal delivery or without any. Yeah, of course there are 5% ladies who should go under cesarean sections, because it will correct the society in many ways. The breast milk itself is the founding of all immunity. So these are the points to share. And final and foremost, at the end, I like to share the last or very basic strategy that here we are actually. So how we can bring all those things into a best applications, and unless and until we will not understand who am I will definitely make everything permanent to my life. So this Isavasya Midam Sarvams, this whole things has kept made for me as a ready-made. Yesterday it was for somebody else, and I am today as a custodian of all those things. And tomorrow there will be another person who will come to handle all that. So if these are also the message of Ayurveda to put into the society. And next, अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है, so any organizations, any institutions should have a mock test of death at least once in a month. That is another or final most strategy here to be adopted and compulsory from the system of Ayurveda. So thank you to all of you, and really thanks for giving me the opportunity to share in front of all the big people of Ayurveda. It's really my regards to all of you. Thank you, madam. Thank you very much. I am sorry that I have interrupted, but unfortunately or fortunately, why should I say unfortunately? Fortunately, we have today approximately 60 speakers. So really it will be a grand event due to your well wishes. Thank you as always. Thank you very much. Nice expressions. So before calling Parole Madam, I would like to request Professor Brijesh Mishra. He has to go to other meeting. So Dr. Brijesh Mishra is Vice Principal of Sri Ayurvedic College, Nagpur. So welcome, Professor Brijesh Mishra ji. Welcome. Ram. Om Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Strategies of Ayurveda, ये 400वां सेमिनार बहुत ही सुखद समय है जो आदरणीय पवन कुमार शर्मा जी और उनकी श्रद्धेय टीम के द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
और इस प्रकार के आयोजन के लिए देश के और पूरे विश्व से जो जाने माने प्रोफेसर्स वैद्यगण यहाँ पे उपस्थित हैं, उन सबको नमन करते हुए मैं स्ट्रेटजीज के बारे में कहना चाहूंगा कि आज आवश्यकता है आयुर्वेद के पंचकर्म को बढ़ावा देना, क्योंकि जब तक आयुर्वेद के पंचकर्म स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, वस्ति इसका उपयोग नहीं किया जाएगा, तब तक वह शमन की चिकित्सा करना भी पूर्णपण जो है हेतु से संभव नहीं होता है। परिणाम यह है कि जैसे बताया है कि जिस प्रकार से आपके जो मिरर बताया गया, मिरर के अंदर जब आप यदि डस्ट रहेगा और आप अपना चेहरा देखते हो तो चेहरा आपका ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से उसके डस्ट को स्वच्छ करने के लिए, क्लीन करने के लिए आपको कपड़े की आवश्यकता होती है। और सेम जब हमारे शरीर में, जो कि आचार्य चरक का मेन बताया गया मोटो है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए वमन, विरेचन, वस्ति प्रक्रिया, स्नेहन, स्वेदन यह प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। आचार्य चरक ने कहा है कि एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्नि अभिवर्धते है, व्याधयश्च उपशाम्यन्ति, प्रकृतिश्च अनुवर्तते, इंद्रियाण मनोबुद्धि ही वर्णश्चास्य प्रसिदति, बलम पुष्टिः पत्यम च वृषताम चास्य जायते, जरा कुक्षिण लभते, चिरम जीवत्य अनामयः, तस्मात् संशोधनम काले युक्त युक्तम पेविंदरः। इसलिए जो है संशोधन का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेद शास्त्र के अंदर बताया गया है, क्योंकि कायाग्नि अभिवर्धते, जब तक आपके शरीर की जठराग्नि वह तीव्र नहीं होगी, मंद अवस्था में रहेगी, आप किसी भी प्रकार के औषधि का सेवन क्यों ना करें, चाहे वो मात्रावत हो चाहे वो अन्य मात्रा के अंतर्गत भी हो, वह उतनी कार्य करने को सक्षम नहीं होती है। क्योंकि आगे भी उन्होंने कहा कि मात्रा अप्यवर्तम पथ्यम जन्नम न जीरयति, चिंता शोक भय क्रोध दुख शय्या प्रजागरहि। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से जो है पथ्य आहार भी आप लेते हैं, मात्रावत आहार भी आप लेते हैं, तो भी वह जड़ को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि चिंता शोक भय क्रोध दुख ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, और शय्या और प्रजागरण जो फिर विहार युक्त फैक्टर्स हैं, उसके वजह से भी आपको मात्रावत औषधि का सेवन किया जाए तो भी कार्य नहीं करता है। इसलिए आज के वैद्य समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि वैद्य गण यह औषधि को ध्यान में रखते हुए, रोगी की अवस्था को ध्यान में रखते हुए और रोगी की भी अवस्था को ध्यान में रखते हुए औषधि का विचार करें, और औषधि का विचार करने के पहले वह स्नेहन कर्म कराएं, स्वेदन कर्म कराएं, वमन और विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण जैसे उपायों का उपयोग करें, जिसके द्वारा यह शरीर शुद्ध हो जाए। तो जब शुद्ध हो जाएगा, परिणाम होगा कि रोग की क्षमता जो है वह काम करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे समय में जब आप औषधि का उपयोग करते हैं तो वह औषधि मात्रा के अनुसार, काल के अनुसार, वय के अनुसार, सत्व के अनुसार, सात्म्य के अनुसार, सार के अनुसार, अन्य विधियों के द्वारा, जैसे कहा कि पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य, इनको ध्यान में रखते हुए औषधियों का प्रयोग करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। कुछ ऐसी औषधियां भी होती हैं जो कि सत्या फलदायी होती हैं। स्वर्ण भस्म का उपयोग, हीरक भस्म का उपयोग, माणिक्य का उपयोग, बंग भस्म, अभ्रक भस्म, ऐसी जो औषधियां शोधन करने के उपरांत उनका अल्प मात्रो अपयोगित्वाद आरुचिर विसंगतः क्षिप्रम आरोग्यदायित्वाद ऐसा बताया गया। इसका मतलब क्षिप्रम आरोग्य, वह शीघ्र ही आरोग्य को प्रदान करते हैं। तो आज के आयुर्वेद का जो प्रबंधन है वह औषधि को ध्यान में रखते हुए, पंचकर्मा को ध्यान में रखते हुए हमारे वैद्यों ने उनका समुचित रूप से प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो भी रोगी है वह शीघ्र ही आरोग्य को लाभ प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो औषधि जिस प्रांत में उत्पन्न हुई है उस औषधि के द्वारा तथा जिस प्रांत में रोगी उत्पन्न हुआ है उस रोगी को ध्यान में रखते हुए उस औषधि का उपयोग यदि उस प्रांत के रोगी के साथ किया जाए तो ये अत्यंत गुणकारी होगा। जैसे महाराष्ट्र की मिट्टी काली होती है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी दोमट होती है, कहीं की मिट्टी बलुई होती है, तो उस बलुई, काली या दोमट मिट्टियों के अंतर्गत जो औषधियां उत्पन्न होती हैं, इन औषधियों का रस, गुण, वीर्य, विपाक ये सब भी भिन्न भिन्न होता है, मात्रावत रूप से भिन्न भिन्न होता है। तो इनको भी ध्यान में रखा जाए तो वैद्य समाज आज के अपने औषधियों का जो भी उपयोग करेगा इन
व्यक्तियों के अंदर, इन रोगियों के अंदर वह अवश्य ही लाभ प्रदान करेगा। मैं इतना कहते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूं और प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने 400वां यह सेमिनार का आयोजन बहुत ही उत्तम ढंग से किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बड़े इंस्पायरिंग शब्दों में आपने आज की परिस्थिति का भी बयान किया और साथ में सॉल्यूशंस भी सुझाए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बिल्कुल, आप सरस्वती पुत्र हैं, मैं आपकी प्रशंसा में कितना कहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं पुराने वक्ता अपने बाबूलाल बराला जी, क्या मैं आप तक पहुंच रहा हूं? बाबूलाल बराला जी जयपुर से। भाई आज शिवादित्य जी ठाकुर नहीं है, मैं उनकी जगह पर, शिवादित्य जी ठाकुर की जगह पर आदरणीय अशोक कुमार दुबे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने आशीर्वचन हमें दें। डॉक्टर अशोक कुमार दुबे जी प्रेसिडेंट हैं विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार के। स्वागतम। सभी लोगों को जो मेरा प्रणाम। आयुर्वेद ज्ञान की गंगा को तो 2 साल 2 महीना 4 दिन पहले से ही जो है हमारे पवन शर्मा जी ने गंगोत्री से बहा दी है और अभी वो रास्ते में है और 400वां जो वेबिनार चल रहा है, यह बड़े हर्ष का विषय है और इसमें इतने लोग पार्टिसिपेंट हैं, इतने हम सभी लोग उसके साक्षी हैं। तो हमारा पवन शर्मा जी से अनुरोध है कि आज के इवेंट्स में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, यह बहुत स्वर्णिम पल है और इसके लिए सभी लोगों को जो है एक प्रमाण पत्र तो इशू करना बनता ही है। तो पवन शर्मा जी से अनुरोध है कि जितने भी साक्षी हैं उनको एक प्रमाण पत्र तो दिए जाएं। अब रहा आयुर्वेद अवेयरनेस की बात, जो है अभी सभी वक्ताओं के द्वारा कहा गया है, तो मेरा तो सबसे बड़ा अनुरोध तो पहले भारत सरकार से है। भारत सरकार के में हमारा जो सबसे बड़ा एक कार्यक्रम जो चल रहा है अभी स्वर्ण प्राशन का पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसको भारत सरकार घोषित करे। यह बहुत ही हर्ष का विषय होगा कि इस पर जो है भारत सरकार संज्ञान में ले। दूसरी बात कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो एक राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित करे, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय चिकित्सा घोषित नहीं किया जाएगा और जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी के मुखार बिंदु से अगर आयुर्वेद के जो लोग आयुर्वेद की बुराई करते हैं, वो कहते हैं कि टॉक्सिसिटी बढ़ाता है, उसमें जो है वो उसमें आर्सेनिक है, लेड है, सारी चीजें हैं जो विषाक्त हैं और आयुर्वेद दवा जो है भी जो है अब सभी लोगों को जो है कुप्रभावित करता है। ऐसा जो है लोगों का जो विचार है वेस्टर्न लोगों का, उस पर सबकी मुंह पे एक ऐसा टेप लगावें कि जो है यह काम जो हमारे मोदी जी ही कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी जब तक ये बोलेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने को है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि ऐसा एक सेमिनार बनाया जाए, ऐसा एक वर्कशॉप किया जाए जिसमें हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री महोदय शरीक हो और इस तरह के वक्तव्य को वो कहें। तीसरी चीज ये है कि आयुर्वेद अवेयरनेस के लिए जो है रेल मंत्रालय के द्वारा जो है एक धन्वंतरी एक्सप्रेस जो है के नाम से किया जाए, ताकि सभी लोग ये जान सके कि भगवान धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के प्रवर्तक रहे हैं और आयुर्वेद का इससे प्रचार होगा और सभी लोग जान सकेंगे कि हाँ, यह जो है आयुर्वेद का प्रचार प्रसार में
ये बहुत योगदान देगा। तो भारत सरकार अपने अपने जैसे डाक टिकट जारी कर रहे हैं, तो धन्वंतरी के नाम पर डाक टिकट जारी करे, या भारत सरकार का जो भी प्रोग्राम्स है, जो एक सिटी है, मॉडर्न सिटी बनाने की जो है, उसमें जो है आयुर्वेद के जितने भी जो हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं, इन सबों का जो है एक स्टैचू जो है हर शहरों में जो मॉडर्न सिटी बनाए जा रहे हैं, उसमें जो है उसका उसको करें, उस चौराहे को बनावें, उसकी मूर्तियां स्थापित करें, और उससे जन जागृति होगी और आयुर्वेद का अवेयरनेस बढ़ेगा। इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट को भी जो प्रोग्राम है, मील डे प्रोग्राम वगैरह जो है, वो सारी चीजें जो हैं वो आयुर्वेद का मील डे प्रोग्राम में आयुर्वेद का उसमें करें, और साथ साथ जो है हम सभी लोगों के बीच में जो आयुर्वेद के जो लोग हैं, उसमें आम जन के बीच में यह धारणा बनावें कि आयुर्वेद जो शास्त्रोक्त जो बोलता है, कहता है कि जो है जो आहार आप लेते हैं वो विरुद्ध आहार न हो, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जो भी आजकल जो लोग खा रहे हैं, खान पान कर रहे हैं, या कहीं भी पार्टी में जा रहे हैं, तो खाने के लिए क्या करें, पहले जो है आप ये स्टार्टर में तो आपने तीखा चीज, कड़वा चीज ये सब यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में जो है मधु स्वीट्स वगैरह देते हैं। तो ऐसा करने से क्या है कि आयुर्वेद के विरुद्ध है, वो सारी चीजों का ज्ञान, इस तरह की बहुत से ज्ञान है जो आम जनता तक पहुंचाए जाए, और यह सब कार्य जो है हमारे चिकित्सक, हमारे छात्र, हमारे आयुर्वेद के जो प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, वो सभी लोग कर सकते हैं। और हमें पूरी आशा है कि जो है इस वेबिनार को और आगे बढ़ावें, सतत अनवरत करें। हमारे पवन शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस वेबिनार को बहुत सफलता पूर्वक जो है 400 तक तो ले आए और आगे भी ले जाएं, ये हमारा तो मेरी शुभकामना है। और साथ में जो है जो एक पवन जी का एक प्रपोजल है, जो एशिया हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एशियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह मैं इसके लिए मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए, उसका हेडक्वार्टर जो है इंडिया हो, सबसे बेस्ट, क्योंकि इंडिया की ही चीज है, भारत की चीज है आयुर्वेद, तो इसका जो हेडक्वार्टर ऑब्वियसली जो है वो भारत में रहे, और इसके लिए जो है हम इस प्रोग्राम को हम समर्थन देते हैं। इस तरह जो है हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने जो अभी स्वर्ण प्राशन के विषय में कहा, आलोक जी का मेरे पे तुरंत फोन आया, तो आलोक जी के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी चूंकि अभी संसद में पहुंचे हैं और वहां पर हम लोग पहुंचा सकते हैं अपनी बात कि स्वर्ण प्राशन को राष्ट्रीय कार्यक्रम घोषित किया जाए, इसीलिए मैं उपस्थित सभी विद्वानों का आह्वान करता हूं कि यदि आप लोगों पे स्वर्ण प्राशन से जुड़ी हुई कोई भी रिसर्च सामग्री हो, कृपया मुझे व्हाट्सएप करें, मैं संकलित करके आलोक शर्मा जी को भेजूंगा, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के थ्रू और जो भी प्रयत्न कर सकते हैं हम लोग, उनके थ्रू हम लोग आगे बढ़ने की चेष्टा करें। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। एक रिक्वेस्ट और है मेरी हाँ। रिक्वेस्ट है, आप जब चाहें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को अपने मंच पे बुला सकते हैं। मेरा वायदा कि वो उसी समय आएंगे। स्वागतम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आलोक जी के विचार का समर्थन करते हैं, और ये ज्ञातव्य ही है कि डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी हमारे ऋषिकुल के अग्रज रहे हैं, हमारे ऋषिकुल हरिद्वार के स्नातक हैं, और कई बार उत्तर प्रदेश मंत्री रहे, और हर आयुर्वेदिक कॉलेज में स्वर्ण प्राशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चल रहा है, तो हर कॉलेज में डाटा है। डॉक्टर कीर्ति वर्मा के पास हमें तो एक उससे डाटा तो कलेक्ट होके डॉक्टर आलोक जी के पास पहुंच जाएंगे, और वो उसके थ्रू आपको मिल जाएंगे। जी 17 तारीख को इंटरनेशनल जस्टिस डे के दिन एशियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के नेतृत्व में ही करें तो ज्यादा अच्छा रहे। बिल्कुल हो जाएगा, बेफिक्र रहिएगा, मेरा वायदा है उनकी तरफ से। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं अब अपने अग्रिम वक्ता वैद्य पारुल जोशी जी, प्रिंसिपल बाला हनुमान आयुर्वेद कॉलेज, वेलकम वेलकम मैडम, वैद्य पारुल जोशी। सभी को मेरे सादर नमन। नमन नमन प्रणाम। रागादि रोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसुतान शेषान औत्सुक्य मोहाद अतिरान्यधान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै। आगे जो भी वक्ता बोल चुके इतना बढ़िया बोले हैं कि अभी कुछ बोलने को बाकी नहीं रहा, लेकिन क्योंकि मैं एकेडमिक्स से आती हूँ मुझे कुछ लगा कि इतना तो बोलना ही चाहिए। जिस तरह हम प्री कोविड और पोस्ट कोविड बताते हैं वैसे ही हम लोग बता सकते हैं कि बिफोर WHO प्रेसिडेंट ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जामनगर में किया, उसके पहले का आयुर्वेद का काल और उसके बाद का काल, इस तरह हम सोचे तो काफ़ी बदलाव हमें महसूस होगा। आयुर्वेद की व्याख्या में बताया गया है हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम ज्ञानम तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। इस व्याख्या में ही सब कुछ बता दिया है आचार्य जी ने। फिर भी हम 4 पॉइंट्स जो बताए हैं पवन साहब ने उसके ऊपर चलते हैं। तो एकेडमिक्स में हम लोग गुरुकुल पद्धति की चर्चा बहुत हो रही है, लेकिन गुरुकुल पद्धति के अंतर्गत हमें मॉडर्न फैसिलिटीज़ जैसे कि शवच्छेदन, फॉरेंसिक्स, IT, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स जो भी आए हैं और जो आ रहे हैं, और सर्जरी, इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम बॉडी डिसेक्शन पे इतना ज़ोर नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग सर्जरी में कमज़ोर रह गए हैं। और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सुश्रुत शारीरे सुश्रुतो न नष्टः, सुश्रुत ने शारीर स्थान में बहुत कुछ बताया है, उसको डिकोड करके उसको बच्चों को सिखा के उनकी आयुर्वेद में श्रद्धा बढ़ा के, और जो जो ऑर्गन्स है समझ में नहीं आ रहे हैं उनका एनाटॉमिकल एफिलेशन, जिस तरह ये लोग मर्म चिकित्सा में बता रहे हैं कि ये मर्म है और देखिए इसके द्वारा ये चिकित्सा हो सकती है, उस तरह का काम हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पथ्य, जो आयुर्वेद का 50% पार्ट बनता है। ऋतु अनुसार आहार की सब बात करते हैं, हमें वयानुसार आहार, लिंग अनुसार आहार, जो आहार महिला को काम आता है वो पुरुष को काम नहीं आता, और उसमें भी अवस्था अनुसार महिला जो है उसको बारंबार विविध अवस्थाओं से गुजरना होता है, और उस अवस्था के अनुसार अगर उसको आहार नहीं दिया गया तो वो उसके स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर सकता और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में वो चली जाती है। तीसरा पॉइंट है चिकित्सा का, उसके अंदर वेलनेस सेंटर्स की बहुत बातें होती है। वेलनेस सेंटर्स अभी हमने सुना कि प्रेसिडेंट हाउस में भी हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वेलनेस सेंटर में ही जो सब प्रवृत्तियाँ होती है उसमें एकल औषध यानी एक वनस्पति का उपयोग करके रोग मुक्त होने की जो बात है वो बहुत ही बढ़िया है, और साउथ के वैद्य गंगाधरन जो है उसके ऊपर काफ़ी काम कर चुके हैं। तो वो एकल औषध जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है और आयुर्वेद के अंदर अपना विश्वास बढ़ाने वाला भी है। और जो वैद्य एकल औषध का प्रयोग करेंगे वे वैद्य इतना समझ के ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे कहीं पे संज्ञाहरण करना है तो मैं पेशेंट को यष्टि मधु फंट बना के वहाँ लगाती रहूँगी और उसको ओरली भी यष्टि मधु चूर्ण दूँगी तो मुझे रिज़ल्ट मिलता है। वैसे ही अगर मुझे यूट्राइन इनर्शिया का केस है और लेबर पेन्स नहीं आ रहे हैं, तो अगर मुझे चाहिए सिंटोसिनन ड्रिप मुझे नहीं देनी है तो मदन फल का धूप में योनि धूपन करूँगी तो मुझे रिज़ल्ट मिलता है। तो इस तरह की जो बातें हैं उसको जिस तरह हम इस आज शेयर कर रहे हैं उस तरह हम शेयर करते रहे तो काफ़ी कुछ नवनीत मिल सकता है। तद्वितीय संभाषा ज्ञानवर्धनानम चरक सूत्र 25 में बताया गया है उसके मुताबिक। और दूसरी बात ये एक है कि एकल औषध जो है उसमें
औषधों का बिगाड़ नहीं होगा। कई बार देखा गया है, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं टीचर हूँ तो टीचर की तरह ही बात करती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन आप देखें तो 25 औषधें लिखी है, उसमें कर्मा भी लिखा है। इट शोज़ दैट द वैद्य इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। तो ये बात एकल औषध के प्रयोग से दूर हो जाएगी और जो कॉस्ट है, मेडिसिन की कॉस्ट है, चिकित्सा जो कॉस्ट है वो भी कम होगी और जो औषध का स्वाद है उससे जो दर्दी भागते हैं वो भी कम हो जाएगा। चौथा पॉइंट है रिसर्च का, और मेरा फेवरेट पॉइंट है एरोमेटिक प्लांट्स। एरोमेटिक प्लांट्स पे हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है। हमारा एरोमेटिक बोर्ड है, उसके ऊपर हम ज़रा थोड़ा ज़ोर दें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ख़ास करके हमारी जो अर्क कल्पना है विच इज़ सपोज टू वर्क एज इमरजेंसी मेडिसिन, वो अर्क कल्पना को हम पुनः ला सकते हैं और इंजेक्टेबल्स से हम पेशेंट को बाहर निकाल सकते। अर्क कल्पना में बहुत यानी आश्चर्यजनक इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलता है। तो वो अगर और शुद्ध अर्क मिलेगा, अगर हमारे एरोपैथिक प्लांट्स जो है जिस तरह बताया गया कि माटी के अनुसार हमें रिज़ल्ट मिलता है, तो वो तो है ना, यस्य देशस्य यो जंतुः, वो अगर हम कर पाए तो बहुत बढ़िया काम होगा। दूसरी एक बात जो बताई कि धन्वंतरी का रेलवे बनाएं। धन्वंतरी मार्ग हमारे बड़ौदा कॉलेज में जो चौराहा है वहाँ से हमारे कॉलेज की ओर जाने वाले रास्ते को हम लोगों ने धन्वंतरी मार्ग नाम दे दिया है। सो वी हैव ऑलरेडी डन इट, और ये करने जैसी बात है। धन्वंतरी मार्ग का मतलब ही निकलेगा कि यहाँ से कोई ना कोई आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट है नज़दीक में। ये मैसेज मास में जाएगा। धन्वंतरी जी को सब पहचानते हैं, सब उनका नमन भी करते हैं, क्योंकि धनतेरस जो बोली जाती थी उसके बदले अब धन्वंतरी जयंती बोली जाती है। थैंक्स टू अवर पीएम सर। इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करती हूँ। आप सभी ने मुझे सुना, और पवन साहब और मदन साहब और अग्निहोत्री साहब ने मुझे चांस दिया इस बड़े यानी गैलेक्सी ऑफ वैद्यस के साथ बात करने की। उसके लिए मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पारुल जी, आप हमेशा इंस्पायरिंग रही हैं, ऐसे ही आशीर्वाद देती रही है मंच को। अभी वाकई में जैसा कहा प्रीवियस वक्ता ने कि 4000 भी कोई लिमिट नहीं है। हम न रहेंगे दुनिया में, लेकिन ये ज्ञान गंगा हमेशा बहती रहेगी। जयेश जी हैं, अखिलेश जी हैं, नई नई जनरेशन इसको आगे बढ़ाई जाएगी, ऐसी मेरी भी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे जी को आह्वान करता हूं। डॉक्टर कुलदीप कुमार जी पांडे, BHU से डिपार्टमेंट ऑफ संज्ञाहरण के हेड डॉक्टर कुलदीप कुमार जी पांडे। क्या मैं आप तक आवाज पहुंच रही है डॉक्टर कुलदीप जी? डॉक्टर कुलदीप पांडे जी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे जी, डॉक्टर बाबूलाल बराला जी, ये दो प्रीवियस वक्ता बचे हैं। नमस्कार सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम बराला जी, प्रणाम। कहाँ थे आप? मैं सर कहीं बाहर था काम से। जी जी जी, स्वागतम। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ा जैसे मैंने सुना थोड़ी देर, तो उसमें से कुछ बिंदु मेरे ध्यान में आए। जैसा अपना आज का विषय स्ट्रेटेजी फॉर आयुष अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक सामान्य सी बात है कि अपन जो ब्रह्मांड में देखते हैं, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा अपन सोचते हैं, इस ब्रह्मांड को जानना है तो खुद को जानो, और इस सृष्टि में कोई परिवर्तन करना है तो पहले शुरुआत खुद से करनी होगी। तो हम पहले खुद अवेयर हों, अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में अपना आयुर्वेद को अपनाएं। तो शुरुआत खुद से करेंगे अपन तो अपने आप ही बाहर भी परिवर्तन दिखने लगेंगे। जैसे अभी कह रहे थे कि अपने एक धन्वंतरी मार्ग रास्ते का नाम रखा, तो अपने आसपास के मोहल्ले में चरक, सुश्रुत, इस प्रकार से सार्वजनिक स्थानों के नाम, और नहीं तो अपने जो घर के नाम होते हैं, किसी ने चरक भवन रखा, किसी ने सुश्रुत भवन रखा,
या अपने क्लिनिक के नाम जो रखते हैं, तो ऐसा अवेयरनेस वाली कुछ चीजें ऐसे अपने व्यवहार में पहले खुद में दिखनी चाहिए। अपन जहाँ सेवाएं देते हैं वहां भी ऐसा इस प्रकार से नामकरण रहे। तो ये जैसे केवल आयुर्वेदिक कॉलेजेज या बड़े हॉस्पिटल्स तक सीमित नहीं रहे, अब जहाँ जहाँ अपना वैद्य, चिकित्सक, स्टूडेंट जहाँ जहाँ जाता है वहाँ ऐसा परिवर्तन शुरुआत खुद से दिखे, खुद अवेयर हो। तो यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जितना परिवर्तन अपन खुद में करेंगे उतना बाहर भी अपने आप दिखने लगेगा। इसी क्रम में जैसे अपन एक विषय आया था कि आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित किया जाना चाहिए। यह बात सही है कि उससे एक सम्मान मिलेगा और आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन केवल राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित करने मात्र से समाधान नहीं होने वाला। जैसे हॉकी राष्ट्रीय खेल है लेकिन आज भी उसकी हालत बदहाली की स्थिति है, तो ऐसा आयुर्वेद तो हमें नहीं चाहिए जैसा हॉकी की हालत हुई है। ऐसा आयुर्वेद राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति बने, आयुर्वेद स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो और सब स्वीकार्य करे उसको, राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति घोषित भी हो और वैसा दिखे भी। तो इसकी शुरुआत अपन सब खुद से करें और इसके लिए प्रयास भी करें अपन। जैसे आज अपनी 400वीं सीरीज है श्रृंखला, हम दुआ करते हैं कि ये 4000वीं सीरीज बने, तब तक हमारे सभी सपने साकार हों। आयुर्वेद राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति भी हो, व्यवहार में भी हो, जीवन में भी हो, समाज में भी दिखे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये जैसा अपन सोच रहे हैं वैसा दिखे, और तब तक ये श्रृंखला जारी रहे। हमारी ऐसी आकांक्षा, अपेक्षा है। 400वां जैसे आज श्रृंखला मना रहे हैं अपन, ऐसे 4000वां हो तब भी हम ऐसे बहुत सारे लोग इस प्रकार से जुड़ सके। तो ऐसा एक पहले विषय अपने आया था कि अपन स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं, चिकित्सकों को अवेयर करना चाहते हैं। उसमें एक सुझाव बहुत पहले हमने पवन सर को दिया था कि एक औषध निर्माण श्रृंखला शुरू करनी चाहिए अपने को। औषध निर्माण की यदि श्रृंखला अपन शुरू करेंगे तो उससे अवेयरनेस भी आएगी और कुछ स्टूडेंट्स, चिकित्सक, ये सभी लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं औषधि बनाने में। अभी उदयपुर में विश्व आयुर्वेद परिषद तरफ से कार्यशाला थी स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको एक सेमिनार हॉल के अंदर भी करीब 15 से 20 औषधियाँ, रस शास्त्र की औषधियाँ बना के उनको दिखाई। तो स्टूडेंट्स को बहुत उसमें आनंद आया और वो बहुत सारी चीजें खुद बनाना भी सीख जाते हैं। तो अवेयरनेस के लिए औषध निर्माण के लिए एक श्रृंखला शुरू करें अपन, तो उससे चिकित्सक और विद्यार्थी सब उससे जुड़ सकते हैं, एक लंबी श्रृंखला अपनी चल सकती है। ऐसा ही एक सुझाव था कि जो अपनी MLM कंपनियां हैं, ये आयुर्वेद को थोड़ा अब किस दिशा में ले जा रही है। आयुर्वेद के नाम से वो लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, अच्छी बात है, आयुर्वेद का प्रचार भी हो रहा है, लेकिन आयुर्वेद किस दिशा में जा रहा है थोड़ा रुक के सोचने का विषय है। तो थोड़ा सा अपने को ये MLM कंपनियों के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे होने चाहिए कि वहाँ आयुर्वेद चिकित्सक के देखरेख में वो औषधियाँ बिकनी चाहिए, ताकि आयुर्वेद चिकित्सक, आयुर्वेद के जो फार्मासिस्ट हैं उनको रोजगार मिले, और वो रोजगार मिलेगा तो अपने आप अवेयरनेस भी बढ़ेगी और सारी चीजों में उनकी उपस्थिति में देखरेख में काम ठीक होगा। तो ऐसा हम एक जयपुर में अभी अगस्त में एक अग्निक्रम की कार्यशाला कर रहे हैं। आपने हमें याद किया, थोड़ा सा हम हमारा विषय भी रखते हैं। 26-27 अगस्त को नेशनल वर्कशॉप करें अग्निक्रम के ऊपर, NIA के अंदर रखी जा रही है। तो उसमें बहुत सारे चिकित्सक रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, क्योंकि हमने 2019 में भी ऐसा सेमिनार किया था, ये वर्कशॉप किया था, जिसमें चिकित्सकों को केवल सेमिनार ही नहीं, प्रत्यक्ष पेशेंट्स भी दिखाए जाए, पेशेंट्स पे अग्निक्रम दिखाया जाए। तो ऐसे विषय जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप से संबंधित होते हैं उनमें चिकित्सक बहुत तन्मयता से भाग लेते हैं और हर उम्र के चिकित्सक आते हैं। ऐसा नहीं होता कि युवा चिकित्सक 30 साल वाले, 40 साल वाले आ रहे हैं। इसमें 55-58 साल और रिटायर्ड चिकित्सक भी कई बार इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये औषध निर्माण और वर्कशॉप इस प्रकार के जो कुछ चीजें हमें व्यवहार में करनी चाहिए खुद, तो उससे अपने आप अवेयरनेस भी होगी, लोग जुड़ेंगे भी। तो ऐसा हम एक प्रयोग कर रहे हैं, अग्निक्रम की कार्यशाला कर रहे हैं, उसमें जो आना चाहेंगे उन सबको भी हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं। अभी से 26-27 अगस्त को NIA में करेंगे, तो अग्निक्रम के पेशेंट उसमें प्रयोग करते हुए दिखाया जाएगा। तो ऐसा हमारा आग्रह है कि जो हम अवेयरनेस करना चाहते हैं उसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकल करें जिससे लोग जुड़े और उनको विश्वास हो और अपने घर में, परिवार में और अपनाते हुए उसको समाज के लिए प्रस्तुत करें। तो स्वाभाविक रूप से ये अपने एक स्थायी परिणाम देने वाला होगा और हम इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। तो 400वां सत्र है, 500वां भी होगा और आगे बढ़ते बढ़ते हमारी तो आकांक्षा ये है कि 4000वां सत्र भी हो, तब तक अपने सारे सपने साकार भी हो। यही शुभकामनाएं मैं पवन सर को देना चाहूँगा। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप तो हमेशा से यंग एनर्जेटिक डायनेमिक लीडर रहे हैं। हमारी भी पूरी शुभकामनाएं आपके हर प्रोजेक्ट के साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट माय एल्डर ब्रदर श्री सुरेंद्र चौधरी जी। डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी जी based at Noida is secretary, national secretary, Vishwa Ayurved Parshad, and very dynamic, very dynamic. I have to learn many more things, much more from him. Dr. Surendra Chaudhary ji, स्वागतम। Sir, give me two minutes just. वह टोरंटो से जुड़ रहे हैं, कनाडा से, सुरेंद्र चौधरी जी। Thank you, sir. Thank you very much, Pavanji, for inviting me. So I joined late. Sorry for that. So may I ask, is there any specific point to discuss today or generalized? 4 strategies, 4 tips to promote Ayush, Ayurved. Okay. सभी को मेरा प्रणाम। जैसा कि राजन जी ने कहा है, मैं लगभग 16-17 हजार किलोमीटर दूर से बोल रहा हूँ आपके सामने। तो क्योंकि बहुत स्पीकर्स हैं और मैं पिछले 3-4 स्पीकर्स को सुन भी रहा हूँ, तो मेरा 2 पॉइंट्स पे ही फोकस मैं करना चाहूँगा, बीइंग ए प्रैक्टिशनर और बीइंग द रेगुलेटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव हैविंग द लायबिलिटीज। सो 2 चीजें, एक आज के पर्सपेक्टिव में है, चूंकि आपका ये वेबिनार इंटरनेशनल वेबिनार सपोज टू बी, नॉट बट इट इज इंटरनेशनल वेबिनार। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट and the important point I want to raise is that there is a demanding awareness or demand of Ayurveda nowadays everywhere, globally as well as domestically. So हमें इस बात पर बहुत ध्यान देना है कि आगे चलकर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 40 आवर्स, 60 आवर्स और 75 आवर्स में नॉन आयुर्वेदिक लोगों को आयुर्वेदा सिखा रहे हैं। In my personal capacity and personal experience, such type of activities are not good for propagation of Ayurveda, particularly in other countries. So we must have some checks and guidelines so that such type of organization cannot have the accreditation from the Indian government. As you may aware about that, RAV has introduced a accreditation body or accreditation board, where such type of organizations who used to give such education or the certification, so they can apply for their accreditation of their courses. So we must draft a document that these are the conditions which should be at least go through the 3 years or 3.5 year course, or if possible, only and only degree courses should be accredited. Number 1. Number 2, my focus is for the domestic market or the domestic presence of Ayurveda. The most important part is our medicines. जो हमारी औषधियां हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती हैं, और पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि औषध निर्माता, चाहे वो अवेयरनेस की कमी से या डेलिबरेटली, आयुर्वेद के नाम पर लाइसेंस है, लेकिन प्रोडक्ट पर कहीं भी एज पर द प्रोटोकॉल और टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, देयर इज no clear cut mention that this product is an Ayurvedic product or Ayurvedic medicine. इससे क्या दिक्कत हो रही है कि आम पब्लिक में एक मिथ्या प्रचार जैसा चीज जा रहा है। लोग कमर्शियल अपने फुलफिलमेंट के लिए उसको यूज कर रहे हैं, बट अगर वो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पर बना है तो क्लियर कट गाइडलाइन है ये लिखना कि दिस इज एन आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन और एन आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन, जो कि नहीं की जा रही है। सेकेंडली, इसी में स्टरलाइजेशन ऑफ रो हर्ब्स, हालांकि गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, बट स्टिल ए लॉट टू डू इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। और आज का जो वेबिनार पवन जी ने रखा 400th ये एपिसोड है,
तो ये अपने आप में ये फिगर दिखाता है कि कितना डेडिकेशन पवन जी का और उनकी टीम का है कि बिना मिस किए हुए डेली एक कार्यक्रम होता है, और 400 नंबर इज रियली बिग नंबर। तो बहुत ज्यादा समय मैं ना लेते हुए मैं पुनः पवन जी का बहुत बहुत आभार, अग्निहोत्री जी का, मदन जी का, और बाकी के जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मुझे समय दिया, बोलने का अवसर दिया। हालांकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज जस्ट लैंडेड यस्टरडे, सो आई वाज वेटिंग ईगरली। अच्छा टाइम है यहाँ, क्योंकि अभी यहाँ बहुत देर नहीं हुई है। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम। थैंक यू वेरी मच। जी पवन जी। सर नमस्कार ज्योति साहब। जी नमस्कार अग्निहोत्री जी। थैंक यू वेरी मच बहुत सर। अच्छा लगा, आप टोरंट में पधारे हुए हैं इस समय, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुड आप अभी कहाँ हैं साहब जो ये दिन है? बैक साइड टोरंट है जी सर। टोरंट बता तो रहे हैं। टोरंटो कनाडा। जी सर है वहाँ पे। हाँ वही हम आश्चर्य कर रहे हैं सर कि इतना उजेला कैसे नोएडा ना, में दिन हो रहा है सर दिन है यहाँ पर। इन्होंने बोला 16,000 किलोमीटर से बोल रहे हैं। 16,000 किलोमीटर। जय हो जी सर, जी आपकी सर, जय हो। थैंक यू सर, थैंक यू। So now I सभी would को like to नमस्कार। request that the Ramadas PV, with the Ramadas PV, welcome, welcome ji. Namaste sir. Namaste. Namaskar. You have given 4 points for strategies. My first point is the government has to protect traditional medicine, whether it is generation to generation they are doing or tribal medicine. Get a clear-cut rules for protecting them and protecting the way they are preparing Aushadha with their traditional methodology and its potency and etc. to test some what we'll call chemical labs and etc. has to be provided by the government for protecting such practices all over India. Number one. And next one is protect university education. There you keep perfect strategy for the students to have a certificate. Again, I'm concentrating on the board things. There are 220 working days per year per profession for a student per year. So it comes nearly 220 into 6 hours. So keep some 100 hours. Every student has to be there in the society nearby his college to get the awareness of what are the plants available there, what sort of soil over there, what sort of diseases are spread over there, and you keep whatever the information they are bringing, that for your research in that institutions, nearby locations. If you keep like that, you will get really the problems faced by the society, and the investment that you are spending for the PG course and etc. has to be beneficial for the local area of that institution itself. Professionally also they will be promoted, and it can be applied for generalizing everywhere as things. And next one is translation about Samhita. There is no harm in translating the Samhita to any other languages, those people who are familiar with. There is no need that one has to learn the Sanskrit alone and has to things. No problem in that one, but has to be very careful. One or two example I will tell you. Kshiramamsadhyai yascha sadhidaha, when you are speaking about the 6th chapter, when you are speaking about the odana, different types of odana, when you are creating the odana with the Kshiramamsadhya, you will get Guru Bhakshana, Guru Odana over there. See, he told Kshiramamsadhyehi as a 2 of the dravyas over there. If you go for the Kalpana, there are Pradhanasya Kalpa, Pradhanena Kalpana, Lesha Kalpana, Gunaguni Kalpana. When you learn that Sapta Kalpanas, there is a Gunaguni Kalpana. When the Guni is told, you should know what are the gunas specified over there. So it is up to you to select the Guni from available sources, but it should have the properties that which is mentioned therein, the Guni in that particular context. So the combination of the guna should be according to the dravya mentioned over there. The dravya is not available for you. You can go for the guna and available guni nearby your surroundings. This has to be there in your translation. If you do not have the translation, that points, then only Kshira and Mamsa will be accepted.
Again, when you go for the third chapter, when the Varsha Rudujariya is told, there is a line about Mastu Sauvarchaladhyam va Panchagola Avajurnidam. There is a word va. If you translate it, we will translate it as or. But when you go for Arunadatha Ketal, va is Samuchaye, because there is so many manuscripts, it is mentioned cha. In one way, va. Nipadas, va, cha, etc. are called grammatically nipadas. They can have any meaning according to the context they need. So, va should be taken in the meaning cha in this context. If you translate, you will translate or, but it is cha is the meaning. It is told by Arunadatta once again in his Vyakhyana. So, when you translate the Samhitas, you must read the Vyakyanas, multiple Vyakyanas which are there in Sanskrit, and you should gather that points in the translation. Otherwise, it will lose. And even I am telling, there is nothing that which is irrelevant told in Samhita. Though they are created in 1 BC or 2 BC or 3rd BC, if you understand the textual methodologies, that is Kalpana, Arthasraya, Tachilya, etc. in the Tantra Yukti in a perfect manner, certainly you can interpret them according to the modern age, like Ramayana, Mahabharata, all philosophies, or even 25th century comes also, you can interpret them. It is not old age. So, such a way, the translations of Samhita must be like that. This is the main points when you are going for the university educations and when you are teaching methodology. Daras are told about teaching. Teaching is very, very important. Very, very important. There is no doubt. And Ayurveda has got its own language. See, don't think that Sanskrit is the language of Ayurveda. Ayurveda has got its own language. Each word has to be interpreted according to that particular science. The word, that which Atma, when you take in Advaita philosophy, the meaning is different. When you take Atma in your subject, yes, in your subject, it is different. So translation must be very, very careful. And traditional education, university education, these two publications are required, but publications has to be very much checked and published. Otherwise, which can mislead the students. There are publications which are not up to the standard. So publications also has to be very careful. And sir told that short-term courses should not be there. There should be a proper education for has to be tested in, has to be taken into care, or some restriction has to be kept for the short-term courses that which are being promoted by the authorities for the publication of Ayurveda. If all these strategies, if the government and the universities are taking, certainly the Ayurveda's old richness will not be lost. At the same time to time, it will be helpful for the people who have less time, less knowledge in language, etc. can be benefited. This is what is I would like to share here. Thank you very much for giving the chance, and I am appreciating Pavan Kumar sir. Actually, I am only a Sanskrit professor. I attended almost 350 seminars organized by Pavan Kumar sir. In everywhere, 1 or 2 points I could suggest with them. They encouraged me a lot. I learned a lot of Ayurveda from this stage. Thank you very much for Agnihotri sir, Pavan Kumar sir, Madan Taguvil sir, everybody. Thank you, sir, thank you. Sir, I was waiting if you would have come with your Sanskrit language as a speech. I have written. परन्तु समयो नास्ति, समयमस्ति चेत् संस्कृतभाषायां इदानीं तु संस्कृतभाषणाय समयः नास्ति. पवन कुमार जी महोदयेन एवम् उक्तम्. धन्यवादः. Shuvrat. I would like to welcome Dr. Risha Sharma from Singapore. I would like to welcome Dr. K.C. Priyadarshini Gunaratne from Sri Lanka. Welcome. Thank Shankar you, will sir. also be joining. Welcome, madam. So now I would like to request Dr. N. Sridharji from BRKR, Professor in BRKR Ayurvedic College, Telangana, Hyderabad. Welcome, Dr. N. Sridhar. He has started a good initiative, Dhanvantari Anugraha, and promoting worship of Dhanvantari in his way. Welcome, Dr. Sridhar. Dr. Sridhar, kindly unmute yourself.
You are mute. Yes. Your voice is not coming, doctor. Yes. No voice. You please once stop it and then on it. Your voice is not coming, sir. I think there is some losing in the contact. You address that one, then it will be okay. Not audible even now. Now you push once for a while. Push it and leave it. Just touch and leave it. Please unmute. Please unmute, sir. Okay, I think. You can start with your mobile itself. Because today there is a small submission from your side, from everybody's side, so you can finish it by your mobile itself. Sridharji, your voice is not coming. Meanwhile, if Dr. Sridharji is making efforts for the availability of his voice, is Professor K.K. Pandeyji from BHU is available on the platform, I can take a few suggestions and sentences from him. We were earlier invited. If Professor Pandeyji is available. Yes, sir. Professor Thank K.K. you, sir. Pandey, yes, Thank you, please, sir. you please take the benefit of this missing time. You hold it, please. You are invited. My dear respected Dr. Pawanji, Madanji, Agnihotriji, and my dear friend Dr. Vishnu Sharma. First of all, I would like to express my sincere thanks to the Just servant of increase this. your voice, sir. Just increase your voice. Sound is a little bit slow. First of all, I would like to express my Okay, good. sincere thanks to the organizers for giving me this opportunity to join and listen and learn the stalwarts of Ayurveda and approach. I would like to congratulate Dr. Pawanji for this achieving this 400 golden milestones of this academia. I have given 4 points to discuss for the upliftment of the Ayurveda. Being a teacher in the field of Ayurveda, I would like to suggest from my own end that is first point is teaching and training. And for that, we have to teach fundamental principles with the modern tools and technology application for the better understanding of the Ayurvedic subjects. And a collaboration must be there. Second point is the holistic approach. Holistic approach not only for the treatment, but it is also required for the
for the teaching and also the holistic approach of the interdepartmental, inter-subject disciplines of Ayurveda, as well as the modern subjects and the allied subjects. The very good example of holistic we are looking now these days, that is the Dr. Pamanji itself. He himself is a holistic approach symbol, and we must appreciate his vision to amalgamate, to interact in all disciplined persons in Ayurveda. So my first point is for teaching and training, and there is a problem while teaching a subject of Ayurveda, that is the language problem. A person who is knowing Ayurveda is not knowing properly Sanskrit, and a person who is knowing Sanskrit and Ayurveda is not knowing the proper modern medical science. So we must train our students and teach accordingly for better understanding of Ayurvedic subject in current scenario for sending the message to the worldwide. Second one is the clinical training. And for clinical training, research and skill development, we need some collaboration with the modern science tools and technologies, because we want to uplift the Ayurveda and we want to propagate for the generalized acceptance of Ayurveda for the better mankind. That is very much required for the emergency treatment. Some speakers said that the aromatherapy is a good one that can be used for the treatment. But here I would like to say that the other subjects like the Shalya, Shalakya, Prasuti, Barlik, and the emergency Kaya Chikitsa, we need some sort of the modern allopathic application, and that must be taught into the subject as a essential subject, and the teachers for that must be appointed in the institutions, so that the total Ayurvedic knowledge of the subjects can be. Otherwise, while going to operation a patient, it is quite difficult to provide the proper teaching, training, data documentation, and skill development. So for better teaching training, that is the amalgamation or the introduction or the knowledge of the modern subjects. And being a person of anesthesia, pain, palliative care, I would like to suggest that, like I'm the follower of the integrative approach of the medical education, that must be incorporated in our faculty too. Third one is the drug design and development and standardization. Many speakers have been given focused on this very issue, that the drug designing, development, and standardization must be there according to. And I will not take that much time. And fourth one is the awareness by different programs. I must salute Professor Pawanji that he has taken this challenge and is doing well in that very direction, so that the public awareness and the social acceptance must be there. And because without public acceptance and without social recognition, we just can't come into the national health stream. So the national health policy makers must think, and there must be some organization to bring the education system of Ayurveda in the stream, to bring it in the streamline of national health stream. COVID has been a boon to popularize or to accept the Ayurvedic and to create some sort of awareness. But there must be some concrete policy regarding that. And there are many more applications of Ayush as such for the public awareness, public acceptance, social programs, and the other things. I will not take that much time because many more speakers are there, and time will be provided to me in future to discuss all those issues. But with this, I must congratulate to the organizers for giving this very opportunity to share my views in front of you. Thank you, sir. Thank you, Agnihotri, sir, and thank you, Pawan, sir, and my dear friend, Dr. Vishnuji. Thank you all. Thank you very much, Dr. Pandit. Thank you. मतलब आप हमेशा स्पष्ट बोलते हैं और बिल्कुल डंके की चोट पे बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आपका आशीर्वाद है सर, पूरे आयुर्वेद को आगे ले चलना है, पूरी आयुर्वेद के सारे सब्जेक्ट को लेके चलना है। बहुत वो सर्जिकल क्लिनिकल तो लेके चलेंगे सर ना। थैंक यू जी, थैंक यू पांडे जी, प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत बहुत बधाई। Really sir, you are the real holistic person. Thank you. I must salute you. Thank you, thank you. So now I would like to request Dr. Sridhar again, Dr. Narlakanti Sridhar,
welcome Dr. Sridhar, Professor and Head in BRKR Government Ayurvedic College, Telangana, Hyderabad. Om Shri Dhanvantari Namaha. Yes. Thank you. Voice gone. Hello? No, hear me, sir? Yes, yes. Yeah. Thank you so much, Dr. Pavanji, for providing a good platform for everyone to express their ideologies towards Ayurveda and its progress along with the fraternity, the progress of fraternity of Ayurveda. And at the same time, I would like to congratulate you for your untiring, successful running of a series of webinar, international webinar. Making a namana, heartful namana to all the legendary people present here and spoken here so far. I would like to say a very few different words in relation with awareness of Ayurveda among common public, particularly, though we are talking about awareness about Ayush. So whatever the speakers talked about so far and probably maybe talking in a forthcoming time, accepting all those points, really wonderful. I wanted to touch upon certain different points where actually the points are very important but neglected by almost everyone. See, we are struggling in the society in a angle that we feel that Ayurveda is the greatest science, useful for everyone, but we are not being given adequate chance to express our professional knowledge to the common people or among other professionals of medicine. Now, there are certain reasons for this, apart from, we being called as traditional medicine, unrationalized, yet to be studied. So many names have been given to this system. Now, what are those points which, because of which people are neglecting is that, we, when you look at ourselves, we feel a sort of, unprofessional ourselves. We do not express ourselves in the society as a profession. We ourselves started calling our system as a traditional medicine, which is 100% wrong statement. Let the whole world may call us as traditional people or traditional medicine, but we should never use the word. I feel that that our Ayurveda is a traditional medicine, it's a professional medicine. Though we may not be really having that knowledge to express our science to the level of today's scenario, but still, the logical aspects Ayurveda talks about is extraordinarily brilliant. We can still feel them, though we may not be in a position to express the modern people feel what we are feeling. So there are certain points which we are neglecting, because of which we are not getting confidence in our students, in our faculty, in our practice, in our expression, in our social status, and so on and so forth. See, for example, usually people like those people who appears to be well-dressed, well-spoken, decently looking, disciplined, and logical to their expressions, whatever it is. How little they may be expressive, but they should be rationalized, they should be logically expressed.
if you look at Ayurvedic fraternity, in these viewpoints, we are at a very low level. See, we do not give importance to our dress code. We do not give importance to our knowledge. We do not give importance to our own science. We don't like to call it as science ourselves. As I was saying, even the government bodies are naming it as alternative system of medicine or traditional medicine, which itself is a big, it's a sort of blow onto the confidence of Ayurvedic professionals. Similarly, we wear the apron, but you look at the apron sizes and all. It's so, it's very haphazardous. It doesn't give a good look to the students or the faculty. The variant sizes, we don't concentrate on that. I think we should have a very good, decently designed and designated aprons we should wear, make them feel that proud of being a doctor and all. Let the people see looking at us that it's so professionals and all. And we do not have even a decent dress code. We don't maintain even when we go out among other professionals or among other areas. We wear so simple dresses and all. I know that dress does not reflect the science, the knowledge, but still it is the first catching point that the other people will give concentration on us. Similarly, there are no, as somebody was saying, that Dhanvantari train, Dhanvantari margas and all. But if you look at our own activities, we do not mind to even do Namana, everyday Namana to our Dhanvantari. We hardly look at him, though we have photos, statues in our colleges and all. Only once in a year, that too probably after our Modi ji announced Ayurveda Day, National Ayurveda Day. I think, any work is successful only when we take blessings of our elders. And Dhanvantari is said to be the Adhisthana Devata of Ayurveda. And, he is the highest authority for our science. He must be highly regarded first. We should adopt him to the heart. We should have a culture to do Nitya Dhanvantari Namana. We know that we are not really good in our science, though we have become professors, maybe somewhere more than that. We know that we are still struggling to understand Ayurveda because of its complexity, its presentation in the text, the documentation of knowledge in the form of Samhita. This all are making us really not having a professional knowledge, but a mere knowledge somewhere which are trying to upgrade ourselves. See, with this knowledge, we are trying to teach our students, and out of whatever the quantity we give, they perceive only a little percent. And after that, when they go out of the institution, they hardly have any person to guide them. I think Dhanvantari, Nitya Dhanvantari Namana can help them, that he will be giving a guideline. He will be watching us, our dedication, and the motto, service-oriented motto and all. And that habit of making a Nitya Dhanvantari Namana will guide them, our students and all, in all activities, and certainly make them successful in all their endeavors. Right. These are all certain important points which we need to concentrate and have a good habit of making all these activities. And if you look at our science, the very basic concept of our science is the spirituality. So keeping these all points, if you go on trying to put this in the minds of our students and what we call our faculty and all, this will be helpful in taking out the Ayurveda to every home. Pavanji, I just wanted to know whether are you able to see my screen? Yeah, it is visible. Sir? It's visible. Yeah. Do you see my screen sharing? Yes.
Yeah, please. I just want, I will conclude this with these few words. That's it. These are all certain things which I designed an Ayurveda Dhanvantari photograph, and with the two small photographs at the bottom, giving the people saying that, see, these are all the two small photographs you take, now cut them off and do a photo frame and keep it in your puja mandir. Do nitya namana. Simple namana to Dhanvantari will make a lot of things. These are all, I'll show you some more. This is Vijayawada, one important temple in Andhra, where Telangana, where we met Evo, Dr. Ramabai something, and we explained him this Nitya Naman, Dhanvantari Namana, and this is a dress code that I designed, where the apron would be, the length of apron would be up to the knee, and the name is designated with the embroidery work. And similarly, I quoted, at least a good blazer for postgraduates. Depending on the department, they can choose a different color. And wherever they move with a blazer. And the people started, looking at them, appreciating them. They would like to interact with them. And this dress code boost up the strength, or the what we call the confidence of students to go through that samhitas and all. And these are all certain things where in Bhopal I distributed Dhanvantari statues, photos, and explaining them, to the importance of Nitya Dhanvantari Namana. This is a photo I prepared and started distributing to all people, students, faculty, and wherever I go. And he's a vice chancellor. I requested him to distribute. He distributed around 2,000 photographs on the previous Dhanvantari Jayanti. And this is a small sticker I prepared where I said Nitya Dhanvantari Namanam Nirogananda Jivana Pradam. Similarly, the Nitya Dhanvantari Namanam Nikhila Nisamshaya Gnana Pradam. This is the Dhanvantariyam is a concept under which I am working for the last 5 years. There are so many points which will help Ayurveda get propagated properly as a profession and increase the the social status of Ayurvedic professionals and Ayurvedic fraternity. So these are all strictures. And one more activity I do, as the Pavan sir was introducing, while introducing me, was saying that Nitya Dhanvantari Ramana, I started doing garlanding the Dhanvantari statue in our hospital and college with the money of one person from the faculty or the student every day. We prepare a roster and we give opportunity to them to garland and make a small prarthana to him, Dhanvantari, expressing that our thankfulness, gratefulness for giving the chance of becoming an Ayurvedic Vaidya, and also requesting him to guide to understand the deeper senses of Ayurveda, which was otherwise not possible. These are all certain things. And this is what we call the sticker we distributed wherever I go. And this is a bus conductor, a government bus, where he has put a sticker on his mirror when we distributed to him. Similarly, recently I went to Bhopal, where I talked about the same concept to Health Minister of Bhopal, and he appreciated here. So this is all the certain things which I wanted to share. Thank you so much for giving this opportunity, Pavanji, and thank you so much everyone for patient hearing. Thank you so much. Thank you, Sridharji. Thank you very much. Very nice presentation. You are dedicated person, no doubt. Excellent. God bless you. Lord Dhanvantari bless you. Now I would like to request, our international session is just coming ahead. So from Naveen Gupta ji from UK, Risha Sharma ji from Singapore, Sri Priyadarshini ji from Sri Lanka, everybody is waiting for us. So I'm sorry that some time is late. Now I would like to request Dr. C.P. Sharma sir. Dr. C.P. Sharma sir, ex-Joint Director, Ministry of Ayush, Government of Madhya Pradesh, Bhopal. Pranam, जी सर. Pranam sir. सर्वेभ्यो नमो नमः. नमो नमः. आज के श्रद्धेय वरिष्ठतम वक्ताओं द्वारा जो भी
हमें टिप्स दिए, उन टिप्स के अलावा मैं इस टीम के समस्त सदस्य महानुभावों का साधुवाद करते हुए इस आयुष समृद्धि उपक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संभाषण श्रृंखला की 400वीं कड़ी के लिए साधक सह प्रायोजक सह संकल्पक वैद्य महर्षि कह दूं, आयुर्वेद महर्षि कह दूं, उन्हें तो ज्यादा उचित लगा, वैद्य पवन शर्मा जी को सादर नमन सह निरंतरता के लिए सतत शुभकामनाएं। यह भारतीय चिकित्सा विज्ञान जो आज पूरे विश्व में हमारा गौरव बढ़ा रहा है, इस गौरवमयी परंपरा को एक निरंतरता और वैश्विक पहचान देने के लिए पवन जी साधुवाद के पात्र हैं। इसके साथ ही मैं जो एक विशेष गीता में जो हमें मिलता है, इस के संदर्भ में एक संदर्भ, उसके साथ मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूंगा। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तान सिद्ध ही सर्व कर्माणाम अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चेवात पंचमम। In the respect of this, there are the prime mover, the several agent and varied endeavors, the sustaining power, and likewise he means the providence. यह हमारी गीता हमें कहती है कि हमको अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक दैव, उसमें दैव भी हमारा है, प्रभु भी हमारे ऊपर कृपा करता है। साथ ही एक और बोलूंगा, ज्ञानम ज्ञेयम परज्ञातम त्रिविधा कर्म चोदना कर्मण करणम कर्म करते त्रिविधम कर्म संग्रह। ये हमारे वैदिक परंपरा में, हमारे श्रीमद् भागवत में किसी अभियान को निरंतर रखने के लिए उसमें जो समर्पण भगवान ने हमारे लिए बताया, उन शब्दों के साथ जो पवन जी की इच्छा है, उस पवन जी के अनुसार मेरी जो इथिकल विजडम के लिए जो 4 टिप्स हैं, इथिकल विजडम, उसमें हमारी इस डेवलपमेंट ऑफ स्किल टीचर एज वेल एज स्टूडेंट, development of clinical skill in the students, development of research skill in student and teacher also, and pharmaceutical skill development is also markable. These skills are essential for Ayurveda professionals. ये स्किल जो है, इन्हीं स्किल्स के लिए हमारी गीता में जो हमें मिल रहा है कि हमें कैसे अधिष्ठान को, कैसे उसमें कर्ता के द्वारा, कैसे क्रिया के माध्यम से, किस तरह से पूरी तरह से योग्यता पूर्वक आत्मविश्वास के साथ विवेकीय समर्पण के साथ कार्य का यदि संपादन होगा, निश्चित सफलता मिलेगी। तो इसमें हमें जो स्किल्डनेस, स्किल डेवलपमेंट करना है इन जिन क्षेत्रों में, इसके लिए जहां मेरा एक आयुर्वेद ग्रेजुएट इज नॉट ओनली ए फिजिशियन एज आई थिंक, बट कैन डेवलप मैनी स्किल इन इट एंड ओपन एवेन्यूज फॉर मैनी फील्ड्स लाइक लाइफ साइंस, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर and forestry and pharmaceuticals also. These are the field. साथ ही एक और विशेष ये कि हम आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम एशियन ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना करें, उस स्थिति में पूरे भारत का
एक वनौषधि संपदा वाला सर्वेक्षण करें, जिसमें हमारे बीएमएस एमडी द्रव्यगुण के छात्र रेंजर के रूप में कार्य करें और वह हमारा आयुर्वेदीय वन औषधि संपदा का संपूर्ण संरक्षण कर हमें क्वालिटी और क्षेत्रीय औषधियों की के वैशिष्ट्य को बताते हुए रॉ उपलब्ध कराएं फार्मेसीज को। तो जहां इस बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही जी सर, बहुत सही बोले आप। तो हम चाहेंगे कि हमारा आयुर्वेद की एक्सेप्टेंस ग्लोबली हो और ये हमारा गोल है। हमारा ग्लोबली एक्सेप्टेंस ही हमारा गोल अचीवमेंट होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। केवल 2 वक्ताओं के बाद में इंटरनेशनल सेशन शुरू होगा, कृपया रुकिएगा। मैं डॉक्टर PVV एक्स डायरेक्टर सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल, नाउ ही इज इन तेलंगाना। वेलकम Dr. PVV Prasad. If I am audible to you, please unmute. Yes sir. Welcome. Namaskar. A very good evening to all of you, all the dignitaries and participants, and congratulations to Dr. Pawan Kumar Sharma ji. Today, one more event is there. 26th June is I want to throw the light. Is an important day for medical professionals and general public, and need of the day. It is to be celebrated the International Day Against Drug Abuse or Illicit Trafficking or World Drug Day. Today, the 26th June. So, about Ayurveda, which is serving the public since ancient times, is popular amongst public till the invaders entered India. During the Mughal and British period, it is not patronized well. After the independence and especially since 1995, more from 2014, AYUSH system is in general and Ayurveda in particular is patronized well by the central and state governments. We, the torchbearers of AYUSH systems, professionals of AYUSH should come forward to propagate the basic concepts of simple remedies amongst the public and needy people in the situations like recent pandemic. On positive note, the COVID pandemic gave us opportunity to reach out the needy with the herbo-mineral formulations in combination with yoga and meditation. And also with simple purificatory procedures. Now, the AYUSH systems needs no introduction among the public. There is demand in the country and around the world. So we, the professionals of AYUSH, should utilize the opportunity to propagate more and more about system for the benefit of mankind. We should popularize our strengths and synergize the systems wherever needed. When we talk about Ayurveda, Ayurveda has strength in preventive aspects of health and disease by focusing on diet, behavior, and sleep, which are the basic root causes for present-day health hazards. The concepts and above are closely related to Ayurveda, clearly referred in Ayurveda, which can be practiced even today, though our lifestyle is different from those periods. For example, take diet. There is so much of change in the dietary habits and items in our country, especially after the globalization of economy. Due to IT revolution, sleep and diet patterns are very much changed, which are causing to several lifestyle disorders nowadays. So we need to focus on preventive methods for bringing awareness to the public. We need to restrict to our strengths without claiming big and without claiming false treatments. Make availability of simple drugs and promoting AYUSH drug industry for quality control, and promote home remedies which can cure simple problems and in the early stages of diseases. A stitch in time saves 9. We have to follow the rule. So Ayurveda
is a holistic approach, is having holistic approach and good healing rate and less side effects, and it is cost effective and easily available and home remedies. And Ayurveda drug industry with quality control should be promoted in a better way. So we need to highlight the things about Dinacharya and Ruticharya in present scenario with Ahara and Vihara, which are more important in nowadays. And to maintain the health and prevent the diseases, which is the main objective of Ayurveda, Swasthasya Swasthya Rakshanam, Aturasya Vikara Prasanam. So awareness program should include school children or young minds to get sustainable support and utility of oil systems. Just I want to specify today 4 points. That is, Ayurveda is the only medical system which has more importance on preventive aspects of health and disease. So hence, Dinacharya and Ruticharya in present scenario to be explained to the public as well as students. And next point is about diet. Diet plays major role in maintaining health and disease, as all of us know. So awareness should be focused on diet and dietetics. And third point is sleep. Sleep and its importance have been clearly mentioned in Ayurvedic texts, and good sleep is must for good health. So many people are deprived of sleep nowadays. So we have to focus on those things to maintain the health of the society as individual. So home remedies and simple drug usage should be promoted in a greater way to treat the diseases in early stage and to prevent the further damage to the system or body. So whatever points I have mentioned, all are applicable to all the oil systems in general. So I congratulate and thank you for 400 webinar, Dr. Pawan Kumarji, and for giving me this opportunity to meet eminent personalities and dignitaries today. Thank you so much. Thank you. Namaste. Thank you, Dr. Prasad. Excellent, very brief, very nice, very nice. Now, before calling Dr. Somesh Kaushik, I would like to invite Dr. Rajan Patankar sir, Ved Rajan Patankar sir. सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि पहले जो इंटरनेशनल स्पीकर है उनको बात करने दो. जी सर. थैंक यू. हाँ यस क्योंकि उनको पहला ये मौका मिलना चाहिए हमारे साथ. सर साथ ही हम लोग सिर्फ 18 रह गए हैं, उनको जल्दी बुलाइए, वो अभी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. हाँ यस इसीलिए प्रायोरिटी दे दीजिए. हम तो क्या बात कर पाएंगे बाद में. Thank you, sir. Thank you very much. So now I would like to request Dr. Somesh Kaushik ji from USA. Welcome, Dr. Somesh. Welcome. Namaskar Sharma ji, Namaskar Pawan ji, and Namaskar everyone. And it's an honor to be here. And thank you, Pawan ji, for this 400 webinars. It's a great achievement for you, for all of us who are connected with Ayurveda and who are practicing Ayurvedic medicine and who feel pride in practicing Ayurvedic medicine because we are part of this journey and part of this family. So namaskaram to all the seniors and elders. And since this is a webinar where we are looking for strategies to make it better. So basically I will talk more about the US. So actually I was listening to Dr. I think C.P. Sharma ji who talked about globally. So Ayurveda at this time is practiced all over the world. There is no doubt. And the dharohar we have came from our rishis and all these sages actually is excellent. It does work for almost every chronic disease. And as we know, there is no treatment for any chronic disease in Ayurvedic medicine, in allopathic medicine, and Ayurveda have worked for almost everything. So we are happy to know that. But the main thing we need to look at this point is the education. The education system needs to be revamped, and education is just not education in the school or college level. Educating the public, our clients, educating the policy makers, especially in India, where the policies are such that anybody is Ayurvedic practitioner. I get a call from so many
Indians, basically they will tell that I heard that in Ayurvedic medicine, main thing is ahar, and we use turmeric, we use methi, we use this, we use that, we know how to make khichdi, so we know most of the Ayurveda. If you give a certificate, we can start practice. I said, where is this coming from? So reason being that any Baba, any Swami, anything we see after a few years of giving lectures, they became Ayurvedic expert. So the policymakers had to be very strict that you cannot abuse these word Vaidya just because you look Indian and you know Ayurveda. No, it is a intense study, intense knowledge, intense work, thousands of years of tapasya of all these sages which are given to us. Again, we can't waste that. So we need to be really sincere about what we are offering to ourselves and to the public. So number one thing is looking at globally, we need to look at the education. So here in the US, we have organizations which are looking at the curriculum. In the beginning, there are many schools which started, and because of the medium of communication here is English, and Sanskrit was kind of a little difficult, so people start diluting it. And the dilution became so much diluted that basically nothing was left of Ayurveda, and it became so simple. And then we found it is not working. So the Ayurvedic organizations, which were like AAP is one of them, Ayurvedic Association of Ayurvedic Practitioners, American Association of Ayurvedic Practitioners, and APNA, where Shekharji is in charge of that. So these organizations start working together and then came with the curriculum, which is equivalent to BAMS. And then we are also following the curriculum which came from Ayush and also WHO to see that, to make sure that all these schools which are offering training in this country, and eventually that probably will be followed by many other countries globally, that is equivalent to what we have learned during BAMS. But with that also, we also want to make sure that we make it a little deeper. As everyone mentioned, research is a big part of that. When I was going to school a few years ago, graduated in 1983, research was not part of it. And in fact, to get the recognition at the state level, more than half of the year school was closed for strike just because we were fighting for our rights. So now that is not there, but the research has to be a part of that. So I want to make sure that when we are offering education, it has to be a quality education, no compromise, no dilution, and all the clinical skill, authenticity has to be there. And we want to make sure that whatever we learned, we understand that completely what was meant by the authors when it was written. So the quality of education. But also when we are looking at education, not only the students had to be 100% in there. And again, in the past also, and still happens, people will go, or students will go for MBBS first, and if they can't get in, then they will go for something else. If not, then let's go for BMS. At least we can practice. And in the past, I have known many BMS graduates will actually practice allopathic medicine. We should not be there. They need to understand if you are in for Ayurveda, that's why you come here. Don't just come for licensing. Also, we need to educate the public by telling them what we offer, educating them what Ayurveda is and what it can do for you. At least give them the pros and cons. So here in the US, many of us actually are offering training, free training. So there's a training for the students who want to learn and practice Ayurveda. But also in the state of New York, actually, I'm connected with the library system. So 2 libraries, which have connected with many other 15, 16 libraries in different cities. And so every other Tuesday, there's a free lecture for the public from 7 to 8:30. So at least the awareness is there. So that's my community service where hundreds of people every week listen to, and then it stays on their website. So anybody can go in and then check later on. So whatever they want to know, information is there, not very specific, but at least they will know that this system exists. And if they have a question, definitely we are here to answer those. So in the beginning, we need to create our place. And same thing I'm finding in India, a lot of opposition we get here is not from American physicians, is mostly from Indian physicians, because patient will ask them, well, Ayurvedic is an Indian medicine, so what do you know about? Oh, it doesn't work, it's just a couple of little spices and that's just, so basically, reason being, when they moved here many, many years ago, Ayurveda was not that popular. Another thing is they have not used it.
And third thing is, most of the time what we have found in historically, we did not trust our own people, our own paddhati, our own traditions. We follow the outsiders. So that need to change also. And again, thanks to Modi ji, that trend is changing. So we need to educate, again, making sure the student who comes need to have authentic education to the deepest and the pure knowledge. Second, we need to also educate the public, making sure that they know what we can offer. They know what Ayurveda is all about, and they should know that Ayurvedic medicine does really work in much better ways than the allopathic medicine. In fact, we even though we are not practicing surgery, but if you practice and use Ayurvedic medicine, you may not need even surgery ever. So basically, it is all for healthy individuals also. Third thing, like I mentioned before, is the policymaker. And so we need to also contact with the policymakers. I also came from India many years ago, and I was seeing anybody who may not even had a background, nothing, the high school pass, will get a license to open a pharmacy, and then they are producing herbal medicine. For on which ground? Because there are herbs available everywhere, you blend them together. So what it is doing in many countries, Ayurvedic supplements are being banned because of the chemicals or heavy metals or other things. Well, we use heavy metals. If they are purified, then they are great, they are magic. But if they're not purified, because the people who are putting them together do not have any idea what they are mixing, then it's going to be a problem. We use Ayurvedic medicines here, which actually all the herbs are coming from India, but made here, and then tested for all the heavy metals, especially the four, lead, mercury, cadmium, or arsenic, which are neurotoxins. And when they're purified, there is no issue. So I've been practicing here for almost 30 some years. And there are not any issue, because everything which you use is tested. It is good to pay a little extra for a third party to making sure everything is tested. Everything which we use is free of mold. So that need to be applied to the Indian manufacturer also. Because what is happening, many of the grocery stores which are looking for cheap medicine, and they get from open market, bring them here. Consumer always looking for cheap stuff, and they will buy from grocery store. And then if they had any problem, then they found the heavy metals or other mold or other bacteria, other things were found in those because they did not come through proper channel. So one unfortunate condition is everything we export from India, there's export quality. That is the best. They check for everything. So export quality have no problem. What about our own people? There's no quality control from them, so they can eat all the junk. They can eat everything which is not unprocessed, not purified, not clean. So basically, to our own families, our own people there, we give them something which is not tested, and the quality is also not there. So for that, we must educate our policymakers, making sure that there are strong policies for the manufacturers also. Then look for the leadership role. So here, National Institute of Health is the largest and highest agency, which looks at the research and also recommendations for the practice of medicine. And in that institution, there are mostly MDs and DOs, but again, there are naturopathic doctors, there are acupuncturists, there are chiropractors. So other paddhatis or other systems of medicine also are given role and a place, so that when they are testing specifically for that area, these individuals are in charge of that, they're involved. They can explain what that really means, instead of somebody else explains without even knowing what this is, and they say, oh, it doesn't work. So in India also, anytime any large institution where research is being done, as long as is related to any kind of medicine, Ayurvedic graduates, Ayurvedic medicine should have few seats there, so they can also be involved. Here, basically, cancer research is a big part. So cancer treatment centers of America were started almost 35 years ago. And there, again, mostly oncologists are running the place. These are all MDs, and there are some DOs. But then the naturopathic medicine, which basically we consider as the Ayurvedic medicine of the West. And in fact, the forefathers of the naturopathy mentioned that basically the pure naturopathy is Ayurvedic medicine, is pure natural. So it's a big part of it. All the herbs are same, names are a little different.
So in that case, the naturopathic doctors were given a primary role in the treatment of cancer in cancer treatment centers of America, which has branches all over the country. So basically, oncologists and the naturopathic doctors will sit together. Most of the test diagnosis is done based on the modern technology. And after that, when it comes to treatment plan, the treatment plan is put together, because in natural medicine, there are treatments where you boost your immune system to fight against the cancer cells, whereas chemotherapy and radiation is only destroying everything, including cancer cells, plus also white blood cells. So there is not much a long-term survival. So knowing that, they have combined them and used that technology. I don't see that actually, if it is there, I'm not aware of that in India. So we need to be making sure that every agency, everywhere there's any research in medicine, doesn't matter what medicine is medicine, we need to have place for the Ayurvedic graduates, so they are part of that. And the final thing is trust and confidence. So when you go to an Ayurvedic school, you need to trust our ancestor, trust all the rishis, trust all the sages who have given us all this knowledge. Whatever is written there, have some base. It is tested over and over and over. The terminology maybe is a little different. So, and then we need to trust that, trust our knowledge, and also we need to be confident that we can handle that. And for that, again, coming back to the first point, education had to be there to a level where we know whatever we have learned is going to work. Nadi Vigyan is amazing. So when we had the patient and we look at their nadi and says, well, you know, how is your blood pressure? And I'm taking something, people will be surprised. How do you know? Well, nadi tells that. So with that, if we are able to back up that with also knowing all the lab tests and all the modern technology, adding a course of that will not hurt, because at this point, we are looking for a system which is going to be a integrative system when we are trying to create a place where allopathic medicine can also complement Ayurvedic medicine. Ayurvedic medicine being the oldest one should be the primary system. Right. And before we start that globally, we need to start that from home, or it had to start from India. When this starts there, we'll get respect all over the world. And there I'll stop. I told by the time. Thank you. Thank you Somesh ji. Thank you for joining. I'm really extremely sorry what happened to the link. I don't know. It worked finally. As long as it's working, it's working. Thank you very much. Now I would like to request Dr. Naveen Kumar Gupta ji from UK. Welcome, sir. Welcome. Pawanji, thank you very much. I'll be very short. All the congratulations to you for the 400th webinar. I have to very short because I know that it's getting too long for everybody. So we were talking about the four steps. Then I was thinking that I will speak about the Chikitsa ke Chatushpad. Then already some learned speakers spoke about it. So then I thought that I will change my topic. Then suddenly I learned that we are talking about the Prakriti chart or something like that. Then I just want to recall, and I will finish in 1 minute, I think, that in 1990s, when I moved to Holland, and I had my practice in the town called Eindhoven, which is known as the Philips town. Philips used to have a electric and electronic gadgets factory there. And one of the director of that company was my patient in 1995, something like that. And then he asked me to make an instrument for pulse diagnosis. And then there I started the journey of the pulse diagnosis. And then, we are already doing pulse diagnosis, but the concept about the machine technology. And then I developed a chart, and then you call it chart, we called it passport at that time. That was Prakriti Nirupan passport. And today, when something was mentioned, and I just put it in chat that we can make a global, IRES can make a global Prakriti Nirupan passport. And that I already worked upon at that time.
somehow it could not go further because the director was going to the other company. Director was going to other company, and then no. So the director was gone. Then this project was stopped. Then I could not go further with the project of making the machine. But later on, I heard that some Russian technologists and Russian people, they made Veda Pulse, and it's so popular now in the West here, in Europe. I mean, I practice in Netherlands and Belgium, Germany, and Switzerland. So Veda Pulse is going very, very popular here. It's a machine made by some European people. So what I mean to say, Pawanji, we can do a great thing by developing a kind of a pulse diagnosis machine together with the global Prakriti Nirupan chart, and I hope that I can be part of that if everybody will agree. And with these notes, I think I would like to stop now because it's getting too long for everybody. And I give my the best wishes for this webinar to proceed with other speakers. I heard with the Devendra Triguna ji. I was working with him, not working with him. I mean, we used to work together in international Ayurveda congresses where we invited Prime Minister Vajpayee for the first time in Vigyan Bhavan, and I was with the Devendra Triguna ji, with S.K. Mishra ji, and we organized this in a very big event in the Vigyan Bhavan in India at that time. So I do recall my beautiful moments with the personal events, also private one-to-one event with the Triguna ji, Devendra Triguna ji. And so I'm missing all the company which I had in India, but now we are in Europe. So we had to just follow, as Dr. Kaushik mentioned, that there are several ways of doing things here. And there are many ins and outs, pros and cons of having the practice and the teachings here in this country. But we have adapted to great formulas here, and we have developed something very great. And I was teaching to many allopathy doctors here, and I must say that allopathy doctors here in the West have more respect for Ayurveda than the allopathy doctors in India. This is my personal experience. You may agree or you may not agree with me, because when I left India, when I graduated in 1983 from Delhi University, at that time, we were considered as I think second grade doctors in Delhi. And this was my personal impression, and all my colleagues and my class fellows, they were referring their patients to all allopathic doctors and nursing homes. And it was so bad to feel that we were second grade and even third grade, just referring doctors for the people. And then when I moved to Europe around 1990, then the first batch which I had was the allopathy doctors here, the Western mainstream doctors in the Netherlands. And then it was so interesting that they were dying for this knowledge. The real quest I saw in the doctors here, which I could not see it in India. And but now the time is ours. As everybody said this morning, the time is ours, and we will definitely will be coming with Ayurveda on the top of the world in the coming. And I'm already preparing some document for TAHA. So TAHA was conceptualized today by Pawanji, and I think I will be the part of that. And I'm already conceptualizing THO, Traditional Asian Herbal, Traditional Asian Health Organization. And so definitely we are part of it. Thank you very much for giving me the opportunity, Pawanji, and Vivekji and Madanji and all my colleagues, and Patankarji from Mumbai and all the learned colleagues. Thank you very much. And I must say namaste to all of you. Thank you, Ravinji. Thank you very much. Thank you very much. So nice of you. Now I would like to request Dr. K.C. Priyadarshini Gunratne. She is from Sri Lanka. Welcome, madam. Welcome. Swagatam. Kindly, yes. Welcome. I want, sir. Good evening to all. Respected Pawan sir and all dignitaries. I pay my sincere thanks for giving this golden opportunity to address you
today. And I congratulate Dr. Pawan sir for his continuous efforts to conduct this wonderful webinar series till 400 episodes. And I wish him good luck for do more such things in future for benefits of Ayurveda medical systems. According to my idea, I think all have told all these things, but I just try to summarize the things what I wanted to tell according to Sri Lanka even. I think first we have to do that, enhance the education levels and the qualities in many ways. That is the most important thing in all over the world, not only one country. And other thing is we have to conduct more awareness programs for general public. In Sri Lanka, actually, we have two groups of doctors. One are working in hospitals and others are working in the community. We call them community medical officers. By them, they are conducting public workshops, public clinics, awareness programs about especially Dinacharya, then Ritucharya, Patya Patya, Vegadharana, and that Panchakarma, etc. I think that is very beneficiary programs to awareness of the Ayurveda for the general people. Then other thing is we have to do some mass media projects such as paper articles. Then we have to participate TV or radio programs. Then we have to write magazines, and we have to do some websites, YouTube channels, etc. regarding all these topics, especially like previously what I told. Then we have to see about our doctors. Sir, can you all hear me? Sir, can you all hear me? Yes, yes. you are audible. Yes, sir. Then we have to do special things for actually our doctors, because we have to enhance our self-confidence as an Ayurveda doctor, and we have to develop their personalities, because most of the doctors, they have enough knowledge and skill, but they are not having enough confidence of their medical system. So they have to enhance. For that, we have to conduct some programs, not only for doctors, but other staffs also. And we need to use more technical facilities, and we need skilled staff to give best services for the people. And other one is we have to start home remedies to use in homes. For them, we have to suggest them to at least cultivate some herbs in their gardens, if not in herbal gardens, or if they are having any other bare places. So then if they need some medicines at the home level, then they can use. And I think all mothers and my grandparents, they are having enough, especially Ayurveda knowledge with inheritance, so they can use them instead of going to hospital or instead going to allopathic treatments. And other thing is we have to enhance the quality of the drugs, especially what we are manufacturing. We have to maintain a similar quality in each and every country. We have to maintain the same quality of the drugs. I think these are the small suggestions from me. And again, I give my sincere thanks to all to given this opportunity. Thank you very much. I go on. Thank you. Thank you very much. Very nice, and in brief, you have communicated everything. Very nice, madam. Great. Great to listen. Thank you, sir. Glad to see you here again. We hope, we pray to God that in your country, situation will definitely come under control very soon. God bless you. God bless you. Thank you, sir. Thank you. Now I would like to request Dr. Risha Sharma from Singapore. Welcome, madam. Welcome, Dr. Risha. Thank you, sir. Thank you. Namaste to all the dignitaries, all the seniors joining. I hope I am audible to everybody, loud and clear. Yes.
Okay, so first of all, congratulations to Dr. Pawan for this tireless achievement that he has with this 400 seminar. I think this in itself is a big milestone for anybody who wants to know about Ayurveda or what it stands for. I think as practitioners, a lot of us lack the okay. So a lot of practitioners lack this confidence to maintain their trust in this pathy, and I from time to time I get messages from young juniors who are very confused even after their post graduation whether they should continue with this Ayurveda or not, or they should do something else or not. So I think now we have this YouTube channel which can instill that confidence in people. So if somebody would ask me, I want to know more about Ayurveda or what is the reach of Ayurveda, I think this is IRES as one channel that people can look up to for, I think, generations to come. And I think his achievement has already been acknowledged by the Guinness Book of World Records, which is amazing. And I think it's an inspiration for all of us, and it's a very apt topic today for the creating awareness, how to create awareness for Ayush pathies. And coming to the topic, I want to share a few things as a practitioner. I have been in Singapore for a few 6-7 years now, and some of the things that I realized that people lack when the knowledge of when they are practicing Ayurveda is the kind of power we have as practitioners and the ability to access it when needed. One of the things is the insurances that we have now started getting for in this therapy. So a lot of the Ayurvedic treatments are quite expensive for people, and it gets difficult for them to pay sometimes. I've seen it in Singapore and even in India. If you go for Panchakarma treatments or extended long-term Ayurveda treatments to a private practitioners or in general, it gets a bit expensive sometimes. So there are insurances available by SBI Healthcare, by Bajaj Alliance, and Tata AIG. So if we as practitioners become aware of these things and let other practitioners also know that these are the facilities we have increasingly being available now, I think it's a great confidence boost for the practitioners themselves and for the students who are coming out of the colleges and are a little confused or a little lost on whether they should be trusting what they have done and graduated in. And the other thing that I constantly feel when I read online about Ayurveda, the research is really picking up in this field. So we have a lot of online data available already. Of course, there is a lot of scope still, but I feel like our traditional text like Charak, Sushruta and all, they should be made more readily available. Their conversions should be more maybe more reviewed in as per the recent times. All the experts in this our field should be able to provide this kind of a platform online where people can go and access all the texts online. So that wherever we are in any corner of the world, we can look for our basic sahitas or at least get access to if needed. It may be there, I have found some, but there's no like a collective platform I could find, a website or a portal where I could go in and connect to all this. Maybe the Ayush Ministry can look into it in future and do something like that. And so something like a Wikipedia, a page wherein you can go and look for any pathy, like somebody wants to learn why about what is a Panchakarma or something like that. There are a few websites yet like Easy Ayurveda or some that are available that are doing this kind of work, which is incredible. But I think there should be something that should come from the government itself so that it's more authentic, and for worldwide people to know about Ayurveda, I think it will be a great platform. And similarly, I have recently also noticed that a lot of certificate courses also have come up wherein Indian practitioners are actually providing certifications in Garb Sanskars or
Ayurvedic cosmetology, Ayurvedic kitchen cooking and all that. I think if this starts coming from the government, we have a designated course on this rather than the haphazard way in which people are doing it on a personal level. This will also create a lot of awareness in the field of Ayurveda, because there are many people who want to learn about Ayurveda, but not all of them can go to a medical college and do BAMS, or they are not in a position to do it. So these kind of services, I think, can help propagate Ayurveda in the right way, rather than getting, a few hours courses, which are, I think, not recognized as yet in most places. So a government can work in this direction to get more and more certificate courses in popular fields. Like Ayurvedic cooking is very popular internationally. People know, I mean, in a way, it is bad that people know Ayurveda through Ayurvedic cooking, like khichdi and turmeric and all those only. But if we do it in the right way, actually, it can become a great lifestyle boost for people. And this is our strength, actually. It's a big challenge that a lot of practitioners in our fraternity face, that we keep on fighting head on with the allopathic practitioners. Every time there is a discussion or there is an argument, we are trying to prove a point. I'm not saying that we should not do that. We should always defend our system. We trust it. And the thing is, but I think if we instill that confidence in ourselves as practitioners, we may not even have to justify. We will have systems in place which will speak for themselves, and we will not have to, like, every time look for another change in the modules of how the ministry works, or how the government talks about these things. Like there are controversies that keep on happening every now and then, where people question the curriculum sometimes, or the treatment that a particular doctor offered, and then suddenly everybody jumps in on and complains that the whole Ayurvedic system is wrong, or the whole practice is wrong or obsolete, or things like that. So if, as practitioners, we are confident, we can take steps in this direction and devise protocols, policies, like simple policies. As a practitioner, I was discussing this with another research professor the other day, that how many of us as Ayurvedic practitioners use office policies wherein we take like this disclaimer that whatever we are prescribing and all that, there are like 10 set of points that we are not responsible if something happens, or these things like that. I think as practitioners, we need these kind of protocols in place to protect ourselves from the system and from these untoward blames that we get every now and then from the society, which is more cooked up than rather than real. So I think this is another very important point that we as practitioners should look into. And also, as a BMS graduate, I feel like, I'm not sure what is the current scenario, but by and large, the undergraduate courses should also get more access to research materials online, maybe more Wi-Fi availability, or more, more online exposure, so that they are able to connect with the world when the research is happening, and actually can offer their own work while they are graduating as well. It will instill a lot of confidence in them. And lastly, I would like to just mention that people who are scared of practicing Ayurveda, and we need to actually bring them on track. And first of all, obviously, people who are joining, students who want to do BMS, they should know why they are doing it. And once they are aware of their choice, they actually want to practice Ayurveda, then they should be actually given the right boost and confidence to be able to learn this pathy the right way and have the confidence and courage to practice Ayurveda. I was told once in college that you have to dig your own hole if you practice Ayurveda, and that was very scary for me at that time. Now 10 years later, I feel like if somebody had actually given me a better direction in what things I can do, rather than telling me what is not available to us as Ayurvedic practitioners, I would have been a lot more confident back then. So I did dig my own hole, but I would like people to not start from zero who are graduating, and have that kind of backing from maybe us seniors who are trying to lead by example, or even
more accomplished people who are already part of this discussion today, that when people look at them, they can actually gain that trust and confidence that this thing works, these medicines work, this pathy works, and it's actually miraculous. The kind of boom we are having of lifestyle disorders nowadays, as mentioned by a lot of other people in this discussion earlier, allopathy has no answer to this, to lifestyle management, to sleep management, to gut-brain connection. And all this is so ingrained in our basic Ayurvedic principles that a lot of times you don't even need to treat them with medicines. You just need some basic counseling with the patient and follow up, and that works like magic. And so with this, I want to close my statements today, and I'm very thankful to Dr. Pawan for inviting me on this platform to be a part of this very prestigious group of people. And I hope what I made sense to some of you, and I hope these things are implemented and Ayurveda keeps on picking up the momentum it is right now. So I would also like to mention lastly that I have patients who are allopathic doctors, anesthetists, and they are seeking Ayurvedic treatments. So there is a lot of scope in Ayurveda only if you believe in it on your own. And so don't worry about who complains about it's wrong or not. Just trust the process and do what you can do best in this direction. Thank you, sir. Thank you, Rishaji. Thank you. Nice as always. Excellent, excellent. Thank you, sir. Now I would like to request Rajan Patankar sir. ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज के 400वें मैराथन वेबिनार में कम से कम 300 मिनट का समय अभी हो चुका है। तो इसके लिए सभी महानुभावों ने जो भी अपने विचार रखे, तो वही सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा अग्निहोत्री जी का काम करता हूँ, क्योंकि थोड़े से कंसाइज इसमें कि जैसा कि सबने कहा कि योग्य शिक्षण जो पद्धति है वो योग्य होनी चाहिए विद्यार्थियों के लिए भी और पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी, और उसमें भी पथ्य का इम्पोर्टेंस औषधियों के साथ में वो भी उतनी अच्छी तरह से। और जैसे मेरा और मदन जी का बहुत बार बात होती रहती है कि पथ्य कि देश के हिसाब से, दृश्य के हिसाब से ये ज्यादातर समझाना जरूरी है अगर ये स्ट्रेटेजीज में आ जाए तो। जैसा कि योग्य औषधि निर्माण के साथ साथ वनौषधियों की जो लागत है वो भी, उसके लिए भी अगर फार्मर्स को मोटिवेट किया जाए तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। योग्य चिकित्सा में जैसे भी जितने भी मेडिसिन यूज होते हैं, पर मुझे जो मेरे एलोपैथी के एक जो डॉक्टर थे जिनके साथ मैंने काम किया, डॉक्टर राममूर्ति कार्डियोलॉजिस्ट थे, एशियन हार्ट हॉस्पिटल के फाउंडर मेंबर बॉम्बे के, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया कि सच्चा डॉक्टर या वैद्य कौन है कि वन हु गिव्स मिनिमम मेडिसिन विद मैक्सिमम रिजल्ट्स। और बोलते थे कि आयुर्वेद एकदम पिन पॉइंट है, तो उसके लिए ये करो, और प्रॉपर संशोधन होना और डॉक्यूमेंटेशन एंड अपडेटेशन ये भी उतना ही जरूरी है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ थोड़ा सा ही, क्योंकि इतने सारे जो स्पीकर्स थे बाहर के और इंडिया के, तो इनके सामने उनकी सब बातें सुन करके बहुत ही प्रभावित हो गया। तो फिर एक बार पवन जी और हम सबको 400वें वेबिनार के लिए फिर एक बार धन्यवाद और उनका अभिनंदन, और ऐसे ही हम लोग 1000 तक जुड़ते रहेंगे और उनके साथ में रहेंगे। बस इतना ही कह करके मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी जो महानुभाव है उनको फिर एक बार नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। अब मैं वैलिडिक्टरी रिमार्क्स के लिए आदरणीय प्रोफेसर वीके अग्निहोत्री सर को आमंत्रित करता हूँ। आज 66 की जगह 35-36 स्पीकर हुए, फिर भी अपने को 10 बज गए। 5 बजे से अपन शुरू किए थे, तो एक रियली धन्यवाद सभी को, हार्दिक धन्यवाद, सुनने वालों को भी और बोलने वालों को भी। बोथ द पर्सन्स, स्पीकर एज वेल एज ऑडियंस, we are really communicating our sincere thanks with regards to you all for making it an achievement of our milestone in our brainstorming journey. Professor V.K. Agriotri sir, Swagatam.
धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी, नमस्कार। और एक बार पुनः आपको अंतस्थल से, हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत बधाई। आज आप नहीं महसूस कर पा रहे, अनुभव कर पा रहे हैं कि आपने क्या प्राप्त किया है। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक और विभिन्न चिकित्सकों के मस्तिष्क से और हृदय से वो गहराइयां छू ली हैं जो अमिट हैं, कभी नहीं मिटने वाली हैं, और आप ये अनंत काल तक चलती रहेंगी। हमारी वेबिनार और अलंकृत हो जाती अगर हम आज यूनानी से और होम्योपैथी से एक दो महानुभावों को जोड़ पाते। हमें याद आ रहा है हमारे त्रिपाठी जी, जिन्होंने होम्योपैथी में कोविड के जमाने में अपना आर्सेनिक 30 पर बहुत शानदार अपने विचार दिए थे, और ऐसे ही यूनानी से हमारे रेलवी साहब हो गए, यूनुस साहब, और लोग भी सबके नाम दिए थे, बात हो गई थी सर, भगवान जाने क्या हुआ। जी, जो भी है। तो हमारा आज का जो प्रोग्राम चला वो 4:50 तक हम लोग बिल्कुल वर्दी में आके पीएससी की सीटी बजते के तरह एकत्र हो चुके थे, और हमने सही स्टार्ट लिया। आप महानुभाव श्रीमंत के जोड़ के आज 36 लोगों ने अपनी वाणी से इस आज के 400वीं पायदान पर सबको अलंकृत किया, और 5:50 पर हम 40 हो गए थे। 5:55 पर हम 42 हुए, 6:17 पर हम 43 हुए, और 6:45 पर हम 46 हुए, 46, and that was the highest score of today's webinar when we were celebrating our 400th webinar internationally. So our highest score was 645, which we achieved at 46 at 645. अपना जो आज का कार्यक्रम हुआ, जो हमें बाइलिंगुअली बोलना होगा क्योंकि हमारे पास नेशनल और इंटरनेशनल इंग्लिश और हिंदी संस्कृत जानने वाले सभी हमारे श्रीमंत लोग आज पधारे हुए हैं। खुशी का पारावार नहीं है, इसलिए शब्दों का चयन करने में समय लगे उससे पहले जो शब्द जवान पर आ रहा है उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और यही आज की मतलब नैसर्गिकता है। इट्स अ नेचुरल वन, बट व्हाटएवर इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट it should be used irrespective of paying any minute or to rethink. So our welcome address was given by Dr. Pawan Sharma himself, along with the whole of the journey, right from he started on say 20th April 2020 as a first webinar, which is got a wonderful shape and makeup by touching 400th on today 26th of June 2022. And we were blessed with our Professor Yogesh Mishra ji's inaugural address and welcome address, who is our stalwart, who is our senior most, who is our president, and who is our well-wisher. So start with his best wishes and well wishes. We thought that भवानी शंकर के रूप में, श्रद्धा और विश्वास के रूप में हमारी ये यात्रा बढ़ती रहे। जब हम बिना उद्देश्य लिए, बिना टारगेट लिए हम जब 400 पर पहुंचे हैं, शायद पवन जी ने सोचा नहीं होगा कि हमें 400 कंप्लीट करने हैं, लेकिन हम जब 400 में आज बना रहे हैं तो ये सभी के लिए अमेजिंग है, अद्भुत है, मेस्मराइजिंग है, और बड़ा सुकून देने वाली है, बहुत ही तसल्ली दे रही है हमें, बड़ा फीलिंग हो रही है कि हम बिना उद्देश्य चले और यहाँ तक पहुंचे हैं। तो प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा जी के आशीर्वचन के साथ साथ फिर हमको मिले अपने वैद्य पद्मभूषण देवेंद्र ट्रिगुना जी का, जिनका हमेशा आशीर्वाद प्रत्यक्ष या परोक्ष मिलता ही रहता है, और उनकी जो शख्सियत है, उनकी जो व्यवस्था है, इतने लोकप्रिय हैं, इतने जनप्रिय हैं और इतने मिलनसार हैं। हम लोग दिल्ली का अय्या में गए थे तो आए पधारे हुए थे, बड़ा अच्छे से बात करते मिलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी थे। तो एक नेचर है कि आयुर्वेद का व्यक्ति है, आयुर्वेद वालों से प्रेम करता ही करता है, और अच्छा है उनकी पकड़ शासन में भी है, राजनीतिक पकड़ अच्छी है। तो वो इस समय आयुर्वेद के विकास के लिए उन्होंने जो संभावनाएं बताई, जो व्यवस्थाएं बताई, प्राइम मिनिस्टर जी का जो सक्रिय योगदान बताया, महामहिम हमारे प्रेसिडेंट महोदय के अभी पिछले दिनों ही जो हमारा आयुष का ये चालू हुआ, इन सब पे उन्होंने चर्चा दी और बताया कि हम किस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आए प्रोफेसर गोविंद शुक्ला जी, और हम इनके कमेंट्स किसी के नहीं देंगे, नहीं तो बहुत हो जाएगा। गोविंद शुक्ला जी के बाद हमारे पास आगे है, इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारे आज 8 पेज भरे हैं, आपको बतलाया, इसलिए थोड़ा हमें क्षण लेना पड़ रहा है। गोविंद शुक्ला जी का काम चलता रहा, तो फिर
तीसरे पेज पर हमारी चर्चा हुई है वैद्य ताराचंद जी की। उन्होंने बहुत गहरे से आयुर्वेद की उन गहराइयों को छुआ कि वास्तव में जो महासम्मेलन वाले थे, जो विशुद्ध और निखिल आयुर्वेद वाले थे, वो जो आयुर्वेद का ज्ञान था वो आज की पीढ़ी में न तो हमको मिल पाया, टीचर हम स्वीकार करते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी में तो और ही मुश्किल। हमारे डॉक्टर वेदी जी कहा करते पहले पाधा जी पढ़ाते थे, पाधा जी के जूनियर टीम आई, उसकी और तीसरी टीम आई, वो चीजें घटती चलेंगी, ज्ञान की गहराई जो थी वो घटती आ रही। तो आज वहां पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर हमारे सुहास शेट्टी साहब की बात आई, संजय छाजेड़ जी ने अपने बहुत ही विलक्षण बातें बताई, और सबसे बड़ी चीज है आज के एक बाई प्रोडक्ट के रूप में एक और उपलब्धि हो रही है कि सबका समर्पण, सबका समर्थन, सबके द्वारा सेकंड किया जाना, जो कॉन्सेप्ट है हमारा एशियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, वो इनडायरेक्टली आज बाई प्रोडक्ट के रूप में फिर से रिवाइटलाइज हुआ है। और एक और बाई प्रोडक्ट जो हम आपको अभी यहीं पर जोड़ देते हैं, हालांकि यही बात तक हमारा ध्यान से निकल न जाए, वो हम बताना चाहेंगे कि अगर हमारे दिमाग में एक थॉट आया था वो ये कि हम इसको किस रूप में ले। द ग्रेटेस्ट थॉट इन टुडेज रेफरेंस इज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेबिनार in reference to COVID-19, point number 1, or the importance of COVID-19 is in reference to the webinars. Now enjoy it. And this is the COVID-19 who made us compelled to talk about in the shape of webinar, and we reached 400. Other organizations are also doing, some has reached 100, or some college institutes are they are having a guest speakers like that. So vice versa, the importance of webinar in reference to COVID-19, and academically I got this point, and the importance of COVID-19 in reference to the webinars. So in this reference, our next speakers, Shankar ji was there, Jagdish Domaji there, myself was also there, Professor Madan Thanguvelu sir be there, Dr. Manish Pandey ji was there, Dr. Alok Sharma is also contributed, Dr. our senior revered person, MS ENT, Dr. Karthikeyan is also contributed, and with a very, very humble meanings, words he told that I am completed post-graduation and I have got a very good affinity as far as the Ayurvedic concept is concerned, or the traditional medicine is concerned. This is what our good approach, that every person, every nook and corner belonging to any field, now they have started accepting, as Dr. Kaushik was also telling, that this is the era. The era has come where the affinity or inclination towards Ayurvedic sciences has been brought up and has been revitalized. Then our next person who contributed in terms of after Karthikeyan, Professor Vishnu Priya Mohanty, ma'am. She is always having a lot of thought. We failed to inform that it was the we were interested to have their point instead of her presentation, but still in both ways we benefited. Our webinar benefited, and then our Dr. Bijesh Mishra also contributed. Dr. Ashok Dubeji were very much there. When the Parul Joshi, very cool, and still after listening and hearing a lot of speakers, she also added some points in that way. Then again, Dr. Bahulal Baraja ji, he also not only talked about his ideas, but also conveyed the message regarding the forthcoming conference on Agni Karma. And then our Surendra Chaudhary sir from Torrent, he also joined it. It's a pleasure and fortune enough that he also witnessed our 400th webinar. And then Professor Ramdas ji also, as per our demand, he concluded his approach with some Sanskrit sentences, so it is good. And then Dr. N. Shridhan, he also contributed a lot. What I inferred that could it be possible, especially in her college or in every Ayurvedic fraternity, then that whenever we meet, we say Namaskar, Namaste, Pranam, Naman. Instead of that one, can't we say to each and every person, senior or junior, Dharmantare Namo Namah, Dharmantare Namo Namah, just to Radhe Radhe, just to Jai Ma Bindwasini, like that, at least within the college campus. Then it will be go again, new type of slogan. Om Dhanvantari Namo Namah. Each and every person, whenever they are meeting and crossing pass by, they can spell like this. So it will be a direct in remembering of the Lord Dhanvantari, and the worship and the blessings of Lord Dhanvantari will always be exchanged by each and every person whosoever is coming across.
And then we had an occasion to have some knowledge from Professor K.K. Pandey from BHU. And again, Dr. C.P. Sharma also narrated good things regarding our Antarashtriya this webinar. And then Dr. P.B.B. Prasad sir also contributed. Dr. Somesh Kaushik very fluently, and he also recalled that he had been there, graduated in 1983. I think you and Dr. Our Naveen Gupta ji might have been contemporary, having the same batch 1983. So it is our pride and pleasure that you people are holding and hosting the Indian Ayurvedic flag there with this. So goes the case with Risha also. Risha also told that the MBBS doctor or the modern medicine practitioners are there with her, and they are patients having treatment of Indian system of medicine. So it's a pleasure and the pleasure of the Ayurveda also. Dr. Naveen Gupta also narrated by cutting his all time that we are getting late. And then Dr. K.C. Priyadarshini from Sri Lanka, she also contributed, and I am pleased to see that these terms she narrated. It means Ayurveda is still alive and working a lot there in his country, her country, sorry. And Dr. Disha Sama, as I told, she is also doing things. It is our great pleasure that Dr. Rajan Patanka, who has to be always there with, on daily basis with us, also gave his benedictions to this international platform on a great occasion of today's webinar, which is completing the 400th step and station by the great efforts of Dr. Pawan Sharma ji, tirelessly. And now I just pay my regards and say very, very greatness and thanks to all those speakers, though I've got almost 50 or 51, so somebody coming and leaving, so in that way the highest number, as I told that it was 46, but what I included, I could reach 49 or so. So I'm just going to spell out, just call the names those who are there with us, that there is not a matter of sequence or serial or seniority. As I saw the list, I just noted, and now I am going through. So our respect and regards to Dr. Pawan Sharma ji, Ved Jayesh Thakkar ji, Professor C.B. Jha Guru ji, Professor B.P. Sharma ji, Dr. Doma Jagdishwar ji, Professor Y.C. Sharma ji, Professor Vishnupriya Mohanty ji, Dr. P.B.B. Prasad sir, Dr. Ashok Kumar Dave ji, Dr. Bharat Tongwal ji, Ved Devendra Triguna ji, Dr. C.P. Sharma ji, Dr. Manish Pandya ji, Dr. Suhas Shetty ji, Dr. V.C. Sarkar ji, Professor Madan Thangvelu ji, Professor Dr. Preeti Banerjee ji, Dr. Vijesh Kumar Mishra ji, Ved Naveen Gupta ji, Dr. Nali Guru Ved Chhajer ji, Dr. Yunus Munshi ji, Ved Dr. Professor K.K. Pandey ji, Miss Shantala Priyadarshini ji, Dr. Raghunandan Bhatt ji, Dr. Sridhar ji, Dr. Tapan Kumar ji, Ved Rajan Patankar ji, Professor Ramdas ji, Dr. Ravi Gogia ji, and then Dr. Parul Joshi ji, Dr. Anand Prakash Pandey ji, Dr. Govind Shukla ji, Dr. Alok Sharma ji, Dr. Tejinder Singh ji, Dr. Satyapal Sharma ji, Ved Tara Chandra ji, Dr. Rampal Somani ji, Dr. Monica Mishra ji, Dr. Kartikeyan ji, Dr. Rishabh Patni ji, Dr. D.K. Srivastava ji, Dr. Pejinma Doma ji, Dr. Mohitna Sharma ji, Momita Sharma ji, Dr. Nitish Kumar Pandey ji, Mr. Amiti Vijay, Dr. Mamta Thakkar ji, Dr. Babulal Barala ji, Ved Surendra Chaudhary ji, Dr. Shomesh Kaushik ji. And I'm very sorry if I have left by mistake any great name who attended today's seminar. A suggestion came that by Dr. Duveji, Ashok Duveji, that a certificate of participation in 400th webinar. I think Dr. Pawan Sharma is kind and liberal enough to provide such type of efficient certificate. He has sent previously the link to take print out, put your name as a participant or as a speaker, as and when you have delivered your lecture. And so goes the case with today's participation. If it is so, he will give you the guidelines. So I just making all the thanks repeatedly and congratulating Dr. Pawan Sharma ji, giving back the platform to Dr. Pawan Sharma ji for his final comment, if
if any suggestion, comment or remark is there, I suggest and request to make this great occasion a grand success, and all good wishes to him. Thank you, Pawan Sharma ji. Over to Pawan Sharma ji. Thank you sir. पवन जी और अग्निहोत्री जी को सलूट। धन्यवाद 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 पवन जी और अग्निहोत्री जी को सलूट। धन्यवाद धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपका ऐसे ही शुभकामनाएं, आशीर्वाद और सहयोग बना रहे, ऐसी अपेक्षाएं हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आप तो बस दिल के टुकड़े हो गए भाई। मैंने तो 8 पेज खर्च किए और 5-50 से 10-15 होने जा रहा है। मेरी पूरी कोशिश रही कि भाई पेन मेरा, यू विल सरप्राइज टू नो, मेरा एक पेन खत्म हो गया और मैं दूसरे ये फॉर पवन जी हमको 12 पेन भेंट करेंगे, ये मैं इतने खर्च कर चुका हूँ। आज दूसरे पेन की सहायता लेनी पड़ी। पेजेस खाल देता, पेजेस नहीं खत्म हुए, फिर भी 8 पेजेस भरते चले गए। ये मैन्युस्क्रिप्ट बन गई है पूरी। हमने भी एक छोटी सी फार्मेसी प्लान की है सर। 108 पेन आपको मेरी तरफ से। ये हवा में वास्तव में हवा में नहीं, आप बोलो का एड्रेस भेज दो, एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। आप उसमें से 5 या 10 हमको रेड पेन दे दिया, रेड इंक वाले। हम सुबह रोज राम राम लिखते हैं। अब पता नहीं क्या होगा, जीफ्लो वाला, रिनॉल्ड वाले देते ही नहीं कि आप नया पेन खरीदो। मेरे पास बंच ऑफ पेन हो गया खाली हो के। मैं सुबह 4 मैं ब्राह्मण आप एड्रेस भेजो, मैंने नैपकिन भी छपवाई है, आपके पास नैपकिन भी पहुंच जाएंगे, पेन भी पहुंच जाएंगे। मैं तो ब्राह्मण होकर खुले हाथों भिक्षा मांगा हूं। पवन शर्मा जी का ने इस प्लेटफॉर्म से ऐसे विप्रो से मिलवा दिया, तो और क्या चाहिए। कौशिक जी सामने बैठे हुए हैं। वैसे मैं आपकी सामर्थ्य भगवान ने दे रखी है, लेकिन एक मनोविनोद में रिलैक्स होने के लिए एड्रेस भेजो सर, एड्रेस भेजो। अरे प्रभु हमें प्रभु का एड्रेस नहीं मालूम, कहते हैं ना भगवान तुम्हारा पता होता तो मैं खत लिखती हूँ, क्या है कुछ ऐसा है ना। नहीं, अग्निहोत्री का तो पता है हमें। ओके सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। अब हम लोग 30 तारीख को मिलेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए, और 1 तारीख को एलोपैथिक डॉक्टर मुझे सजेस्ट कीजिए जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हो। ऐसे एलोपैथिक डॉक्टर चाहिए जो आयुर्वेद में बहुत श्रद्धा रखते हो। धन्यवाद। वो भी थे जो आयुर्वेद में एडमिशन लेके 3rd ईयर में एलोपैथ में चले गए, फिर एमबीबीएस किया। ऐसे तो कम से हमारे 8 स्टूडेंट हैं। प्रोफेसर मेकार सिंह है जो कार्डियोलॉजिस्ट हो गए, बीएमएस से वहां 3rd ईयर तक पढ़े हैं, उसके बाद फोर्टिस में और कहाँ हो गए। बहुत लड़के हैं हमारे। ईएनटी सर्जन है हमारे, डॉक्टर विनीता कुमार हैं, बीएमएस में पढ़ रही थी, अब आजकल एमडी पैथोलॉजी है, हमारे नवजीवन पैथोलॉजी डाली हुई है। बहुत लोग दोनों तरह के बताइए सर। तो आप इनको डॉक्टर अशोक दुबे जी के लिए तो कुछ कह दिए, बेचारे सामने अभी हमारे पास विराजमान है। नहीं, अशोक दुबे जी मेरे बड़े भाई हैं। अभी बिहार में बहुत अच्छा उनने प्रोग्राम किया, पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया बिहार विश्व आयुर्वेद परिषद ने। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक जी भी अभी बहुत। डॉक्टर दुबे जी आप प्रमाण पत्र की मर्यादा से बहुत बाहर चले गए हैं। आप कहाँ प्रमाण पत्र के फ्रेमवर्क से बहुत ऊपर हैं। हरिओम हरिओम। गुड नाइट। ओम नमः। शुभरात्रि सबको। शुभरात्रि। सर